दोस्तों ईपीएफओ के एपीएफसी और ईयू एग्जाम की प्रिपरेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, क्योंकि इस कंपोनेंट से एग्जाम में अराउंड 15 क्वेश्चन आते हैं आउट ऑफ टोटल 120 क्वेश्चन। लेकिन दिक्कत की बात यह है कि भाई इस कंपोनेंट को हम यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम की प्रिपरेशन में प्रिपेयर नहीं करते हैं, और ना ही इस पर्टिकुलर कंपोनेंट का हमें कोई ऐसा स्टैंडर्ड सोर्स मिलता है जिसको पढ़ के हम एग्जाम की रिक्वायरमेंट मीट कर पाएं। तो आपकी इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम आपके लिए वीडियो लाए हैं, जहां पर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की मदद से आप लोगों के लिए आयरन लेबर लॉ कवर कर रहे हैं। इस वीडियो का पार्ट 1 है, जहां पर हम इंडस्ट्रियल रिलेशन को कवर कर रहे हैं ताकि आप इस पर्टिकुलर कंपोनेंट के क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से डील कर पाओ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोग एपीएफसी और ईयू एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और इन एग्जाम की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक ही जगह पे चाहते हैं, तो आप लोगों को हमारी कंप्रेहेंसिव गाइड बुक पक्का डाउनलोड करनी चाहिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। टोटली फ्री है, और सबसे खास बात कि इस गाइड बुक में आप लोगों को डिकोडेड सिलेबस कंपोनेंट वाइज प्लस सॉल्व पीवाईक्यूज मिलेंगे, जो आपकी प्रिपरेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं जो आपको मिस नहीं करने चाहिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, as part of which in today's session we'll be doing industrial relations overview chapter hai in that part 1. So we'll be doing 15 MCQs, and one of the most important topics when it comes to labor laws उतना ही importance है industrial relations के लिए भी, क्योंकि इसमें से भी कई सारे क्वेश्चंस आते हैं इन द यूपीएससी ईपीएफओ एग्जाम, बी इट एपीएफसी और ई और एओ एग्जाम, दोनों के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। Okay, moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO very soon, so I suggest you to go through these sessions regularly so that आपका जो revision है वो भी हो जाए, and then at the same time you will be having lots of practice questions at your disposal, so जो आपके preparation को बिल्कुल एक next level पे लेके जाएगा। So with this introduction, let me start today's session, industrial relations overview part 1. So moving on to the first question, see industrial relations, until unless एक amicable relation होगा, okay, between the employer and employee and the industry itself, जिस दूसरे इंडस्ट्रीज के साथ वो काम कर रहा है एंड ऑल दैट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एंड यू कांट सेपरेट इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस, बिल्कुल उनको भी अलग नहीं कर सकते, एक ही के अंडर हमें पढ़ना है। सो द सेम थिंग वी आर डूइंग हियर। सो हियर व्हाट इज अ प्राइमरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इंडस्ट्री इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस। सी व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी इंडस्ट्री, majorly that focuses on it includes the economic activity involved, whatever the economic activity that is involved in generating goods and related services, that is called an industry. So in this case industry का मतलब है that produces goods or related services within an economy. So here B is the correct answer. So moving on to our next question, इसमें एक statement है and based on the statement you have to give me the correct answer. So statement ये बोलता है, in the context of industrial relation, the primary goal of capitalist is to maximize profits. मिनिमल इन्वेस्टमेंट के साथ मैक्सिमम प्रॉफिट्स उनको चाहिए। While workers seek job security, fair treatment and favorable working conditions, ये वर्कर्स का कंडीशन रहता है कि हमें ये सब मिलना चाहिए। Now in such case, what or which of the following is a direct consequence of this dynamic? दोनों का गोल तो हमें समझ में आ गया है। So इससे क्या होता है मेजरली, कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द कैपिटलिस्ट एंड वर्कर्स ओवर वेजेस एंड वर्किंग कंडीशंस। वो सोचते हैं कि कितने कम से कम में वो मैक्सिमम प्रॉफिट अराइव कर सके, और वर्कर्स का रहता है हमें अच्छे वेजेस भी मिले एंड एट द सेम टाइम वर्किंग कंडीशंस। सो बिल्कुल ऑपोजिट में चले तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगा ही होगा। अब इन सब कॉन्फ्लिक्ट्स को साइडलाइन करने के लिए, रिजॉल्व करने के लिए, या फिर सही से उनको मैनेज करने के लिए ऑब्वियसली comes the topic industrial relations. So here in this case C is the correct answer. Now इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट क्या आ सकता है, तो अब क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकता है उनके गोल्स की वजह से, वो तो कॉन्फ्लिक्ट है। नाउ in the second one, industry statement, industrial relations involves in the interaction and negotiations between capitalists, that is employers, and workers, that is employees, in the context of capitalist economic system. Okay, now which of the following is a primary objective of industrial relation? हमने बोला है कि वहाँ conflict हो रहा है, so that's why we have introduced industrial relations, right? So as to resolve those conflicts amicably and वो अच्छे से आगे बढ़ सके, so that whatever the goods and services that they are producing and all that again at the end
higher level पे देखा जाए तो that would add value to the economy, right? So in this case, when it comes to the industrial relations, the main objective of that is to balance the interest of capitalist and workers. दोनों को balance ले, तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल workers की तरफ है या फिर सिर्फ employees की तरफ है, no. So here A is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the need for industrial relations. Which of the below given statements is or are correct? Industrial relations are essential for managing interactions between the labor and management to regulate their relationships effectively. This is very much true. Industrial relations ensure fair labor practices by setting standards for wages, working hours, and employee benefits, thereby preventing exploitation, for which already there are various acts in place जो employers को follow करना पड़ेगा. The purpose of industrial relations is to provide a framework that balances the interest of both employers and employees in the labor market. This is also very much true, क्योंकि balance वही तो primary objective है. The primary objective of management in industrial relations is solely maximizing the profits without considering labor welfare. So अगर हमने ऑप्शन स्टेटमेंट 3 को अगर ट्रू बोला है तो दिस वुड बी ऑब्वियसली फॉल्स, क्योंकि लेबर वेलफेयर को नजर में रखते हुए दे हैव टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट्स, right? So only 1, 3 and 4 are correct here. So here A is the correct answer when it comes to the need for industrial relations that has to be there. So A is the correct answer. Moving on to our next question. ये क्वेश्चन लिया है मैंने अप्रोचेस टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस. व्हेन वी टॉक अबाउट इंडस्ट्रियल रिलेशंस, उनके दो तरह के अप्रोचेस है, एक तो ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक तो मॉडर्न अप्रोच है. इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में विल बी लुकिंग एट द ट्रेडिशनल अप्रोच. द ट्रेडिशनल अप्रोच टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस व्यू कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स एज अवॉइडेबल and destructive to an organization. Which of the following is a characteristic of the traditional approach? When we talk about traditional approach, कुछ भी ऑलरेडी देखा है हमने कि कॉन्फ्लिक्ट जब आता है तो उसे हम लोग देखते हैं कि वो अवॉइड किया जा सकता है, एंड अगर कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो दैट वुड बी डिस्ट्रक्टिव टू एन ऑर्गेनाइजेशन. सो फॉर दैट दे हैव टू बी अवॉइडेड. इन सच केसेस किस तरह से वो मैनेज करते हैं? सो अंडर ट्रेडिशनल अप्रोच दे focus on the hierarchical power dynamic with the management making the decisions. मतलब ऊपर से नीचे आते हैं decisions ट्रेडिशनल मेथड में. ओके, ट्रेडिशनल अप्रोच में कुछ भी हो रहा है तो वहां से ऊपर वो देखेंगे, अच्छा ये कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, सो बेस्ड ऑन दैट दे विल टेक ए डिसीजन कि अगली बार ये रिपीट नहीं होना चाहिए, तो दिस आर द action that needs to be taken. So that would come from the top. So hierarchical power dynamic would be there here in this case. So here C is the correct answer. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. इससे पहले हमने देखा है कि ट्रेडिशनल अप्रोच में इंडस्ट्रियल रिलेशंस को किस तरह से देखा जाता है, एंड नाउ विल बी लुकिंग एट द modern approach. So which of the following statements correctly describe the modern approach to industrial relations? So it recognizes the role of trade unions and collective bargaining in representing workers' interests. Obviously दोनों की तरफ से वो होना चाहिए, so that they look into. Yes, this is very much true. It encourages workers' participation in decision making at different levels. अदरवाइज ट्रेडिशनल अप्रोच में क्या है, ऊपर से हायरार्किकल वाला डिसीजन आता है, यहाँ पे दे आर इन्वॉल्विंग देम. सो ये दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. इट एक्नॉलेजेस वाई वर्क लाइफ बैलेंस एंड एम्प्लॉय वेल बीइंग एज एसेंशियल फैक्टर्स. यस, उसमें भी करते हैं लेकिन उनका मेजरली उनका फोकस रहता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ट्रेडिशनल अप्रोच में. It differs from the traditional approach by viewing conflicts as inevitable and potentially beneficial to an organization. वहाँ पे क्या है, वो देखते थे कि वो harmful है and कुछ भी होता है तो ऊपर से एक action point आ जाता है. But in this case वो उनको लगता है कि वो inevitable है, ये आने की वजह से they are able to come up with the solution, और आगे ये इससे भी बड़ा conflict हो सकता था, वो avoid किया है. उस तरह के approach से देखते हैं. Yes, this is very much true. It focuses solely on resolving conflicts after they arise rather than preventing them. ऐसा कुछ नहीं, कोशिश करते हैं. Obviously कोई भी organization ये नहीं चाहता कि no they should have conflicts and all that. They try to avoid, but in case अगर कुछ आ रहा है तो definitely they'll try to resolve that by involving everyone here. So this is false. So here 1, 2, 4 and 5. 1, 2, 4 and 5. A is the correct answer for this question. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding bipartite industrial relations. Types of industrial relation में bipartite है. Which of the following given statements is or correct?
Bipartite relations involve direct negotiations and agreements between the employers and workers without third party intervention. So directly वो खुद ही कर लेते हैं जो भी करना है. Okay, so this is very much true. Key aspects of bipartite industrial relations include wages, working hours, workplace conditions, etc. Because obviously those are the things जो common उनका discussion होता है. So this is very much true. Bipartite industrial relations foster a direct relationship between the employers and employees, promoting mutual understanding and conflict resolution. Because ये दोनों ही involved है and दोनों discuss करके कर रहे हैं, तो obviously जो भी वो agreement कर रहे हैं, जो भी वो negotiate कर रहे हैं, that is based on the consent of both the parties. So definitely इस तरह के relations ज़्यादा amicably चलते हैं. So this is very much true. The government plays an active role in mediating and enforcing agreements in bipartite industrial relations. Obviously जब सबसे पहले हम लोग कर रहे हैं, कोई third party intervention नहीं होता है. Here only employees and employees would be there. So obviously question ही नहीं आता है third party का, यहाँ government का. So here this is false, वो खुद ही कर लेते. So here 1, 2 and 4 are the correct statement. So A is the correct answer. So moving on to our next question, consider the following statements regarding tripartite industrial relations. Which of the below given statements is or are correct? Tripartite industrial relations involve the government, employees and workers in discussions and decision making process. Obviously third party rahega, in this case it would be the government. Yes, this is very much true. The primary role of the government in tripartite industrial relations is to act as a neutral mediator. वो सिर्फ mediator की तरह काम करेगा. Discussion तो इन दोनों को ही करना पड़ेगा, employers and employees, to ensure fairness and protect the interest for both the employers and workers. This is very much true. Tripartite discussions often influence labor policies, workplace regulations and dispute resolution mechanisms. Obviously ये सब भी रहते हैं क्योंकि government भी involved है, तो labor policies भी इसमें आते हैं. So definitely this is also true. Unlike bipartite industrial relations, tripartite industrial relations exclude direct negotiations between employers and workers. ऐसा नहीं है, because they are to be involved but with the mediation of the central government. So this is not central government, the appropriate government. So this is false in this case. So here only 1, 2 and 4 are correct. So here D is the correct answer. So moving on to our next question. The directive principles of state policy in the Constitution of India serve as guidelines for the state in creating an industrial relation system that prioritizes which of the following statements. See, when we talk about the industrial relations and the Constitution of India, it plays a really very crucial role, Constitution of India, in shaping the landscape of industrial relations in the country, because they strive on focusing on the fairness, justice and well-being of the workers that they impose here. And the Constitution of India provides basic guidelines for creating the industrial relation system in the country, based on which कुछ fundamental rights है, कुछ directive principles of the state policy है, etc. Okay, वो क्या क्या है, that will be dealing in the coming questions. हम लोग question in the form of questions only will be looking into किस तरह के fundamental rights and all that. So let's, here in this case directive principles of state है, इसमें major हमारा जो prioritization होता है इसमें to have equity, justice and welfare of the workers. Obviously जो हमारा constitution का foundation ही वही है, that is equality for all. So here B is the correct answer. So consider the following statements regarding the role of Constitution of India in shaping industrial relations. Which of the following statements given below are correct? एक बार देख लेते हैं. The Constitution of India provides a foundation for labor policy through fundamental rights and directive principles of state policy. Yes, this is very much true. इन दोनों के जरिए ही वो ये सारे guidelines वो करता है, okay, provide करता है. Articles 12 to 35, the fundamental rights safeguard workers' rights, including the right to form unions and protection against exploitation. Yes, this is very much true. Fundamental rights में अगर देखा जाए तो it is from articles 12 to 35. Different होता है, आगे हम वो देख लेंगे. Articles 36 to 51, directive principles of state policies, guide the state in ensuring fair wages, humane working conditions and social justice for laborers. Obviously this is also true. ओके कि स्टेट्स को क्या क्या करना है, किस तरह से करना है,
Yes, this is true. Article 61 to 71 primarily focuses on labor rights and industrial relations in India. This is not true because Article 61 to 71 pertains to matters related to president and vice president, but not the labor relations or industrial labor rights or industrial relations. So here in this case only 1, 2 or 3 are correct. So fundamental rights में articles 20, 12 to 35 and directives principles of state policy में 35 to 51 number articles. they exclusively no role है जो play करते हैं when it comes to shaping the industrial relations. So here in this case 1, 2, 3 only are correct. So C is the correct answer. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding constitutional provisions that impact industrial relations in India. Which of the following statements given below is or are correct? So Article 14 ensures equality before the law, preventing discrimination in employment and labor practices. Yes, this is very much true. Article 15 explicitly prohibits discrimination in workplace based on religion, race, caste, sex or place of birth. Yes, this is also true. Article 19 grants workers the right to form unions and peacefully assemble, which is crucial for collective bargaining and industrial relations. Yes, this is also very much true. Article 21 has been interpreted to include the right to fair and humane working conditions, ensuring dignity or in employment. So right to everything वो article 21 में आता, right to life and all that. So उसमें ये भी included. Yes, this is also very much true. So here 1, 2, 3, 4 the correct statement. So D is the correct answer. So जितने भी अभी हम लोग कर रहे हैं articles and all that, very very important direct questions भी आ सकते हैं. Directly एक article 15 के ऊपर वो question दे सकते हैं या directly एक question दे सकते हैं article 21 के ऊपर. ओके सो ये सारे आर्टिकल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ आप इन पे अच्छे से फोकस करके कवर कर लीजिएगा. ठीक है. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. Now next set of articles. Consider the following statements regarding constitutional provisions related to labor rights and industrial relations in India. Which of the following statements given below is or are correct? Article 23 prohibits human trafficking and forced labor. Okay, ensuring that no individual is subjected to involuntary servitude. This is very much true. Article 24 strictly bans the employment of children below 14 years of age in factories, mines and hazardous occupations. Yes, this is also very much true. Child labor completely prohibited. Article 38 directs the state to create a social order that promotes social, economic and political justice, which includes fair labor policies. Yes, इसमें fair labor policies भी आते हैं. This is very much true. Article 39 mandates the state to protect workers' health and strength and prevent the exploitation of children and youth in workplaces. Yes, this is also very much true. So ये सारे भी articles जो statements दे रहे हैं वो सभी true है. So hence here the correct answer is D. As I have said again, time and again, ये सारे articles related to pertaining to this industrial relations etc. very very important. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding constitutional provisions related to labor welfare and industrial relations in India. Which of the following statements given below is or are correct? Article 39A mandates the state to ensure equal justice by providing free legal aid so that no citizen is denied access to justice due to economic constraints. So workers को या कहीं पे कुछ ज़रूरत हो definitely they have to help and ये indirectly yes apply करता है. So true. Article 41 guarantees the right to work, education, public assistance in case of unemployment, sickness or disability. Yes, ये भी apply होता है when it comes to the industrial relations. Article 42 directs the state to ensure just and humane working conditions and provide maternity relief to the workers. Yes, this is also true. Article 43 requires the state to ensure living wages and a decent standard of life for all workers, including leisure and social security benefits. वो सब मिलना चाहिए. Yes, this is also true. Article 43A provides for the participation of workers in the management of industrial undertakings to promote industrial democracy. Yes, this is also true. कि बोलते हैं ना कि union members के जो main board है that they participate in the managerial action. So yes, this is also true. So here in this case all these statements pertaining to these articles are true. Hence D is the correct answer because 1, 2, 3, 4, 5 they are all true. So moving on to our next question, which of the following industries is considered the first modern industry in India? See, जब 19th century में या उससे पहले जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हुआ धीरे धीरे से ट्रेडिशनल इंडस्ट्री से मॉडर्न इंडस्ट्रीज की तरफ वो बढ़ा था. Now when we talk about India
फर्स्ट मॉडर्न इंडस्ट्री स्टार्ट हुआ था इंडिगो प्लांटेशन से एक्चुअली। ओके, ये हुआ था 1831 में, इंडिगो प्लांटेशंस। you can say that this is the first industry in 1831. आफ्टर दैट आया था कॉटन मिल्स, और कॉटन मिल्स स्टार्ट हुए थे 1851 में। ओके, ये 1831 में हुआ था। आफ्टर दैट ये मुंबई में हुआ था कॉटन मिल्स का। ओके, लेटर जूट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट हुआ था, जूट मैन्युफैक्चरिंग उसके बाद स्टार्ट हुआ था 1855 में, ये हुआ था कैलकाटा में, अभी कोलकाता। ठीक है, सो ये जो मॉडर्न इंडस्ट्री अगर हम लोग कहेंगे तो कई बार हमारे दिमाग में सबसे पहला था कॉटन का, लेकिन वो स्टार्ट हुआ था इंडिगो प्लांटेशन से जो 1831 में हुआ था। उसके बाद 1851, 1855 में कॉटन एंड जूट रेस्पेक्टिवली दे हैव फ्लरिश्ड एज पार्ट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रीज। So moving on to our next question, the statement says the early stages of industrialization in India were characterized by significant power imbalance between the capitalist and labor. क्योंकि capitalist उस time पे they used to consider these workers simply tools of production. Okay, so this led to the exploitation of the workers. Which of the following was a consequence of this power imbalance? इसकी वजह से unrest शुरू हुआ, and सबसे important ये this has led to the to lay the foundation for the seeds of trade unionism. So it gave way for emergence of trade unionism and labor unrest as workers organized to protect against such exploitation. And ये सबसे पहले हुआ था वेस्ट बंगाल में हुआ था, जब इंडिगो कल्टिवेटर्स को ऑपरेस करने की कोशिश किए थे, एंड 1860 में हुआ था ये। ओके, सो उसके बाद फॉर्मल यूनियन ऐसे कुछ नहीं किया, बट स्टिल द अनरेस्ट व्हेन वी आर टॉक अबाउट ये हुआ था। एंड आफ्टर दैट नागपुर में हुआ था 1877 में जो अनरेस्ट हुआ था, एंड उसके बाद मुंबई, सूरत स्लोली 1900s के बाद जब हम लोग आगे बढ़े, देन द यूनियंस एंड ऑल दैट दे केम इनटू प्लेस। अदरवाइज जब अनरेस्ट जब देखेंगे तो दैट हैज स्टार्टेड इन 1860 जो हुआ था इंडिगो प्लांटेशंस में। ओके, दैट लेड टू यूनियनिज्म, मतलब एक यूनिटी में हम लोग रहेंगे तो वी कैन फाइट फॉर आवर राइट्स टाइप का एक माइंडसेट लॉन्च हुआ था। सो हियर द करेक्ट आंसर इज सी। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने MCQs किया है जो आपके प्रिपरेशन को और भी आगे लेके जा सकता है। नाउ आपके प्रिपरेशन को और भी अच्छे से करने के लिए एड्यूटैप हैज़ लॉन्च 3 मेन कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फॉर दोज हु आर टारगेटिंग द अपकमिंग UPSC EPFO APFC एंड योर AO एग्जामिनेशन। ठीक है, वो 3 कोर्सेज क्या क्या है? सबसे पहले आता है आपका मास्टर कोर्स, जिसमें आपको पूरा कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, PDFs, MCQs, टेस्ट, चैप्टर टेस्ट, एवरीथिंग आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, ये उनके लिए है जो भी अपना प्रिपरेशन अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर एक 1 पॉइंट कॉन्टैक्ट की तरह, जहाँ से उनको सब कुछ मिल जाएगा, कंटेंट भी, स्ट्रैटेजी भी, एक्सेट्रा। एंड हियर एवरी वीक कुलदीप सर आपको एक स्ट्रैटेजी देंगे कि इतना कंटेंट है तो उसको किस तरह से आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रिपरेशन में, एंड ऑल दैट अलॉन्ग विद इट जो भी आपके डाउट्स है वो रिजॉल्व करेंगे। एवरी थर्सडे क्लास रहता है। नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस। इसमें ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी थोड़ी बहुत प्रिपरेशन कर लिए हैं, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स में इनको आइडिया है बिल्कुल और कुछ सब्जेक्ट्स में नहीं है, तो एक ही अगर उनको सब्जेक्ट चूज करने, लाइक एक्सक्लूसिवली पॉलिटी के लिए उनको बिल्कुल कंटेंट चाहिए, या फिर सिर्फ लेबर लॉस एंड IR के लिए चाहिए, इन दैट केस ये उनके लिए बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का कंटेंट अलॉन्ग विद दैट फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, तो आपका बिल्कुल फुल प्रूफ वो हो जाएगा। थर्ड आता है आपका कोर्स टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज में क्या है, आप ये ऐसे बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एक बार या फिर एक बार एग्जाम देके फिर दे रहे हैं, या फिर उनका बिल्कुल अपने एंड से प्रिपरेशन है लेकिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं है, उन जैसे बच्चों के लिए ये बिल्कुल बेस्ट है, जहाँ पे आपको गुड नंबर ऑफ MCQs वुड बी प्रोवाइड इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट, तो आपको एक रियल एग्जाम का फील भी मिलेगा, एक अच्छे से प्रैक्टिस भी हो जाएगा। So if you have any doubt, कोई query है, you can always reach out to any of the personnel from the Edutap जो available है, and you can get your doubts clarified, and accordingly you can make an informed decision. So hope you have all liked the session.
So thank you very much for being with me so patiently till end, and we'll meet soon in another session very soon. Thank you very much once again. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session related to labor laws and industrial relations. So here in this session we are going to see the industrial relations overview chapter part 2. We'll be dealing with another 15 MCQs. Why is this series important? See, when it comes to UPSC EPFO exam, be it for APFC, okay, or AO or EO examination, these topics are very important, as close to 15 plus MCQs come from these topics. And if you can prepare well even the basics of them also, you should be able to clear very easily 10 MCQs. Okay, so which actually is a very good weightage. It has a very good weightage and high scoring potential as well. So if you are preparing for any of these components, I suggest you to go through this series and utilize this for your both preparation as well as your revision as well, because whatever that we are covering in these sessions, that are all in the form of MCQs, so that it will be a great option for your revision as well. So hope you'll utilize this, and moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So let's get into the session now. So friends, coming to the first question in this session, so the Bombay Mill Hands Association, established in 1890, was a significant milestone in the development of industrial relations in India. See, when in 1881 the enactment of Factories Act has happened, after that lot of changes have happened in the industrial sector. Okay, that has helped the workers to know about their rights and all that. Since then, slowly, since 1881, after the enactment of that Factories Act, slowly various workers organizations have started to begin, taking place. So in as part of that only, the Bombay Mill Hands Association, it is a first workers association to be established in India, and this was established by one of the following persons who played a key role in the formation of this association. After this, several other associations have also tried to form, but still उतना सही से नहीं हो पाया था. एंड उसके बाद 1926 में जब ट्रेड यूनियन एक्ट आया था, उसके बाद थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शुरू हो गया, तो एक फॉर्मल वाला आ गया था. बट द फर्स्ट जो अच्छी तरीके से जो वर्कर्स एसोसिएशन था जो आया था इन इंडिया, इट वाज द बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन. एंड ये एसोसिएशन को लॉन्च करने वाले कोई और नहीं, मिस्टर NM लोखंडे थे. So moving on to our next question, the formation of which organization in 1920 marked a significant development in the labor movement in India. So जैसे हमने देखा फैक्ट्रीज एक्ट आ गया था, उसके बाद क्या हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया था 1914 to 1918 एज वी ऑल नो. ठीक है, ये वर्ल्ड वॉर आते ही प्राइसेस इंक्रीज हो गए, फिर wages तो उतने ही थे, they haven't increased or something, and the workers they started facing economic distress. एक situation आ गया था, and that all led to labor unrest, which led to the increase in number of strikes and all that. ओके उसके बाद ये सारे स्ट्राइक्स होते होते 1917 में एक स्ट्राइक हुआ था टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का, विच वाज लेड बाय महात्मा गांधी इन 1917. एंड अदर स्ट्राइक्स होती है, तो हो गया एक्सट्रीम ऊपर गुजरात, एंड नीचे जब आओगे तो व्हेन इट कम्स टू एक्सट्रीम डाउन साउथ, मद्रास में भी हो गया था. What do you say, the strikes, various strikes by the, because of this unrest, prices increase, wage कुछ increase नहीं हुआ and all that. Workers of Buckingham and Carnatic Mills, उन्होंने भी 1921 में strikes कर दिए थे. Now all this was happening, and meanwhile क्या हुआ था 1919 में, when all this was happening only, meanwhile International Labour Organization was launched. Okay, वो start हो गया था, formed, it was formed.
सो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड इन 1919. उसके बाद दैट एक्चुअली गेव मूवमेंट और सम बूस्ट टू द लेबर मूवमेंट. ओके, सो उसके बाद ये तो हो गया इंटरनेशनल लेवल में. उसके बाद व्हेन वी टॉक अबाउट इंडिया, 1919 में ILO स्टार्ट होने के बाद 1920 में इंडिया में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का फॉर्मेशन हुआ, एंड दैट लेड टू सम सपोर्ट टू दीज workers who are trying to form some association and trying to agitate against whatever oppression that was happening against them, and all this led to the formation of the trade unions act जो 1929 में हुआ था. So here the correct answer is C. Moving on to our next question. The establishment of tripartite consultative machinery in 1942 played a crucial role in shaping the industrial relations in India. Which of the following best describes the tripartite nature of industrial relations? ये अगर हमने देखा ऑलरेडी एक बेसिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस किस तरह से होते हैं, बाईपार्टाइट, ट्राईपार्टाइट रिलेशंस एंड ऑल दैट वी हैव सीन. सिमिलरली इंडिया में भी उसी तरह का, उसी फ्रॉम द सेम व्हाट यू विल से फ्लो, दे हैव कम अप विद अ ट्राईपार्टाइट कंसल्टेटिव मेशनरी, दैट इज सब 3 parties coming together. कोई भी प्रॉब्लम होगा तो all these 3 parties will come together to resolve that amicably. So 1942 में ये establish हुआ था, and this framework includes workers जो employees है, employers जो उनके ओनर्स है, एंड द गवर्नमेंट ऑन वेरियस लेबर इश्यूज. इससे क्या हो गया, जो सफर जो कर रहे हैं काम, उनका भी इन्वॉल्वमेंट है इन द डिसीजन मेकिंग, इन द मैनेजमेंट प्रोसेस, जो भी उनका डिसीजन होगा. एम्प्लॉयज तो है ही, एंड इन ऑर्डर टू कीप इट बैलेंस गवर्नमेंट भी उसमें था. दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पर द इंडस्ट्रीज दे विल बी इन्वॉल्व. सो हियर ये फ्रेमवर्क की वजह से दैट हैज in this tripartite consultative machinery includes all these 3, and this has helped a lot in resolving various labor related issues. So here A is the correct answer. So coming to the next question. Now what was the primary objective of the industrial truce resolution adopted in 1947? See, when we talk about, in fact एक अगर हम लोग एक chronology देखेंगे, when it comes to industrial relation, we can divide that into pre-independence era and post-independence era, or pre-independence phase और post-independence phase. जो अभी हमने 1942 का जो देखा था, where a tripartite machinery that has been established, वो pre-independence phase का था. Now वो तो हो गया, that they have come up, but after getting independence we have to get some changes. So after that is post-independence phase, India, what Indian government, what they thought was, let's do something to avoid, to reduce this labor unrest and increase the industrialization for growth and generation of employment in India. As part of which 1947 में a tripartite conference was held, wherein tripartite में workers, employers and the government, they were involved, and that led to the establishment or adoption of the industrial truce resolution. Now इस resolution का क्या है? Now this resolution urged both the management, that is the employers, and the labor to commit to maintain the industrial peace and avoid work stoppages for the next 3 years. Why? Because तभी हमें independence मिला था. Now we have to establish ourselves, right? हमें world के economy में अपने economy को establish करना है. For that we have to work little bit more hard. So in order to do that, in order to improve our industrial, क्योंकि इंडस्ट्रीज अगर बढ़ेंगे तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो अगेन दैट विल ऐड टू द इकोनॉमी ओनली. सो फॉर दैट दे हैव रिक्वेस्टेड ट्रूस. एक मतलब कुछ प्रॉब्लम्स भी हो गए थे छोटे मोटे, यू हैव टू एमिकेबली रिजॉल्व दैट, बट वी शुड नॉट स्टॉप द वर्क एट एनी कॉस्ट, सो दैट हम अपने डेवलपमेंट को बिल्कुल रोक नहीं सकते. उस तरह से उन्होंने किया था. As part of this resolution, truce resolution, 3 years तक काम रुकेगा नहीं. Now after that in 1950 the labor relations bill was introduced. Okay, majorly the concept of collective bargaining. See, दोनों का नुकसान नहीं होना चाहिए, and as part of which they have introduced. But though this bill was not passed, whatever might be the reasons, but that has paved a way
towards this development, that is non-legal bipartite approach of solving the industrial disputes, कि गवर्नमेंट के बिना ही यही एम्प्लॉयर्स एंड वर्कर्स ही एमिकेबली डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने का एक अप्रोच was laid down because of that bill, though it could not pass. So here in this case the primary objective is to encourage industrial development and maintain industrial peace. As I've said, उसके लिए उन्होंने एक ट्रूस वो एक रेजोल्यूशन ले आए थे, as part of which they asked कि बिल्कुल पीस होना चाहिए 3 years तक, no work stoppages. Coming to the next question, which of the following statements best reflects the approach towards industrial relations during the first and second 5-year plans in India? Now ये industrial relations का जैसे हमने chronology देखा था होते होते now came the प्लानिंग कमीशन, वो अपना 5-year प्लान्स अपना वो सब डिजाइन कर रही थी, एज पार्ट ऑफ विच फर्स्ट 5-year प्लान 1951-56 के बीच में लॉन्च हुआ था. वेरियस इंडस्ट्रीज पे फोकस था, वेरियस सेक्टर्स, आई शुड नॉट से इंडस्ट्री, सेक्टर्स, वेरियस सेक्टर्स पे फोकस हुआ था, एज पार्ट ऑफ विच इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे भी फोकस था. एंड व्हाट दे सेड वाज मेजरली सबसे इंपॉर्टेंट है डिस्प्यूट्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ओके, एंड फॉर विच एक ग्रीवेंस प्रोसीजर्स होनी चाहिए, एंड फॉर विच दे सेड दैट whatever the disputes that are there, that should be amicably resolved between them through tripartite bodies, wherein the workers, that is the labor, the management and the government will be involved. So इतना तक उन्होंने किया था. After that came the second 5-year plan between 1956 to 1961. So इसमें क्या है, they said that okay, फर्स्ट वाले में हमने बोला है कि दे हैव टू मेंटेन दैट पीस एंड एवरीथिंग एंड कंटिन्यू विद द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, राइट. नाउ सेकंड वाले में दे हैव इवॉल्व द नॉर्म्स, कोड्स, वेरियस मेथड्स फॉर अचीविंग दैट हार्मनी एंड डिसिप्लिन इन इंडस्ट्री. ओके, सो स्लोली स्लोली एज यू कैन सी बहुत अच्छी तरीके से वो डेवलपमेंट हो रहा था. सो एज पार्ट ऑफ विच दे सेड दैट they prompted voluntary arbitration and workers participation. They wanted to increase in the management. See, once they get involved, obviously they'll have that what you'll say trust आ जाता है कि हमारे बंदे भी उसमें involved है, thereby will not be cheated, हम भी है उसमें. So वो सब जैसे कुछ अलग से norms वो सब उन्होंने set किया था. As part of which in 1958 एक joint management councils they have launched. उन काउंसिल्स मतलब जहाँ जहाँ जिसमें इंडस्ट्रीज में वो होना चाहिए करके. In 1957, the Indian Labour Conference that was organized majorly to highlight the maintenance of discipline in industries. And during that conference, after that conference only, that paved a way to create Code of Discipline in 1958, along with the formation of joint management councils in the industries, जहाँ पे उनका तीनों का ट्राईपार्टेट इन्वॉल्वमेंट होगा एंड जो भी डिसीशंस होगा वो होंगे. एंड देन एडिशनली 1958 में ही द वर्कर्स एजुकेशन स्कीम वाज आल्सो लॉन्च्ड टू सपोर्ट द इंडस्ट्रियलाइजेशन. सो फर्स्ट 5-year प्लान मेजरली फोकस्ड एम्फसाइज्ड ऑन ग्रीवेंस प्रोसीजर्स कि किस तरह से करना है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो, and tripartite dispute resolution, तीनों का involvement होना चाहिए. While the second plan promoted voluntary arbitration and workers participation management. So Indian Labour Conference जो 1957 में हुआ है, that led to all these. 1958 में ही बहुत सारी चीज़ें हुई, joint management councils आए, code of discipline आया, workers education scheme आया, so that led that. So this A is the correct answer in this case. So coming to the next question, consider the following statements regarding industrial relations during the third 5-year plan 1961-1966. Which of the following statements given below is or correct? Let us look at the statements. The Industrial Truce Resolution of 1962 was adopted to promote peaceful dispute resolution and enhance production. Yes, earlier जो truce resolution हुआ था, again they have done in 1962, and that also they truce, peace, that's it. So that's what they have focused on. The establishment of Central Wages Board, Safety Councils and the Model Grievance Procedure took place during this period. जो हमने 1957-58 में देखा था, in the second 5-year plan they have come up with lots of conferences, उसके बाद कुछ councils and all that. उसका एक what you'll say formal procedures
अंडर द गवर्नमेंट दैट हैज़ टेकन प्लेस. एक शेप मिल गया था उनको इन द फॉर्म ऑफ वेज, सेंट्रल वेज बोर्ड, सेफ्टी काउंसिल्स, मॉडल ग्रीवेंस प्रोसीजर्स एक्सेट्रा. ये एक हो गया. नेक्स्ट, ये भी ट्रू है. एंड द फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर वॉज अपॉइंटेड ड्यूरिंग दिस प्लान ओनली टू कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. एंड यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू. थर्ड 5 ईयर प्लान में यही 3 मेजर वर्क्स हुए हैं व्हेन इट रिलेटेड टू इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर बिकॉज ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू. Coming to the next question, consider the following statements regarding industrial relations in India during the 1970s. Okay, so 1970s मतलब आप समझ सकते हो starting 4th 5 year plan, the rest of them. Which of the following statements is or are correct? Let us look at the statements. The early 1970s saw significant industrial strife with increasing political interference in trade unions. So slowly ट्रेड यूनियंस का जब स्टार्ट हुआ था, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस ऑल्सो हैज स्टार्टेड विच दैट ऑल्सो लेड टू, पॉलिटिकल इंटरफियरेंस पे नेगेटिवली नहीं देख सकते यहाँ पे, but the efforts that for maintaining the industrial peace initiated in the early years of independence proved to be inadequate because of this interference. So they tried in every possible manner to maintain that, they couldn't do. So in order to address the ongoing volatile economic situation or the conditions in the country, 1975 में गवर्नमेंट ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया. The second statement says that. So this is here in this case, first statement is true. The government declared emergency in 1975, during which the right to strike was suspended to control the economic and industrial instability. जब political interference बहुत ज़्यादा हो गया, out of control, though the government has tried in every possible manner to control that, okay, they couldn't do, and adding fuel to that, economic instability भी हो गया था, because of which the government had to come up with the emergency. So ये हो गया. Yes, this is also true. Now the industrial policy resolution, after that came emergency हट गया था, and after that the industrial policy resolution came in 1980. Now this completely overturned the principles of the industrial policy resolution of 1956. No, 1956 में जो industrial policy resolution हुआ था, in fact they have reaffirmed those earlier resolutions. Okay, उसमें 1956 में जो भी resolution लिए वही इन्होंने reaffirm किया है, rather than coming up with something very much new. reaffirm करते हुए कुछ और add किया होगा, but otherwise they haven't overturned, in fact they have reaffirmed them. So this is false. So here in this case only 1 and 2 statements are true, so A is the correct answer. So coming to the next question, अभी जो हमने 5 year plans में क्या क्या हुआ है वो हमने डिस्कस किया. So first, second, third, fourth and 1970s, right? So during which 5 year plan was the first National Commission on Labour appointed to comprehensively review industrial relations in India? So उसी का रिवाइज मतलब रिविजन क्वेश्चन आप समझ सकते हो. So in this case it was the third 5 year plan during which the first National Commission on Labour was appointed. Okay, so ये third 5 year plan में हुआ. So what was the primary context in which the second National Commission on Labour was established? See, when the first, we have already seen that India has established 2 National Commissions on Labour as per this question. So basically दोनों भी एक ही चीज़ के लिए लॉन्च किए गए थे और एस्टेब्लिश किए गए थे, मेजरली टू रिव्यू द लेबर रिलेटेड इश्यूज, जो भी वेरियस लेबर रिलेटेड इश्यूज, एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशंस, अप्रोप्रिएट रिकमेंडेशंस. बट व्हेन द फर्स्ट कमीशन वाज फॉर्म्ड, क्योंकि उसी टाइम में हमें इंडिपेंडेंस मिला था, सो मेजरली दैट वाज फॉर्म्ड टू एग्जामिन द स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस in India, because that was the initial phases of government led industrialization for economic development in India, right? क्योंकि उसी टाइम पे हम लोग फोकस कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन को, how we can lead, utilize it very well for the economic development. Okay, so that focuses mostly on that. But the second commission on labor was appointed during the period of economic liberalization, so that focused on that लिबरलाइजेशन के टाइम पे जो भी बहुत ही एज पर द रिक्वायरमेंट लॉट ऑफ डिसीजंस वर टेकन.
So उस पे फोकस कर रहा था. So here during the period of liberalization the second National Commission on Labor was launched and hence here B is the correct answer. So coming to the next question, अभी हमने देखा इससे पहले कि इंडिया में दो नेशनल कमीशन ऑन लेबर आए थे. अभी उनके बारे में थोड़ा सा इन डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे अगेन इन द फॉर्म ऑफ MCQs. Okay, so here the question says with reference to the first National Commission on Labor which happened between 1966 and 1969, consider the following statements. Which of the following statements given below is or are correct? Okay, so first it was constituted under the chairmanship of Justice P.B. Gajendra Gadkar and submitted its report in 1969. Yes, it was happened in that only. 1916 August में ये report submit हुआ था. 1966 December में ये commission was set up. Okay, yes, this is very much true. The commission addressed various aspects of labor welfare including wages, social security, industrial relations and workers training. They have included everything in that and they looked into the relationship between the workers and employers. उनका किस तरह से वो relationship है, what was the machinery of relationship between them, bipartite था, tripartite था, how it was, all that they have studied. Yes, this is also true. They have looked into every aspect. Its recommendations led to the amendments in key labor laws such as the Industrial Disputes Act, the Factories Act, and the Employees Provident Funds and the Miscellaneous Provisions Act. Yes, all these ना उन्होंने जो भी recommendations दिया है उसके basis पे amendments लाए गए थे in all these acts so that उनके recommendations को वो apply कर सके on the ground level. So yes, this is also very much true. एंड दैट हैज़ लेड, ये तो मैं बहुत कम यहाँ पे एक्ट्स दे रही हूँ, और भी बहुत सारे थे जैसे आयरन और मैंगनीज और एंड क्रोम और माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट लेबर एक्ट, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस लेबर वेलफेयर फंड एक्ट, ऐसे कई सारे एक्ट्स थे, बहुत सारे एक्ट्स थे जिसमें अमेंडमेंट्स लाए गए थे बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस डन बाय दिस कमीशन. सो उन्होंने उनकी वजह से मतलब रिकमेंडेशंस की वजह से बहुत कुछ चेंजेस लाए गए थे. दैट हैज़ लेड टू एक अच्छे एक डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इन इंडिया. सो हियर ऑल द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, हेंस डी इज द करेक्ट आंसर. Coming to the next question, the recommendations of the first National Commission on Labor 1969 played a crucial role in the enactment of which of the following legislations? So here अभी हमने डिस्कस किया था. So Contract Labor Regulations Act, yes this is true. Equal Remuneration Act, yes this is true. Child Labor Act, that is Prohibition Regulation Act, yes this is true. ये तीनों है. This not Mines and Minerals Development and Regulation, इसमें कोई उनका रोल नहीं था. इनफैक्ट आयरन और मैंगनीज और क्रोम और लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट माइंस उनके उसमें उनका था. So here only 1, 2, 4 are true. So B is the correct answer here. Now, which of the following statements best describes the significance of the Second National Commission on Labor 1999? See, as I've said earlier also, first Labor Commission focused on वेरियस अदर रिलेशन की उनके मैकेनिज्म क्या है, वर्कर एंड एम्प्लॉयर्स का रिलेशन एंड वेरियस अदर नुआंसेस दैट दे हैव लुक्ड इनटू. बट सेकेंड नेशनल कमीशन जो लॉन्च हुआ था 1999 में विथ रविंद्र वर्मा एज इट्स चेयरमैन एंड दे हैव सबमिटेड द रिपोर्ट इन 2002. ओके 2002 में उनका रिपोर्ट सबमिट हुआ था एंड रविंद्र वर्मा वॉज द चेयरमैन फॉर दिस. नाउ दे फोकस्ड ऑन, ये भी हमने एक बेसिक क्वेश्चन की तरह हमने कवर किया था, दे फोकस्ड ऑन द constitutional response for the economic reforms that have occurred, that is the liberalization. LPG जो हुआ था 1991 में उस पर फोकस कर रहा था. सो हियर इट वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन रिस्पॉन्स टू द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991 एंड एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, क्योंकि तीनों का ऐसा नहीं कि लिबरलाइजेशन मतलब सिर्फ उस पर फोकस करेंगे. दे फोकस्ड ऑन LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन and how that globalization is impacting on labor laws, industrial relation and workers welfare. All this they have looked into and based on the analysis they have submitted the report and based on that only
उन्होंने इंश्योर किया था कि वर्कर्स वेलफेयर इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल. इट प्रपोज्ड एन अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर सोशल सिक्योरिटी ऑफ वर्कर्स इन द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर एज वेल. Okay, that they paved the way, you can say, or recommended. So in this case, when it comes to the significance of the second national commission on labor 1999, here A fits very much, into that bill. So A is the correct answer here. Coming to the next question. With reference to the impact of globalization, consider the following statements. Which of the given below statements is or are correct? Now, globalization was that process where interconnection of people across the world on various dimensions has happened, that included cultural, economical, political, technological, environmental aspects, and that has brought about significant or phenomenal changes in industrial sector as well in India. ना उसका इम्पैक्ट क्या क्या था, कई सारे थे, लाइक इंक्रीज वर्कर माइग्रेशन, एक्सपेंशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज, एमएनसीज हो गए थे, ग्रोथ ऑफ टर्शियरी सेक्टर वेयर हम लोग जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर एंड माइनिंग और नेचुरल रिसोर्स बेस्ड जो इंडस्ट्रीज थे उनसे हटके जो टर्शियरी सेक्टर, सर्विसेज सेक्टर, वो सब इम्प्रूव होने लगे थे. एंड अलॉन्ग विद दैट टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, उनका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था इंडस्ट्रियल रिलेशंस में इंडिया में. सो अभी स्टेटमेंट्स एक बार देखते हैं. ग्लोबलाइजेशन हैज लेड टू एन इंक्रीज इन वर्कर माइग्रेशन बोथ विद इन एंड अक्रॉस नेशनल बॉर्डर्स. दिस इज वेरी मच ट्रू, एक ओपन हो गया हमारा इकोनॉमी. The expansion of multinational companies has resulted in the creation of employment opportunities for the local workers in different countries. क्योंकि वो भी अपना business expansion कर रहे थे, on the other hand हमें भी employment generation मिल गया था because they were opening their establishments here, branches. Yes, this is also true. The growth of the tertiary sector has been accompanied by a decline in the primary sector including agriculture and mining, and this is also very much true. जो natural resource based industries वो सब थे वो थोड़े से डिक्लाइन में आ गए थे बिकॉज टर्शियरी सेक्टर, सर्विस सेक्टर जो है वो इम्प्रूव होने लगे थे. वेरी मच ट्रू. The technological advancements due to globalization have led to little or no impact on industrialization. No, ये बहुत ही अच्छा impact आया था. So this is false, which we have already discussed the consequences of the globalization in India, especially on industries, right? So here only 1, 2 and 3 are true. 4th is not true. So B is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अर्लियर हमने देखा था कि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस एक अच्छे से इम्पैक्ट लेके आए थे इंडस्ट्रियल रिलेशंस पे. हाउ, दैट विल लुक इनटू in this question. With reference to the impact of technological change on industrial relations, consider the following statements. Which of the given below statements is or are correct? Organizations adopt new technology primarily to reduce cost, improve efficiency and maintain a competitive advantage in the market. Yes, this is very much true. और किसी रीजन के लिए तो करते नहीं है. Yes, this is true. Increasing customer demand for high quality products at lower prices has led to the widespread adoption of benchmarking and quality standards such as ISO, BIS, Six Sigma, बेल्ट, वो सब स्टार्ट हो गए थे. यस, दिस इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि जब इंडस्ट्री टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आने लगे एंड व्हेन द एंटायर ओपन अप हुआ था इकोनॉमी, बिकॉज ऑफ विच कस्टमर्स में भी एक अवेयरनेस लेवल बढ़ गया था. सो दे वर फोकसिंग ऑन द क्वालिटी प्रोडक्ट्स. हमें क्वालिटी प्रोडक्ट्स चाहिए नो, जैसे बाहर मिलता है उसी तरह से, ऐसा नहीं कि सब स्टैंडर्ड होगा तो विल एक्सेप्ट. सो उस तरह से एक अवेयरनेस बढ़ गया था. दैट लेड टू द adoption of this benchmarking and quality standards. Okay, इसमें गवर्नमेंट का भी बड़ा रोल था. they have also come up with various standards established. Next आता है information technology that has empowered the workers by increasing their awareness of labor laws, working conditions, industry standards and various other work related all that. So yes, this is also true. Information technology that has empowered the workers a lot. कि दूसरे countries में किस तरह से है labor laws, वहाँ किस तरह की situation है. Okay, so that they have implied here. This is also true. The introduction of new technology has eliminated worker concerns regarding job security, redundancy and the need for skill upgradation. No, जब भी new technology आता है, obviously that will lead to the एक स्किल
अपग्रेडेशन एंड ऑल दैट. यस, द एप्रीहेंशन, एक एप्रीहेंशन था अमॉन्ग द वर्कर्स की इस तरह से न्यू स्किल्स आएंगे तो उनकी जॉब सिक्योरिटी खत्म हो जाएगा, इकोनॉमिक बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे, या फिर उनके बिल्कुल वर्किंग वाले इसमें स्टाइल में बिल्कुल चेंज आ जाएगा. यस, सो दिस एप्रीहेंशन, वॉट एवर द एप्रीहेंशन दैट हैज अराइज ड्यू टू द इवॉल्विंग नेचर ऑफ द जॉब रिक्वायरमेंट्स विद द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स, दैट हैज हैपेंड डेफिनेटली. बट वो नेगेटिव से ज़्यादा बाद में धीरे धीरे से दैट हैज़ बीन कन्वर्टेड ना एक पॉजिटिव की तरह ले जाके. हाउ दैट वाज डन, स्किल अपग्रेडेशन कोर्सेज, न्यू कोर्सेज को अपनाना, एंड जॉब वर्किंग वाले में कुछ चेंजेस लेके, एंड ऑल दैट दे हैव डन. यस, सो बट दिस इज फॉल्स इन दिस केस. सो ओनली 1, 2 and 3 are the true statements. So C is the correct answer here. Moving to the last question in this session. With reference to human resource management and human resource development, consider the following statements. Which of the following given statements are correct? So first, let us have a look at the human resource management and human resource development. What exactly are they and how they are going to impact the industrial relations? See, when we talk about human resource management, the name itself suggests management. It is a process that helps in proper utilization of the existing workforce in the organization and create such conditions and systems so that the employee efficiency will be increased. ओके, उस पर फोकस करता है किस तरह से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उनको मैनेज करना है, सो दैट एम्प्लॉय एफिशिएंसी को हमें बढ़ाना है. ऑन द अदर हैंड, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कंसिस्ट ऑफ सिस्टमेटिक एंड प्लान्ड एक्टिविटीज that are designed to provide organizational members with the opportunities to acquire the necessary skills for current as well as the future job demands. So वो development ऐसा नहीं कि अभी के लिए कर रहा है या ऑलरेडी कर लिया है. सो इन ऑर्डर टू हैव दिस जो एफिशिएंसी है उसको स्मूथ रखने के लिए दे हैव टू प्लान सम ट्रेनिंग्स एंड ऑल दैट, राइट? दैट इज लुक्ड after by this. So basically these are the basic you can say works, and that has an impact on the industrial relations. Okay, so let's look at the statements. The human resource management focuses on the overall management of the workforce, including recruitment, payroll, employee relations, and compliance with the labor laws. Yes, this is very much true. Okay. The human resource development, on the other hand, is a subject of HRM itself and involves systematic and planned activities aimed at enhancing employee skills for current and future job demands. Yes, this is also very much true, जो अभी हमने डिस्कस कर लिया था. HRD plays a crucial role in aligning employees' skill development with the organization's strategic goals. Yes, that is what the planning and systematic and planned activities are done, right? Okay, yes, this is also true. HRM and HRD are independent of each other, with HRM dealing with only administrative tasks and HRD focusing solely on training programs. ऐसा नहीं है, they are connected. Yes, this is true that HRM is concerned with the overall management of human resources, and in fact HRD is, जैसे हमने यहाँ देखा है, it is a part of HRM only. So as to एक concrete base मिल जाए HRM को, that all would be done as part of this HRD. जैसे research and development जिस तरह से जो product को improve करते हुए या फिर main goal जो है organization का उस पर focus करता है, similar is the case with this also. So HRD क्या है? It focuses on developing the skills and capabilities of the employees so as to meet the organization strategic goals, and that all will support how? The HRM only, क्योंकि वो overall management of the human resources करे. So this is false in this case. So here 1, 2 and 4 only are true. So A is the correct answer. So friends, hope you have liked the session, and before going any further, I would like to highlight one thing. Edutap has currently launched 3 major courses for all those who are targeting the upcoming UPSC EPFO, APFC and E और AO एग्जामिनेशन. सी इसमें 3 तरह के कोर्सेस है. तो सबसे पहले मैं मास्टर कोर्स के बारे में बताना चाहूँगी, वेयर इन आपको ये उन बच्चों के लिए यूजफुल होगा जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, एंड दे लुकिंग आउट फॉर कंटेंट, सब एक ही जगह पे मिल जाए, 1 पॉइंट. तो इसमें आपको पूरा कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियो लेसन्स, चैप्टर क्विजेस, टेस्ट सीरीज, एवरीथिंग यू विल फाइंड हियर along with
कुलदीप सर एवरी वीक आपके लिए स्ट्रैटेजी सेशंस लेंगे कि इतना कंटेंट है तो उसको किस तरह से आपको यूटिलाइज करते हुए अपना प्रिपरेशन आगे लेके जाना है, एंड देन डाउट क्लैरिफिकेशन एंड ऑल दैट। इनफैक्ट वो एवरी थर्सडे होता है ये क्लास। ना दूसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज प्लस। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ऑलरेडी उनको कुछ सब्जेक्ट्स पे है नॉलेज, बट फॉर अदर सब्जेक्ट्स आर लुकिंग आउट फॉर कोर्सेज, एंड उन बच्चों के लिए ये कोर्स बहुत सही रहेगा, क्योंकि इसमें उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स का भी आपको कंटेंट मिल जाएगा कंप्लीट, ओके, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ वीडियोस, चैप्टर टेस्ट एंड ऑल दैट, अलॉन्ग विद द टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगा, सो देयर बाय उनका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, राइट। नाउ तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, एक्सक्लूसिव टेस्ट सीरीज। ये उनके लिए है जो ऑलरेडी पूरा अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं ना, उनका एक रिविजन टाइप और एक प्रैक्टिस टाइप चाहिए, सो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज बहुत हेल्पफुल रहेगा। सो इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ दिस कोर्सेज, आप टीम को आप रीच आउट कर सकते हो। एवरीथिंग हैज़ बीन मेंशन्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सो रीच आउट करके बेस्ड ऑन योर डिस्कशन यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन ऑफ विच कोर्स सूट्स यू बेटर, okay. Hope you have liked this session, and thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot. If you have any queries, you can reach out to us anytime. Thank you once again. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO exam, wherein we'll be doing 15 MCQs a day associated with the labor laws and the industrial relations. Labor laws का तो already हो गया है, and now we are doing industrial relations. उसी में industrial relations overview topic का आज हम लोग करने वाले हैं part 3. Now why is this series important? See, when it comes to labor laws and industrial relations, close to 15 plus MCQs out of 120 are asked from these topics only, be it UPSC EPFO APFC exam और ई और ए एग्जाम, दोनों में से आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हो उनके लिए ये सीरीज बहुत ही यूजफुल होने वाला है, बिकॉज एज यू कैन सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस, वेटेज भी हाई है, एंड यस इफ आप बेसिक्स भी सही से कर लोगे तो स्कोरिंग पोटेंशियल भी हाई है, क्योंकि इतना भी करेंगे तो ना क्लोज टू 10 प्लस MCQ सब आराम से निकाल लोगे, ठीक है। एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द UPSC EPFO 2025 notification very soon, so I suggest you, if you really want to score high in these sections especially, आप ये सीरीज थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए, एंड देन यू कैन रिवाइज, क्योंकि ये वॉट एवर द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग इन दिस सीरीज दैट इज इन द फॉर्म ऑफ MCQs, तो आपका एक, अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपका प्रिपरेशन हो जाएगा, कोई आप रिवाइज कर रहे हो तो रिविजन भी हो जाएगा, और इफ यू आर प्रैक्टिसिंग सम MCQs वो भी इसमें से हो जाएगा आपका। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट इनटू द सेशन। सो कमिंग टू द फर्स्ट क्वेश्चन, अर्लियर सेशन हमने क्लोज किया था विथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ, राइट। उसमें हमने किया था उनके डिफरेंसेस क्या है, सिमिलैरिटीज क्या है, हाउ दे आर इम्पैक्टिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशंस, राइट। सो इन दिस हम लोग, क्योंकि हमने एक और देखा था डिफरेंसेस बहुत ज्यादा, नाउ आई वांट यू टू टेल मी व्हाट इज द अंडरलाइंग कॉमनैलिटी बिटवीन HRM और HRD एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, क्योंकि whatever might be their objectives, but on the whole उनका एक common motive as you can say of human resource, be it management or development एक है, and that is nothing but the emphasis on the employee centric concerns. अगर वो सही से रहेंगे and वो अगर up to date रहेंगे, वो happy रहेंगे and सब सही रहेंगे, तो that would always impact positively the organization. So उनके जो welfare policies है, grievance handling है, training है, whatever concerning, all that जो भी है, that all उसका जो underlying commonality है between this HRM and HRD is the emphasis on the employee centric concerns. So here the correct answer is option B. Now, when we talk about the fundamental differences between HRM or HRD and industrial relations, अगर वो देखेंगे, see which of the following statements accurately captures the fundamental difference between HRM or HRD and industrial relations. Okay, उन दोनों में major fundamental डिफरेंस ये है कि HRM और इंडस्ट्रियल रिलेशंस दे आर इनहेरेंटली कलेक्टिविस्ट, क्योंकि वो कॉमन है,
सभी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज के लिए वो कॉमन है. बट व्हेन इट कम्स टू एचआरएम और एचआरडी पॉलिसीज, दे आर इंडिविजुअली फोकस्ड एंड मैनेजमेंट ड्रिवन. जो उस कंपनी की उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, अगर फॉर एग्जांपल फार्मा इंडस्ट्री में, उसमें जो कंपनी काम कर रही है उसके ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से, उनके प्रोडक्ट्स के हिसाब से, उनके मैनेजमेंट के हिसाब से दैट विल वर्क, राइट. सो इट इज द इंडस्ट्रियल रिलेशंस इज इनहेरेंटली कलेक्टिविस्ट, क्योंकि वो तो सभी के लिए अप्लीकेबल होगा, तो उनको एक कॉमन इसमें करना पड़ेगा. बट ऑन द अदर हैंड एचआरएम और एचआरडी पॉलिसीज, दे आर इंडिविजुअली फोकस्ड एंड मैनेजमेंट ड्रिवन. Okay, so here for this, C is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following best describes the essence of Article 38 of the Indian Constitution, which is concerned with the social justice? Now when we talk about this Article 38 of the Constitution, it focuses on social justice. Majorly it focuses on two essential parts. एक तो है फेयर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी है ओनर्स एंड वर्कर्स के बीच में एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए. ऐसा नहीं कि 50-50, बेस्ड ऑन द वर्क, बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव, बेस्ड ऑन द कॉम्पोजिशन, वो होना चाहिए. ओके. नेक्स्ट आता है सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशन, बिकॉज अगर वो सेफ एंड हेल्दी वर्क कंडीशंस में काम करेंगे तो ही उतना प्रॉफिटेबिलिटी होगा, राइट. सो हियर इट मैंडेट्स द इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन द कंपनी ओनर्स and workers, along with ensuring safe and healthy working conditions of the workers. So here when it comes to Article 38 of the Indian Constitution, the correct option is answer A. So moving on to our next question. Now this question focuses on the Article 39. So which of the following statements best reflects the essence of Article 39 of the Indian Constitution that is concerned with the social equity? So बहुत सारे social groups है इंडिया में, as we all know. So उनका एक equality जो आती है, and no that, or you can say that the principle, okay, that is imposed, that is based on the Article 39 of our Indian Constitution, wherein it focuses on the equality among different groups, which are without कोई difference नहीं होगा, rich, poor, religious group, old, young, based on castes, okay. And there should not be any unfair treatment based on any of these discrimination factors. So this labor legislation mainly aims at maintaining harmony and discipline in industry, so that overall the growth of that industry would promote to the national economy. So in this case it ensures equality among different social groups and prohibits discrimination in wages, opportunities, benefits based on this discrimination, gender based ho, caste based ho, group based ho, all this. So here for this Article 39, which focuses on social equity, B is the correct answer. So moving on to our next question, with reference to labor legislation. See, in India various laws are there when it comes to the labor to regulate and protect the rights of the workers. Now all these laws, they can be broadly classified into 5 major categories. उन्हीं categories के basis पे ये question frame किया गया है. Okay, so with reference to the labor legislations in India, consider the following statements. Which of the following statements given is or are correct? Let's have a look at the statement. So सबसे पहले आता है regulatory legislations. Let's look at statement, what it has to say. Regulatory legislations establish rules and guidelines to ensure fairness and proper treatment in the workplace. So it guides for the or it regulates the overall work environment, because वो सही रहेगा तो then they'll be able to contribute properly. So yes, this is very much true. Next आता है wage related legislations. Focus on fair compensation and wage related matters for work day, so that जो भी उनके requirement related to lead a dignified life and wages based on the work that they are doing. Yes, this is also very much true. Third आता है welfare legislations. It provides facilities and amenities to improve workers' well-being beyond their basic needs.
जो बेसिक नीड्स के अलावा कुछ और है उनको किस तरह से वो दे सकते हैं, that they have highlighted here. Next comes the protective legislation. Now this is primarily concerned with ensuring financial security for workers during illness, disability or old age. Now this is actually this law majorly aims to safeguard the workers from unfair practices, exploitation or unjust treatment by employers, not for the future protection, for the current protection during their, as part of the work environment management. So here this is false. So here 1, 2, 3 statements are true. So here A is the correct option. Coming to the next question. According to John Dunlop's system of model of industrial relations, which of the following correctly represents a tripartite structure of the system? Now when we started industrial relations overview, we have gone through one topic. एक topic पे हमने किया था the mechanism, right, of industrial relation, bipartite, tripartite, right. So उसमें हमने देखा था कि एक tripartite एक ऐसा system है जहाँ पे 3 मेजर फैक्टर्स आते हैं. एक तो द एम्प्लॉयर हिमसेल्फ, एम्प्लॉइज एंड एक थर्ड पार्टी भी रहेगा. इन दिस, इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस इट वुड बी द गवर्नमेंट इटसेल्फ और द गवर्नमेंट एजेंसी, सो दैट कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि तो एक एमिकेबल एनवायरनमेंट में वो जस्टिफिकेशन या डिसीजन ले सके. Okay, so on the same principle this is formulated on the same tripartite agreement. So here when it comes to the tripartite structure of the system in industrial relations, it focuses on the employers, the management, workers and their organizations, like कोई trade union है तो वो, and government agencies which regulating the industrial relations. So here D is the correct answer. For example, एक hospital है, okay, so medical field, नर्सेस एंड डॉक्टर्स का अपना एक एसोसिएशन है, लाइक एन यूनियन, एंड मैनेजमेंट एक है. नाउ उन दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, वॉट एवर बाइट बी, कुछ पेशेंट केयर के रिलेटेड होके. नाउ द कॉन्फ्लिक्ट तो आ गया है. नाउ ईच वन दे आर पुटिंग फोर्थ देयर ओन एक्सप्लेनेशंस एंड आर्ग्यूमेंट्स ऑल. सो यहाँ पे कुछ अगर सही से डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना है ना amicably, so थर्ड पार्टी शुड बी देयर. सो हियर कम्स द रोल ऑफ द government or the government agencies which can intervene and get this resolved. So here as we can see, 3 primary actors you can say there are. one, the employees, here in this case जो हमने एग्जाम्पल दिया है उसमें है nurses and doctors, the management जो हॉस्पिटल जिनका भी है, एंड थर्ड द जो गवर्नमेंट है या गवर्नमेंट एजेंसी. ओके, यस. So moving on to our next question. Consider the following statements regarding the unitary perspective in industrial relations. Which of the statements given below is or are correct? Now when we talk about the perspective of industrial relations, there are various perspectives. Okay, one of that is the unitary perspective. Now what does the unitary perspective says? Basically मैं कुछ important points highlight करूँगी यहाँ पे. They say that enterprise, the organization or the enterprise itself is a social system or a unitary organization, एक single unit है, that is made up of management, workers, etc. Okay, and all of them have the common objectives. Okay, so that they can achieve high efficiency and high profits that would ultimately benefit all, and hence there exists no conflict. Actually conflict होता ही नहीं है. So let's have a look at the statement. It views enterprise as a harmonious social system where management and workers share common objectives, eliminating the need for conflict. Yes, this is very much true when it comes to the unitary method of perspective in industrial relations. It considers trade unions unnecessary as they arise from misunderstandings rather than genuine worker management conflicts. This is also very much true. Actually they say that यूनियंस की कोई ज़रूरत ही नहीं है. व्हेन वी आर ऑल वर्किंग टुवर्ड्स वन ऑब्जेक्टिव, टुवर्ड्स वन गोल, एंड व्हेन वी आर ऑल वर्किंग towards the benefit of the organization, there is no question of conflicts that are arising. Even if conflicts are arising or misunderstanding की वजह से, and they view them as negative concerns. Okay, it acknowledges power imbalances between the workers and management and suggests mechanisms to address them. This is very much false, because
as per this unitary method, they say that the management and the state, they are rational. Okay, अगर कुछ भी गलत हुआ है or the actions and beliefs of the workers, if they are conflicting with the management and the state, if any such thing is happening, any conflict, that is completely irrational, उसका कोई मतलब ही नहीं है. This is what unitary method has to say, unitary perspective has to say. Okay, so this is false. It assumes that all actions of the management and state are rational, while conflicting worker actions are seen as irrational. So this is very much true. This is what the unitary perspective has to say. So there are many disadvantages of this. एक तो है सबसे बड़ा drawback है power imbalances. They are completely ignored. They say that everything, whatever that is decided by the management and the state, that is in this case the third party government, everything is correct. अगर कुछ गलत हो रहा है, even if a conflict is arising, that is because of the mismanagement or the irrationality of the workers themselves. Okay. दूसरा है negative view of the conflict. They never see the any conflict as a stepping stone or something that can be used for strengthening the bond between the employers and the employees. Rather, they look at them as a negative force. And third drawback is a lack of proposal for identifying any common interest. Okay, they say that these are the interests जो हमने बोला है, and the objectives that they have to follow. There is no room for any discussion also. So here in this case only 1, 2 and 4 are the correct options. So A is the correct answer. Now अभी हमने unitary perspective देखा है. Now let's have a look at the pluralist perspective. Consider the following statements regarding the pluralist theory in industrial relations. Which of the following statements given below, that is or are correct? So first statement says the pluralist theory acknowledges that conflict is a natural and inevitable part of an organization due to the presence of diverse interests. This is very much true. तो इनका क्या है, pluralist, the name itself suggests सबको वो they want to take everyone along with them. Okay. Second statement, it focuses on managing conflicts through negotiation and compromise rather than attempting to eliminate them entirely, which we have witnessed in the unitary perspective. So this is also very much true. It suggests that both workers and management share a common goal of maintaining and growing the organization, as part of which lots of rules and regulations are made. सारे डिस्कस होने के बाद ही करते हैं. So they say that अगर ये सब हम लोग फॉलो करते रहेंगे तो everything should be good. This is also true. A major drawback of this theory is the overemphasis on formal rules and procedures, which may lead to rigidity in workplace dynamics. As I said earlier also, pluralist में क्या है, सबसे ज़्यादा बहुत सारे rules and regulations करते हैं कि ये सब करेंगे तो everything would be fair enough. And ऐसा नहीं है कि वो completely one way आता है, but still that leads to sometimes rigidity in the work environment. So this is also true. So when it comes to the pluralist theory in industrial relation, though it is little better than what we have seen in the unitary perspective, but still इसके भी अपने drawbacks है. एक तो सबसे बड़ा drawback है overemphasis on the rules and procedures, and दूसरा है now when we are overemphasizing, obviously वहाँ पे flexibility नहीं रहती है. So inflexibility in changing the conditions. So as the workplace evolve, a rigid adherence to whatever the established rules that are there, sometimes that might not effectively address the emerging challenges जो नए नए आ रहे हैं. So that might impact the work environment there. So here in this case all these options are true. So it is C, that is the correct answer. So next आता है radical perspective. Okay, coming to the question, with reference to the radical perspective in industrial relations, consider the following statements. Which of the statements given below is or are correct? Now when we talk about the radical perspective in the industrial relations, the first statement has to say it is influenced by the Marxist view on capitalism, emphasizing inherent conflicts between the employers and workers. This is very much true because this yes is inspired by the Marxist view. They say that oppressive nature, मतलब ऊपर से ही सब कुछ आता है, completely capitalistic. So conflict is unavoidable in such organization, as management represent the interests of the capitalists who want to maximize their profits even at the cost of the workers. So yes, this is very much true.
It sees industrial relations as a structural conflict where management represents the interest of capitalists who seek to maximize the profits even at the cost of the workers. So this is also very much true. The radical perspective suggests that organizations are neutral entities that balance the interest of both employers and workers. बिल्कुल contradictory है second statement के साथ. जब हम लोग बोल रहे हैं कि second statement true है तो obviously this has to be false, and yes, this is a false statement because radical perspective में they always look at ऊपर से नीचे आना, मतलब everything has to come down from the top to bottom when it comes to the interest or the objectives or the when it the outcome that what they're expecting from that organization, that will come from the top itself. So कई बार ऐसा होता है कि poor working conditions होते हैं, low wages होते हैं, all this. So next statement says it argues that conflict in industrial relations is unavoidable due to the fundamental exploitation of labor. Obviously that would happen and they resist. That leads to various conflicts. So this is also very much true. So here when we look at the options 1, 2 and 4 are the only true statements here. So A is the correct answer. So coming to the next question, so जो अभी तक हमने जितने भी perspectives देखे हैं उनका एक summary question करेंगे, ठीक है? Now which of the following perspective in industrial relations assumes that managerial decisions are inherently rational? See, these are the keywords. See, whenever कहीं पे भी आपको कभी भी doubt आता है ना, जब बहुत ज़्यादा static part या बहुत ज़्यादा content पढ़ना पड़ता है, better you highlight some keywords. So उससे क्या होता है, वो keywords देखते ही आपको समझ में आ जाता है कि okay, this is what the topic that is highlighted here. So in this case I'll be highlighting the keywords, तो एक आपको idea मिल जाएगा. So here the managerial decisions are inherently rational and should not be opposed by the workers, emphasizing a shared organizational goal and dismissing the necessity of trade unions. ये बोल रहे हैं कि trade unions की ज़रूरत ही नहीं है. Whatever the decisions that are being made by the management, they are completely rational. So your words somewhere you ringing the bell. So here all these words, they are associated with the unitary perspective. Okay, so here in this case unitary perspective, that is B is the correct answer. वही radical perspective में आपका Marxism, capitalist, okay, वहाँ पे oppression, ये सारे words आपके key words होंगे. Pluralist में क्या है, over emphasis on the rules, और conflict is inevitable, तो उसको हम लोग use करके they try to strengthen the the relationship between the management and the workers. Everyone should be involved. Okay, उस तरह के wordings आपके वहाँ keywords होंगे. Okay, so focus on the keywords, so बहुत easy होगा आपके लिए याद रखने में, even lot of content में. So moving on to our next question, consider the following statements regarding trade unionism. When we are talking about industrial relations, a trade union is an inevitable part of that. So उसके बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते. So same thing we are looking at here. Now which of the statements given below is or are correct? So the first the statement says trade unionism encompasses all activities related to the trade unions, including their structure, their functions. You can say whole gamut of activities related to trade unions, they fall under the trade unionism. Yes, this is very much true. Okay, according to Tannenbaum from 1951, trade unionism is a natural outcome of a capitalist society. देखिए capitalist society में क्या है, there might be a chance that कि oppression वो सब हो रहा है. So in order to avoid that, avoid that नहीं, in order to act against that oppression, etc., all these workers, they come together, right, and वो अपना हक के लिए लड़ते हैं, right? So it is a natural outcome of a capitalist society. While the labor movements, क्योंकि लेबर मूवमेंट्स में और ट्रेड यूनियनिज्म में बहुत फर्क है, एंड दिस स्टेटमेंट एक्चुअली हैज हाइलाइटेड इट रियली वेरी वेल. So the labor movement signifies the awakening of the working class for their rights.
ओके, सो पूरा वर्किंग क्लास देख रहा है कि नो दे आर ट्राइंग टू कम अप विथ such movements where they are working towards their rights. Okay, so yes, this is very much true statement. Workers, when organized as a collective body rather than acting individually, can exert greater influence over employers, and that is the one that led to the development of the trade unions. Okay, so yes, this is also very much true. The trade union movement strictly refers to the government led initiatives aimed at regulating labor conditions. ऐसा नहीं कि though it is also a part of that, okay, but majorly trade unionism क्या है, that union movement, it's a gamut of all the activities, एक नहीं, ठीक है. So this partially though right, you can't consider this as a completely true statement, so this is false. So only A, B, C, that is 1, 2 and 3 are the true ones, so here C is the correct answer. Moving on to our next question. Consider the following statements regarding the framework of industrial relations in India. Which of the statements given below is or are correct? Now, when we look at the framework for industrial relations in India, that has been formed by a number of legislations in the country. And ऐसा नहीं कि legislation सिर्फ workers के लिए है या labor के लिए है. No, it contains both the obligations and the duties for both the employers and the workers. ठीक है. Now let's, with this introduction या फिर with this information, let's look at the statements. Labor is a subject in the concurrent list of the Indian Constitution, allowing both the central and state governments to enact labor laws. Yes, this is very much true. ऐसा नहीं कि ये सिर्फ स्टेट सब्जेक्ट है या सेंट्रल, बट इट्स इन द कॉन्करेंट लिस्ट, देयर बाय both it is a responsibility of both the central government and the state government to look into and enact the labor laws. Industrial relations in India follows a tripartite structure involving employers, workers and the government in resolving labor related issues. Yes, this is also very much true, क्योंकि इंडिया में जो पर्सपेक्टिव है to look at the industrial relations, it is a tripartite one. Okay, in few sectors it is a state government that looks into, that is appropriate government, and in few sectors it is central government which acts as an appropriate government. Accordingly they look. The Indian Labour Conference, Standing Labour Committees and the Industrial Committees are the key tripartite bodies facilitating discussions on the labour issues. देखिए, if there is some conflict that is happening, it's not that the entire central government is coming to resolve that. In order to do that, lot of government agencies work. They are, ये कुछ उसके examples है. So yes, this is also very much true. Only the central government has authority to enact labor legislations, while state governments can only implement them. So अगर मैं बोल रही हूँ one statement one is correct, तो ये false, right? क्योंकि यहाँ हम लोग बोल रहे हैं कि it's a concurrent list. It falls under the concurrent list of the Indian Constitution. So obviously वो central and state government दोनों की responsibility है. So this is a false statement. So here 1, 2 and 3 only is the correct. So A is the correct option here. So moving on to our next question. Match the following labor related entries with their respective list in the Indian Constitution. Regulation of labor. See, when we look at the labor related entries, we know, we have already seen that labor जो topic है, that is falls under concurrent list. That is दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट की. उसी के अगेंस्ट कुछ एंट्रीज हुए हैं, लाइक रिलेटेड टू उन्हीं के रिलेटेड, लाइक कुछ यूनियंस का किस तरह से, सोशल सिक्योरिटी किस तरह से, सोशल जस्टिस एंड ऑल दैट किस तरह से, किसके ऊपर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी पड़ेगा एंड ऑल दैट. सो लेट्स लुक एट द एंट्रीज. रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये एंट्री नंबर 55 है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट माइंस, ऑयल फील्ड्स, डिफेंस, all these industries or the sectors, जो appropriate government है, that is a central government. So ये exclusively this falls under the union government. उसमें कुछ भी होगा तो that is a responsibility of them. Trade unions, industrial and labor disputes, obviously ये हर industry में होगा. Okay, so obviously the logic says it falls under the concurrent list, and ये है भी. Social security and insurance, employment and unemployment, now ये भी सभी में होगा. So obviously ये भी आता है हमारे concurrent list में ही. Welfare of labor including conditions of work, provident funds, old age pension and maternity benefit,
ये भी हमारा आता है अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट ओनली. सो इन दिस केस बी, ऑप्शन बी, क्योंकि 1B है, बाकी सब कॉन्करेंट लिस्ट दैट इज ए है. सो दिस फॉर द करेक्ट ऑप्शन हियर इज आंसर बी. So moving on to our next question. The government plays multiple roles in shaping the industrial relations and ensuring labor welfare. Which of the following statements correctly represents these roles? Now when we talk about the government, though वो एक ट्राईपार्टाइट पर्सपेक्टिव के थ्रू और मैकेनिज्म के थ्रू वो वर्क करता है, बट स्टिल व्हेन इट कम्स टू द लेबर एज सच, द गवर्नमेंट सर्व्स एज ए प्रोटेक्टिव फोर्स फॉर लेबर. कि कुछ भी होता है तो डेफिनेटली they'll have the backing of the government in case कुछ भी गलत होता है लेबर के साथ. A policy maker, based on that only they make the policies for the welfare of the labor. An employer, even it comes to the public sector enterprises, obviously जो public sector enterprises है, for them the government वही देखता है क्योंकि गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस है. सो इट बिकम्स एन एम्प्लॉयर देयर. एंड अ प्रोवाइडर ऑफ सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स, जितने भी सोशल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स है, लाइक मैटरनिटी बेनिफिट हो गया, कुछ हेल्थ बेनिफिट हो गया, कुछ पेंशन बेनिफिट हो गया, ऑल दैट वुड बी द प्रोवाइडर द गवर्नमेंट इटसेल्फ. सो इट सर्व्स एज ऑल दीज. Okay, as a protective force, a policy maker, an employer, in few cases a provider of the social security. So in this case C is the correct option when we talk about the roles, multiple roles that are played by the government in shaping the industrial relations and ensuring the labor welfare. Moving on to the last question for this session and for the topic itself, industrial relations overview. ठीक है, the labor administration machinery in India is overseen by the Ministry of Labor and Employment, which operates through multiple offices and autonomous organizations. Which of the following statements accurately reflect its structure? See, when we talk about this labor administration machinery in India, yes, labor ministry एक है, Ministry of Labor and Employment. उसके under 4 attached officers and besides that there are 10 subordinate officers as well. ओके, एंड उसमें आते हैं डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी धनबाद एंड ऑफिसर्स ऑफ द वेलफेयर कमिश्नर इन 9 cities इन इंडिया. वो सारे इसी के अंडर आते हैं. तो 1 जो सबऑर्डिनेट ऑफिसर्स के बारे में जब बात करते हैं, एंड द 4 ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस दैट फॉल अंडर दिस इज, 1 तो है ESIC, दैट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन. दूसरा है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन. ओके, तीसरा है VV गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट. ओके, और 4th वन है द सेंट्रल बोर्ड फॉर वर्कर्स एजुकेशन. ये 4 ऑर्गेनाइजेशंस, दे आर द ऑटोनमस ऑर्गेनाइजेशंस दैट फॉल अंडर दिस मिनिस्ट्री. एंड 10 क्या है, मैंने ऑलरेडी बताया है कि 10 subordinate officers that includes Directorate General of Mines Safety Dhanbad and offices of the welfare commissioners, जो 9 officers in other cities. So here the Directorate General of Mine Safety and Welfare Commissioners offices are among the 10 subordinate offices under this ministry. Has no subordinate offices. This is false statement. The Central Board for Workers Education functions under the direct control. No, क्योंकि ये autonomous organization है under the Ministry of Labor and Employment. So this is false. Employee State Insurance Corporation and Employees Provident Fund Organization are directly managed by the Office of the Welfare Commissioners. No, this falls under the autonomous organizations, again under the Ministry of Labor and Employment only. So ये भी false. So here B is the correct answer. So friends, hope you have liked this session. So before winding up, I have a small announcement. See, currently Edutap is offering 3 major courses for all those who are targeting the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EOR AO examination. See, the 3 courses that are being offered, उसमें है सबसे पहला आता है हमारा मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया है एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर समथिंग वेयर सब कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाए सारे सब्जेक्ट्स का. And all these subjects content would be provided to you in the form of PDFs, videos, chapter quizzes and strategy sessions भी होंगे, live sessions. So every week Thursday के दिन कुलदीप सर खुद आपसे मिलेंगे and he'll give you strategy related suggestions on how to utilize the content that has been already provided, and उसके साथ साथ जो भी आपके डाउट्स है वो सब क्लियर कर देंगे.
सेकंड है टेस्ट सीरीज प्लस। नाउ इसमें क्या है, कई सारे बच्चों का ऐसा रहता है मुझे एक आधा सब्जेक्ट का ही कंटेंट चाहिए, फॉर एग्जांपल लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस और पॉलिटी इटसेल्फ, ऐसे कुछ अलग सब्जेक्ट्स चाहिए अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल देम। दिस वुड बी हेल्पफुल, क्योंकि वो खुद से ही कुछ सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करना चाहते हैं, कुछ दे आर लुकिंग आउट फॉर कंटेंट, सो फॉर देम दिस इज गुड। थर्ड आता है उनका टेस्ट सीरीज। नाउ इसमें क्या है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि एक अटेम्प्ट दे दिया है या फिर खुद से ही पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, बट स्टिल प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तो ज़रूरत पड़ती है एंड एग्जामिनेशन का फील पहले ही लाना है, तो दे हैव टू अटेंड द गुड नंबर ऑफ मॉक टेस्ट, राइट? सो फॉर देम दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। सो इफ यू हैव एनी डाउट्स रिलेटेड एनी ऑफ दिस कोर्सेज, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ आवर टीम मेंबर्स एंड आप उनसे अपना डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मेक एन इन्फॉर्म्ड डिसीजन। Thank you very much for being with me, and I really hope that you have liked this session. I'll meet you soon with another session. Thank you. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be dealing with 15 MCQs in a session, and as part of which today we are going to do Indian labor force, and this is part 1. So ये सीरीज क्यों इम्पोर्टेंट है? सी व्हेन वी लुक एट द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ, बी इट एपीएफसी, आप एपीएफसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या एओ और ईओ के लिए कर रहे हो, in both the cases labor laws and industrial relations is one of the most important topics, and 120 questions में close to 15 plus questions are asked from these topics only. एंड अगर आप सही से बेसिक्स भी सही से प्रैक्टिस पढ़ के सही से प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन, तो डेफिनेटली 10 प्लस क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द kind of potential that it has and the weightage that it has. So if you really want to score high in either APFC or EO or AO examination, I suggest you to go through these sessions regularly. Why? Because whatever the content related to these topics, जो भी topics मैं बता रही हूँ, all those we are doing in the form of questions भी करेंगे हम, उसका discussion भी करेंगे, thereby आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ 2025 वेरी सून. सो आई होप यू रियली विल यूटिलाइज दिस सेशंस for your examination. So without wasting much time, let's get into the session. Coming to the first question, according to the International Labour Organization, which of the following groups of individuals are classified as employed? Now, labor मतलब क्या है? Labor is something, a physical or mental effort by the human beings that undertake any production process, and generally it is known as the primary factor of production, क्योंकि factor production के कई सारे factors हैं, okay, capital, land and all that various things, but सबसे पहला factor जो आता है that would be labor, because without that physical or mental effort जो production होगा ही नहीं. So for which we consider it as the primary factors, and labor force includes the current economically active population comprising both the employed and the unemployed. ओके, तो इकोनॉमिकली अगर हम लोग काउंट करेंगे तो दोनों ही आते हैं, एंड द टर्म एम्प्लॉयड हैज बीन डिफाइंड बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन दैट encompasses all those persons above a specific age who work for at least 1 hour during a specified brief reference period. वो reference period इधर 1 day हो सकता है, 1 week हो सकता है, but at least 1 hour भी work करेंगे तो we can say them as employed. मैं ये नहीं कह रही हूँ fully employed है and all that, no, simple term employed किसको बोलते हैं. So here B is the correct option. Now there is a term called paid employment. Okay, now paid employment involves individuals working under an employer for compensation for some money, which can be in cash or in kind, दोनों तरह से हो सकता है. It includes both those actively working and those with a formal job attachment but temporarily not at work. ठीक है, दोनों भी उसमें आ सकते हैं. Now which of the following statements about paid employment is or are correct? मैंने statement दे दिया है. Okay, now based on that, एक not statement but context, मैंने context दिया है. Now based on that there are various statements and you have to tell me which of those statements is or are correct. Paid employment refers to individuals working under an employer in exchange for wages or salaries which may be provided in cash or non-monetary benefits, and this is very much true, cash और kind दोनों में भी हो सकते हैं.
Employees in paid employment must always be physically present at their workplace to be considered employed. ऐसा नहीं है, कई बार टेम्पररीली कुछ वेकेशन में है या फिर ऑफ द साइट भी काम होता है, राइट? सो इन सच केसेस, though he is working from somewhere, but that employee is still considered as an employee, right? So physically presence compulsory nahi hai in order to considered as paid employed. So this is false statement. A person who has a formal attachment to their job but is temporarily absent during the reference period still qualifies as being the paid employment. This is very much true. Now यहाँ पे हम लोग इसको false बोल रहे तो बिल्कुल contradictory statement से. So this is true. Office employees, factory workers and service industry professionals are examples individuals in the paid employed. Yes, this is very much true. So here 1, 3 and 4 are true. So here C is the correct answer when it comes to the term paid employment. Moving on to our next question, self-employment. Now self-employment refers to individuals who work for themselves rather than being employed by an external employer. They manage all aspects of their business and bear both the risks and the rewards of their work, right? Now, which of the following statements about the self-employment is or are correct? Let's have a quick look. Self-employed individuals operate their own business and are responsible for financial management, marketing and overall operations. Yes, this is very much true. Self-employment मतलब कोई और के लिए कर नहीं रहे, हम खुद ही हमारे लिए कर रहे हैं. So they are the ones who have to look after everything. वही अगर किसी और के साथ कर रहे हो, they must be managing the businesses, right? So this is true. Self-employed individuals must always be actively working in their business to be considered self-employed. नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हो सकता है they might employ some people and delegate the work, right? In case they are not able to get involved due to any reason, कोई personal reason हो सकता है, health reason हो सकता है, कुछ business trip के लिए जाना पड़ सकता है, right? So this is false. A person who owns a business but is temporarily not working due to personal reasons still qualifies as self-employed. Yes, this is very much true. बिल्कुल second and third statement में contradictory है. Freelancers, independent contractors, small business owners are examples of self-employed individuals. Completely वो अपने हिसाब से कर रहे हैं. So this is very much true. So here again 1, 3, 4 are true. So A is the correct option here. Moving on to our next question. Which of the following characteristics defines a regular salaried or wage employee? See, उनको ही हम लोग regular salaried और wage employee बोलते हैं जो एक काम करने के बाद whatever the services that they are rendering to someone and उसके लिए they are in turn they are taking some amount in the form of either salary, monthly salary या फिर daily wages in both the cases. So here receipt of regular salary or wage for services rendered that comes under this. Self-employed खुद का है तो कहाँ से वो सैलरी वाला है? नो. एंगेजमेंट इन कैजुअल और सीजनल वर्क? नो, दिस इज ऑल्सो नॉट ट्रू, क्योंकि वो सिर्फ एक दिन के लिए एक आवर के लिए थोड़ा सा वर्क होता है बट नॉट रेगुलरली, राइट? सो दैट यू हैव टू टेक केयर व्हेन यू आर आंसरिंग दिस व्हेन इट कम्स वेजेस. ओके. इन्वॉल्वमेंट इन ओन अकाउंट वर्क विदाउट हायर्ड लेबर? नो, ये खुद का ही काम है. सो इसी के एक्चुअली ए ऑप्शन को ही थोड़ा सा ट्वीक करके डी ऑप्शन दिया है. सो दैट्स नॉट पॉसिबल. सो सी इज द correct answer here, where they are receiving some regular salary or wages for the services being rendered to a company or an organization or a person. So moving on to our next question. Which of the following statements accurately describes the characteristics of a casual wage labor? Now when we talk about casual wage labor, see, casual engagement in others' enterprises with wages received accordingly to daily or periodic work contracts. Generally ये permanent नहीं होते हैं, ठीक है? And कभी कभी daily ही उनको बस आज का काम है, ये पैसे दे दो and then done. If there is work tomorrow, the person can come, otherwise no. So उस तरह से कुछ casual engagement होगा तो then that would fall under casual wage labor. एंगेजमेंट इन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट विद फिक्स्ड मंथली अर्निंग्स? नो, फिक्स तो होता ही नहीं है. सो ये फॉल्स स्टेटमेंट है. रिसीट ऑफ रेगुलर सैलरी फॉर सर्विसेज? नो, ये तो है हमारा परमानेंट रेगुलर सैलरीड वालों के लिए. सो दिस इज ऑल्सो फॉल्स. पार्टिसिपेशन इन अनपेड फैमिली वर्क विद नो फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट? ये भी फॉल्स है क्योंकि वो तो सेल्फ एम्प्लॉयड टाइप का हो गया है, राइट? सो हियर द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए.
नाउ अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, पेड एम्प्लॉयमेंट, राइट? तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में भी कई सारे टाइप्स होते हैं. नाउ लेट्स हैव a quick look at that. Self employment encompasses individuals who operate their own enterprises, farms or professions independently with or without partners. Which of the following statements correctly describe the categories of self-employed individuals? सबसे पहले आता है own account workers. Now here they operate their businesses independently or with a few partners and do not generally hire labor. क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं है, उनसे ही पूरा काम वो they can manage, because of which they are not hiring anyone. So generally they do that. Yes, own account workers उन्हीं को बोलते हैं. True. Employers are self-employed individuals who manage businesses and hire workers to operate their enterprises. Yes, क्योंकि वो employ कर रहे हैं दूसरों को, they are hiring others, so they themselves, though they are entrepreneurs, self-employment ही होगा, still they can be considered as employers since they are employing others to delegate their own work. So yes, this is also true. इस केस में भी जैसे अंबानी इंडस्ट्रीज या अदानी वाला या फिर टाटा वाला, दो दे इट्स देयर ओन बट स्टिल दे आर हायरिंग अदर्स टू रन देयर बिजनेसेस. सो यस, एम्प्लॉयर्स. Helpers in household enterprises are family members assisting in household run businesses without a formal employer-employee relationship. Yes, in these terms also we can call them as self-employed because क्योंकि वो खुद कर रहे हैं अपनी फैमिली बिजनेस में ही, वो असिस्ट कर रहे हैं अपने फैमिली मेंबर्स को से. सो ये भी ट्रू है इसमें. Only self-employed individuals who hire labor can be considered as part of this category. No, ऐसा कुछ नहीं है. As we have seen all the categories, खुद भी कर सकते हैं, दूसरों को हायर कर सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं. In all these cases, it can be considered as self-employment. So in this case, 1, 2, 3 are true. Hence, B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements accurately describes the concept of usual status in the context of labor force measurement? Now labor force किस तरह से, कितने employed है, unemployed है, ये सब NSSO सर्वे करती रहती है every year. Periodic labor force survey and all that should be done under the Ministry of Statistics and Program Implementation. तभी तो हमें पता चलेगा कि कितने employment rate कितना है, unemployment rate कितना है. Accordingly the government can devise the policies, right? So उस जो approach है, जो measurement है, उसमें भी कुछ टाइप से, वन ऑफ दैट इज द यूजुअल स्टेटस. इसमें भी और दो टाइप से, वो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. बट इन दिस सबसे पहला है यूजुअल स्टेटस, जो नॉर्मल यूज करते हैं. Now, when we talk about usual status, now it reflects the individual's labor force status based on their activities during the major part of the 365 days preceding the survey. अगर आज वो सर्वे कर रहे हैं, NSSO वाले आज सर्वे कर रहे हैं, तो उससे पहले जो 365 डेज में वो किस तरह का काम उनको मिला है, क्या मिला है, कितने डेज का मिला है, बेस्ड ऑन ऑल दैट दे विल बी कंसिडर्ड ईदर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड या पार्शियल एम्प्लॉयड, व्हाटएवर. ठीक है. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट द यूजुअल स्टेटस, वो नॉर्मल स्टेटस मीन 365 डेज के अंदर उनका किस तरह का एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है वो कवर करता है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. सो जैसे मैंने बताया है कि यूजुअल स्टेटस में अगेन देर आर टू मोर कैटेगरीज, राइट? सो वो दो टू कैटेगरीज है, प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस. उन्हीं के बेसिस पे ये क्वेश्चन बनाया गया है. नाउ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट क्लासिफिकेशन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब प्रिंसिपल स्टेटस एंड सब्सिडरी स्टेटस? Principal status refers to the activity that accounts for the majority of the person's time over the year. Yes, this is very much true. Principal I mean major उनका काम क्या है, that is the name itself suggests principal, जो major काम उन्होंने क्या किया है पिछले एक साल में सर्वे से पहले, that they will consider as principal status. Individuals engaged in principal status work are referred as the principal status workers. ठीक है. अगर उन्होंने जो भी काम किया, लाइक एक टीचर, उसके बाद वो ट्यूशंस भी पढ़ा रहे हैं, बट स्टिल टीचिंग द टीचर जो है उनका मेन प्रिंसिपल स्टेटस वही रहेगा. ओके. Subsidiary status covers any secondary activity undertaken on a short-term basis apart from the principal activity. That is to like your tuitions and all that, कभी होते ले सकते हैं, कभी नहीं ले सकते हैं, या फिर small time gigs कर सकते हैं. जैसे already एक कंपनी में काम कर रहे हैं, but again एक small time gig
टेम्पररी कुछ दिनों के लिए कर रहे हैं, all that will fall under the subsidiary status. So this is also true. A teacher who works full time throughout the year but takes up a temporary job at a bookstore during summer vacation is the best example of a principal status worker with a subsidiary status activities. This is also very much true. Obviously प्रिंसिपल स्टेटस जो मेन जॉब है उनका टीचिंग है, बट अभी वो बुक स्टोर में एक छोटा सा जॉब ले रहे हैं फॉर वॉट एवर रीजन, क्योंकि उनका समर ब्रेक है एंड ऑल दैट वुड बी कंसिडर एज देयर सब्सिडरी स्टेटस. सो हियर 1 2 3 4 ऑल ऑफ दीज आर ट्रू व्हेन इट कम्स टू द टाइप्स of measurement of employment under usual status, and yes, here D is the correct answer. Now दूसरा approach है measurement of employment का, and that is currently weekly status. Now what is a key criterion for classifying an individual as a worker under the current weekly status as per the National Sample Survey Office survey? So okay, organization NSSO survey. So here when we talk about current weekly status, it is the activity status of a person during a period of 7 days preceding the date of survey. अगर आज survey करें तो last 1 week का, उसमें at least 1 hour be on any day of the reference week if he works, that would be considered as the involvement in the economic activity. So involvement in the economic activity at least 1 hour on any day of the reference week, then that person would be considered as current weekly status category. So here B is the correct option. Now next type of measurement आता है current daily status. So you can see chronology, पहले साल भर का देख रहे थे, उसके बाद weekly, उसके बाद daily. So here according to the current daily status measure, what is the minimum number of hours worked that classifies a person as employed for the full day? Okay, अगर हम किसी को बोल सकते हैं कि ये full day employed है, how? It would be 4 hours or more above that. So minimum number of hours अगर कोई work कर रहा है तो 4 hours work कर रहा है, so we can say that that person is fully employed under the current daily status. So here C is the correct answer. Up to 8 hours almost. Moving on to our next question. With reference to the organized sector or regular employment in India, consider the following statements. Which of the following statements given are is or are correct? The organized sector consists of both public sector enterprises and the private sector organization. Yes, organized sector मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ PSUs आएंगे, उसमें private sector organizations भी आते हैं, and this is very much true. Less than 10% of the India's total workforce is employed in organized sector. Yes, as per the estimates by the government 2010 में कुछ सर्वे होता है, as per that 10% है, less than 10% है formal sector में or the regular sector. Yes, this is also true. According to the estimates from the Ministry of Labor and Employment 2010, approximately 2/3 of the organized sector employees is in the public sector, while the remaining 1/3 is in the private sector. Yes, this is also true as per that survey जो उन्होंने उस टाइम पे किया था, not survey as such, estimates जो भी उनके पास डाटा था. Okay, a software engineer working in a multinational IT firm is an example of organized sector employment. Yes, this is also true. या फिर ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कर रहा है, या फिर कोई MNC में कर रहा है, ऑल दीज दे आर कंसिडर्ड एज ऑर्गेनाइज सेक्टर और रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, बिकॉज उनको एक मंथली सैलरी एंड सारे पर्क्स एवरीथिंग दे आर बीइंग प्रोवाइडेड, सो दे आर गेटिंग एवरीथिंग इन ए रेगुलर मैनर. Okay, so here all these statements are true, so hence D is the correct option. Now, which of the following is an example of unorganized sector employment? Now, unorganized sector workers are those who are working in either households or unorganized enterprises without any social security or security of employment, क्योंकि उनका जॉब कभी भी जा सकता है, ठीक है. उस तरह के employment को we can consider as unorganized sector. So a software engineer working in an IT company, ये तो well organized है, so this is false. A bank officer in a government bank, again well organized, regular वाला है. A professor in a university, yes, this is also regular or organized sector. A street vendor selling handmade handcrafts, this is a form of unorganized sector employment, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं, आज होगा बिजनेस थोड़ा सा, कल नहीं होगा, या फिर आज पैसे मिलेंगे कल नहीं मिलेंगे, उस तरह से. So here C is the correct answer. So friends, hope you have liked this session. So before winding up, एक छोटा सा announcement है. Edutap अभी कुछ courses offer कर रही है for all those who are targeting UPSC EPFO
APFC के लिए भी एंड EO एंड AO के लिए भी फॉर द ईयर 2025। ना उसमें 3 तरह के कोर्सेज वो ऑफर कर रहे हैं 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। जैसे सबसे पहला था मास्टर कोर्स, ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर और फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग आउट फॉर द कंटेंट, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जाम के लिए वो सारे एक ही जगह पे उनको चाहिए। एंड हियर उनके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट सीरीज, स्ट्रेटजी सेशंस, व्हाट नॉट, you'll get everything। एंड एवरी वीक एवरी थर्सडे कुलदीप सर खुद एक सेशन लेते हैं एंड किस तरह से इतना कंटेंट को आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ऑल दैट ही विल बी गाइडिंग यू, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब भी क्लैरिफाई करते रहेंगे। नेक्स्ट कम्स द टेस्ट सीरीज प्लस। इसमें क्या, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ लेते हैं, जैसे कि कुछ रीजनिंग क्वांट हो गया, बट कुछ सब्जेक्ट्स जैसे लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पॉलिटी, उस तरह से वो सोचते हैं कि कहीं पे कंटेंट मिल जाए तो अच्छा है। ये उन बच्चों के लिए बहुत सही है। हियर यू विल बी गेटिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट्स का है कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एंड ऑल दैट, अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वो भी मिल जाएंगे। नाउ थर्ड आता है आपका टेस्ट सीरीज। नाउ इसमें ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या एक बार ऐसे एग्जाम भी दे चुके हैं एंड नाउ दे आर लुकिंग आउट, प्रिपरेशन बिल्कुल हो गया उनका बट नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट, और रियल एग्जाम फील लाने के लिए कुछ मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट। For them this would be the best option. So if you have any doubt related to any of these courses, you can always reach out to the team, any of the team members, and get your doubts clarified so that you can make an informed decision for purchasing these courses. Thank you very much for being with me so patiently and hope to see you all soon with another session. All the best and thank you once again. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have exclusively started for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we will be doing 15 MCQs in a session, as part of which today we are going to do Indian Labour Force Part 2. And why is this series important? देखिए 120 questions out of 120 questions in the UPSC EPFO exam, be it APFC और A और EO एग्जामिनेशन, दोनों के लिए भी एटलीस्ट 15 प्लस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम द लेबर लॉस एंड इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस IR से। एंड गिवन द नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू कैन सी द वेरी गुड नंबर एंड अच्छा वेटेज भी है एंड गुड स्कोरिंग पोटेंशियल, बिकॉज अगर आप सही तरीके से बेसिक लेवल भी इसका आप सही से प्रिपेयर करोगे एंड देन यू प्रैक्टिस वेल ऑल दोज क्वेश्चंस, तो डेफिनेटली 10 प्लस क्वेश्चंस तो आराम से आप कर ही लोगे एंड दैट विल ऐड एक मार्क का एक वैल्यू जो होता है, दैट हियर यू कैन अंडरस्टैंड। सो इफ यू रियली वांट टू स्कोर हाई इन either APFC or the A or EO examination, I suggest you to go through these sessions regularly, because जितना भी content हम लोग cover कर रहे हैं यहाँ पे, that we are all doing in the form of MCQs and explanation. देर पे आपका revision भी हो जाएगा and practice भी हो जाएगा, and moreover we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon, तो आपके लिए बहुत beneficial रहने वाले हैं। So without wasting much time, let's get into the session. So the first question, consider the following statements regarding casual labor in the unorganized sector. उनके क्या characteristic features है? Casual laborers typically lack social security benefits and do not have a regular job contract. This is very much true. उनका कोई regular job contract नहीं रहेगा, so रेगुलर नहीं है तो ऑब्वियसली उनके कोई सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी नहीं रहेंगे। The majority of casual laborers are employed in the agriculture sector, followed by the manufacturing and service sectors, and this is also very much true. सबसे ज़्यादा casual laborers आपको एग्रीकल्चर में मिलेंगे क्योंकि वो बिल्कुल सीजनल रहता है, ठीक है। सो ये भी ट्रू है। द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रोवाइड्स हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज टू अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स बिलो द पॉवर्टी लाइन। यस, दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू। उनके लिए ये एक गवर्नमेंट ने ये लॉन्च किया था सो दैट उनको एक हेल्थ रिलेटेड बेनिफिट मिल जाए। The Unorganized Sector Workers Social Security Bill 2007 was introduced to provide social security to workers in the organized sector. Yes, this is also true. ये उनके लिए specifically launch किया गया था, start किया गया था, so as to provide some social security to the even to the unorganized sector workers. उसी के बेसिस में कई सारे स्कीम्स भी लॉन्च हुए ताकि उनको पेंशन भी मिले, उनको एक बीमा
एक इंश्योरेंस टाइप का भी मिले, बेस्ड ऑन दैट, बेस्ड ऑन all these only they have been launched. So here all these statements are true. So 1 2 3 4 all these statements are true, so D is the correct option here. Moving on to our next question, which of the following government schemes provide health insurance coverage to unorganized sector workers below the poverty line, offering cashless hospitalization in empaneled hospitals across India? So अभी थोड़ी देर पहले ही हमने ये डिस्कस किया था, एंड इट इज़ नन अदर देन द राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. आयुष्मान भारत योजना भी है, बट वो एक्सक्लूसिवली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स के लिए नहीं, सभी के लिए है, जो दोज हु आर पुअर, राइट. सो प्लीज ना क्वेश्चन के हिसाब से, सो हियर द बेस्ड ऑन द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड, सी बहुत सही फिट बैठता है एज पर द क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. सो हियर वी आर लुकिंग एट द हेल्थ कवरेज एक्सक्लूसिवली फॉर द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स, विच सेज कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना उनके लिए अवेलेबल है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. So another chief characteristics of Indian labor, in the context of the Indian labor market, which of the following statements accurately describes the impact of the caste system on occupational choices? So India में अगर देखा जाए तो the caste system has traditionally influenced occupational choices, with certain caste being associated with specific jobs. Okay, जैसे goldsmith, they'll do gold related work only, blacksmiths they'll be doing only that iron related work, like that. एक अलग सा मतलब हर एक कैस्ट का अपना एक ऑक्यूपेशन होता है, उसी तरह से उनको करना पड़ेगा. एंड बेस्ड ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो इंडियन सोसाइटी हैज बीन डिवाइडेड इनटू मेजर वर्नास, 4 मेजर वर्नास एज वी ऑल नो. सो यहाँ पे कैस्ट सिस्टम है अभी भी, एंड देन बेस्ड ऑन दैट ट्रेडिशनली दे इन्फ्लुएंस द occupational choices as we have discussed. So here C is the correct answer. ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ रूरल में है, अर्बन में ऐसा कुछ नहीं है, everywhere it is there, and hence C is the correct answer. Moving on to our next question, what is the primary objective of the reservation policy in India as it relates to the labor force? Now we are talking about the reservation policy in India, focusing on the labor force of India. And here majorly reservation policy is to promote equal opportunities in education and employment for underprivileged groups. Okay, that OBCs, SCs, STs, minorities, etc., so that they can also have equal opportunities. So here B is the correct answer. To provide exclusive employment, no, ऐसा कुछ नहीं है ये. This is to help them out, to help the underprivileged people. To restrict job opportunities for certain caste, no, ऐसा कुछ भी नहीं है. So false here. To abolish the caste system and its influence of the, ये भी नहीं है. This is only to maintain that equality or equal opportunities provided to everyone in India. So B is the correct answer. So moving on to our next question. Again, this is one of the chief characteristic features of Indian labor force. What is observed relationship between the level of education and regular employment in India's labor force? See, when we talk about the labor force in India, as we have seen, organized sector, unorganized, or the regular और कैजुअल, राइट. सो उसमें भी जहाँ पे भी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो ऑब्वियसली वहाँ पे हायर एजुकेशन लेवल चाहिए, एंड कैजुअल लेबर एंड ऑल दैट लो लिटरेसी उनमें. सो हियर एज एजुकेशन लेवल राइजेस रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इंक्रीजेस. ठीक है, as education level rises, no, this doesn't decrease, there is no correlation. There is correlation. low literacy है तो obviously वो casual labor या अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में काम करें, जहाँ पे भी पढ़ाई अच्छी हुई है, डिग्रीज एंड ऑल दैट, स्किल्ड सर्टिफिकेट्स एंड ऑल दैट, देन डेफिनेटली एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट मिलने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. सो रेगुलर एम्प्लॉयमेंट इज हाईएस्ट अमॉन्ग दोज विद लिटिल. नो, दिस इज ऑल्सो फॉल्स. सो हियर A is true, that is as education level rises, regular employment also increases. So A is the correct option. Now, when we talk about the characteristic features of labor force, we can't get away from the gender this. So, what is the key characteristic of the feminization of labor in India? Increased participation of women in formal full-time employment, ये है, लेकिन अभी उतना नहीं है when compared to the informal jobs
or temporary jobs. Why? Because of still low literacy rates in women in India. So ये false है, दो देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, but still if you look at the data, statistics etc, based on the 2011 data ही देखेंगे, this is false. Comparatively, okay, so here a shift towards casualization of labor with more women in temporary or informal jobs. Yes, this is very much true. पहले बिल्कुल घर से नहीं निकलते थे, and now they are coming out at least for these informal jobs so as to support their families. ग्रोइंग प्रेजेंस ऑफ वुमेन इन ट्रेड यूनियंस एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये भी अभी नहीं हुआ है, नॉट दैट मच. अ डिक्लाइन इन द जेंडर पे गैप एंड इंक्रीज जॉब सिक्योरिटी वुमेन, ये भी नहीं हुआ है. सी, ये सारे ना पार्शियली ट्रू स्टेटमेंट्स है, नो डाउट, आई एम नॉट सेइंग दैट ये बिल्कुल फॉल्स है, बट पार्शियली ही ट्रू है. बट अगर ये कंपैरेटिवली इफ यू लुक, बी बहुत ही यू कैन से 100% ट्रू सॉर्ट ऑफ, बिकॉज येस हम बिल्कुल बोल सकते हैं कि मोर वुमेन आर बीइंग एम्प्लॉयड इन टेम्पररी और इनफॉर्मल जॉब्स, एंड वो बहुत इंक्रीज हुआ है व्हेन कंपेयर्ड टू द अर्लियर टाइम्स. सो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. कई बार ऐसा होता है कि हमें सारे स्टेटमेंट सही लगते हैं, बट यू हैव टू लुक एट द कॉन्टेक्स्ट एंड कौन सा सबसे ज्यादा फिट बैठता है, कौन सा सबसे ज्यादा ट्रू है. यहाँ ये नहीं कि बाकी सब बिल्कुल फॉल्स है, बट दे आर ओनली पार्शियली ट्रू, बहुत कम है व्हेन कंपेयर्ड टू द बी ऑप्शन. सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट आंसर. So another characteristic feature of Indian labor is migration. So what is a primary factor driving the migration of labor from villages to towns and of professionals to emerging sectors and developed countries? ऐसा नहीं है कि migration मतलब सिर्फ villages to towns या cities हो रहा है. We are crossing the borders, country borders as well, दूसरे देशों में भी जा रहे हैं, राइट. वाई, व्हाट इज द प्राइमरी फैक्टर? देयर आर वेरियस रीजंस, बहुत सारे रीजंस है, बट अगेन कंपैरेटिवली जो रीजन सबसे पहले आता है दैट यू हैव टू पिक. गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ये भी वन ऑफ द रीजंस है, नो डाउट, बट प्राइमरी तो बिल्कुल भी नहीं है. ये हो सकता है इनफैक्ट लास्ट रीजन हो. ओके, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट फैक्टर्स, यस दिस इज ऑल्सो रीजन, बट सिर्फ क्लाइमेट की वजह से कोई अपना देश या फिर अपना गांव छोड़ना नहीं चाहता, सो दिस इज ऑल्सो नॉट एंटायरली ट्रू. सोशल एंड कल्चरल फैक्टर्स, ये भी हो सकता है, बट उसकी वजह से इतने सालों से जहाँ है दे कांट लीव देयर रूट्स एंड गो, राइट, इन सर्च ऑफ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड हायर अर्निंग्स. ये सबसे बड़ा रीजन है फॉर द माइग्रेशन, बी इट इंटरनल और एक्सटर्नल. सो सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. सो अगेन आप बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे तो यस वो भी ट्रू है, नो डाउट, लेकिन प्राइमरी फैक्टर मतलब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर, ये सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है दैट ड्राइव्स द माइग्रेशन, दैट इज इन सर्च ऑफ बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज एंड हायर अर्निंग. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. सो जब भी कोई क्वेश्चन होता है, कई बार ऐसा होता है कि यू फील लाइक ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट, बट यू हैव टू डिस्कार्ड जो बिल्कुल पार्शियली टाइप के हैं, एंड अकॉर्डिंगली यू हैव टू अराइव एट द फाइनल ऑप्शन. Now coming to the next question, again this is also one of the important features of Indian labor force. What is a primary indicator that absenteeism rate among the workers serves as in an organization? सबसे important primary factor कौन सा है that is leading to this highest level of you can say absenteeism and all that. Level of workers fatigue and physical health. This is also one of the factors but not completely that. उसके लिए वो लीव ले सकते हैं, अगेन वापस आ सकते हैं, all that they can do, but this is not the sole reason. Effectiveness of organizational training programs, ये नहीं है, उसकी वजह से absenteeism no. Quality of management and employee relationships, ये भी नहीं है, क्योंकि दे हैव टू वर्क, अब सैलरी मिल रही है तो दे हैव टू वर्क, वहाँ रिलेशनशिप कैसे भी हो दैट दे हैव टू मैनेज एंड वर्क, राइट. सो ये भी नहीं है, अगर कुछ है तो दे हैव टू रिजॉल्व दैट. सो ये भी नहीं है, सो ये भी फॉल्स है, ये पार्शियली ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है. लेवल ऑफ जॉब सेटिस्फैक्शन, मोरल एंड कमिटमेंट टू जॉब, ये है, कुछ इसमें पर्सनल भी है, कुछ प्रोफेशनल भी है, बट यस अगर जॉब सेटिस्फैक्शन बिल्कुल भी नहीं है तो वो इंटरेस्ट ही नहीं होता, वो मोटिवेशन ही नहीं आता है, राइट.
मोरल, अगर उनका मोरल ही डाउन है बिल्कुल, वॉट एवर माइट बी द रीजन, इन वहाँ वर्क एनवायरनमेंट सही नहीं, सेफ्टी प्रिकॉशन सही नहीं, कुछ भी नहीं है, तो डेफिनेटली कमिटमेंट टू द जॉब, उनका कमिटमेंट ही नहीं है, कुछ और उनको ऑलरेडी इनकम आ रहा है, वॉट एवर माइट बी द रीजन, पर्सनल रीजन, सो विद दैट ऑल्सो दे माइट नॉट शो मच इंटरेस्ट, एंड उसकी वजह से भी एब्सेंटिज्म ज़्यादा हो सकता है. यस, दिस इज वेरी मच ट्रू व्हेन कंपेयर टू ऑल अदर ऑप्शन. सो हियर डी इज द correct option. Now when we talk about labor force, we can't forget the child labor, which we say जो भी 14 years के अंदर काम कर रहे हैं, that will be called as child labor, and it is completely abolished in India. Now which of the following statements regarding child labor in India are correct? Poverty is a major driver of child labor, as families often rely on children's earnings for survival. This is very much true. Okay, illiteracy and lack of access to quality education increases the likelihood of children engaged in labor. This is also very true. उससे कुछ जो organizations है या फिर people है, they might take advantage of that because of their illiteracy and lack of awareness as well. So ये भी true है. The absence of strong labor unions can contribute to inadequate protection of child workers. Yes, this is also true. अगर यूनियन सही से नहीं है, बिल्कुल अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है, तो डेफिनेटली चाइल्ड लेबर का हो सकता है. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. द नेशनल पॉलिसी ऑन चाइल्ड लेबर 1987 was formulated with the aim of eradicating child labor and protecting children from exploitation. This is very much true, क्योंकि उस पॉलिसी में सब कुछ they have mentioned on how to avoid child labor, eradicate child labor, and how to protect children from exploitation. What are the various other framework that has been devised so as to avoid this, क्योंकि सिर्फ avoid करना है मतलब वो नहीं, but again they have to devise a framework for that, and किस तरह से उनके rights and all that, so that they have done. Yes, this is also very much true. So in this case all these statements are true, so hence D is the correct option. Now what is the labor administration machinery of the central government? So जैसे हमने देखा है लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, सो इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट टू enact various labor laws and take care of the whatever the labor related activities that are there. So इसमें which of the following statements regarding the labor administration machinery of the central government, उनके machinery किस तरह से काम करता है, based on that these statements are there. Labor falls under the concurrent list of the Indian Constitution, allowing both the central and state governments to legislate on labor matters. This is very much true. ऐसा नहीं कि मैं क्वेश्चन में यहाँ लेबर एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी है तो स्टेट्स का कुछ नहीं होता, डेफिनेटली दे हैव टू टेक केयर. The Ministry of Labour and Employment is the highest authority for labor related issues, with the Secretary Ministry of Labour and Employment holding executive authority. Yes, this is also very much true. The Chief Labour Commissioner is at the central level is responsible for enforcing labour legislations concerning wages, industrial disputes and migrant labour. Yes, this is also very much true under the central labour administration machinery of the central government. The Central Industries Relation Machinery, established in 1945, is responsible for implementing provisions of labour legislations as per the recommendations of the Royal Commission on Labour in India. Yes, उस टाइम पे बना था, so they're following. Yes, this is also very much true. So here all these statements are true when it comes to the labour administration machinery of the central government. So here D is the correct answer. So coming to the next question, which of the following statements regarding the labor administration machinery in the states are correct? अभी हमने central government का देखा है. Now let's have a quick look at the state governments as well. Each state in India has a labor minister who heads the Department of Labor, while the secretary of the department holds executive authority, and this is very much true. Okay. The Labour Commissioner at the state level is responsible for enforcing labour legislation and ensuring compliance with the labour laws. Yes, this is also very much true. जैसे central government का है वैसे हर state government का भी अपना एक setup रहता है. The Labour Commissioner's role include factory inspections, conciliation and reviewing applications from aggrieved parties under varied labour laws. This is also very much true. उनकी responsibility है. The labour administration machinery in India operates as a highly centralized system with minimal role for state governments. ऐसा नहीं है, जैसे कि हमने पहले से भी बोल रहे हैं, लेबर कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, so it is a responsibility of both the central and state governments to look after that. So this is false. So therefore what we understood from this is the labour administration machinery in India is a well structured and decentralized system. Centralized system nahi, it is a decentralized system that extends to both the central as well as the state levels. So here in this case 1, 2, 3 are the correct options. Where are they? Yes, B. So here B is the correct answer.
So moving on to our next question. Which of the following statements regarding the Director General Factory Advice Service and Labor Institutes are correct? देखते हैं. Now DGFASLI is responsible for conducting inspections related to occupational safety and health issues in industries across India, and this is very much true because it's like a watchdog for the safety and health of workers in India. So definitely वो responsibility है. The headquarters of DGFASLI is located in New Delhi with regional offices in Chennai, Kanpur, Kolkata and Faridabad. Actually ये इसका हेड ऑफिस है मुंबई में एंड रीजनल ऑफिस एक ही है इसका एंड दैट इज इन फरीदाबाद. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट फॉल्स है. The Central Labour Institute is also located in Mumbai along with DGFASLI headquarters, and this is very much true क्योंकि वो वहीं पे है and again it works towards the labor force in India. ठीक है, and the activities of this DG, that is Directorate General Factory Advice Service and Labor Industries, it is like mainly for framing policies, plans and executing the programs that pertains to the safety, health and welfare of the workers in various industries in India. So it is primarily involved in policy formulation, planning and execution of programs related to worker safety, health and welfare. This is very much true क्योंकि वो उनका काम ही है and they are like the safety guardian, making sure that all the workplaces in these industries they follow all the rules thoroughly to keep the workers well and secure in the most जो भी safety conditions, health conditions, hygienic and all that they have to do, so that they'll be looking into. So yes, so 1, 3 and 4 are true, so here B is the correct option. Yes. So friends, hope you have liked this session. So before winding up, एक छोटा सा announcement है. Edutap अभी कुछ courses offer कर रही है for all those who are targeting UPSC EPFO, APFC के लिए भी and EO and AO के लिए भी for the year 2025. Now उसमें 3 तरह के courses वो offer कर रहे हैं 3 डिफरेंट सेट्स ऑफ स्टूडेंट्स के लिए. जैसे सबसे पहला था मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन अभी स्टार्ट कर रहे हैं या फिर और फॉर दोज स्टूडेंट्स हु आर लुकिंग आउट फॉर द कंटेंट. जितने भी सब्जेक्ट्स हैं इस एग्जाम के लिए वो सारे एक ही जगह पे उनको चाहिए एंड हियर उनके लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट का आपको कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, रिकॉर्डेड वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, टेस्ट series, strategy sessions, what not, you'll get everything. And every week, every Thursday, कुलदीप सर खुद एक सेशन लेते हैं एंड किस तरह से इतना कंटेंट को आप अच्छे से अपने प्रिपरेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं एंड ऑल दैट ही विल बी गाइडिंग यू एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो सब भी क्लैरिफाई करते रहेंगे. नेक्स्ट कम्स टेस्ट सीरीज प्लस. इसमें क्या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि कुछ सब्जेक्ट्स खुद से पढ़ लेते हैं जैसे कि कुछ रीजनिंग क्वांट हो गया बट कुछ सब्जेक्ट्स जैसे लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस या पॉलिटी उस तरह से वो सोचते हैं कि कहीं पे कंटेंट मिल जाए तो अच्छा है. ये उन बच्चों के लिए बहुत सही है. हियर यू विल बी गेटिंग इंडिविजुअल सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट्स का है कंटेंट इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस एंड ऑल दैट अलॉन्ग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स वो भी मिल जाएंगे. नाउ थर्ड आता है आपका टेस्ट सीरीज. नाउ इसमें ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या एक बार ऐसे एग्जाम भी दे चुके हैं एंड नाउ दे आर लुकिंग आउट. प्रिपरेशन बिल्कुल हो गया उनका बट नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट और रियल एग्जाम फील लाने के लिए कुछ मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट. For them this would be the best option. So if you have any doubt related to any of these courses you can always reach out to the team, any of the team members and get your doubts clarified so that you can make an informed decision for purchasing these courses. Thank you very much for being with me so patiently and hope to see you all soon with another session. All the best and thank you once again. Hello everyone, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination wherein we'll be doing 15 MCQs in a session and today we are going to see trade unions part 1. Now coming to the series, क्यों ये इतना important है देखिए. when we come to the UPSC EPFO examination, be it APFC, दोनों पोस्ट के लिए APFC के लिए हो और AO
और ईओ के लिए हो, दोनों में भी ये टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस क्लोज टू 15 प्लस क्वेश्चंस वो इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं। एंड अगर आप बेसिक्स भी कवर करोगे तो आप बहुत ही आराम से 10 प्लस MCQs तो क्लियर कर सकते हो। एंड with this you can understand the kind of high weightage and high scoring potential this topic has. So I suggest you to go through this series regularly, so that, or these sessions regularly, so that you'll these topics would be helpful for your exam preparation. Moreover, we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So I hope you really enjoy these sessions and utilize these sessions for your exam preparation. So let's get into the session now. Now when we talk about trade unions, सबसे पहला question आता है why or what is the purpose of these trade unions, right? When we talk about trade unions, these are considered as a voluntary organizations for both workers as well as employers, majorly formed to protect and promote the interest of their members, that is जो भी उस trade union के members है, and also for balancing and improving relations between the employees and the employers. एंड इसी के तहत व्हेन वी टॉक अबाउट द इंटरनेशनल टेक्निकलिटीज या फिर उनके नोशन के हिसाब से, व्हेन वी लुक एट दैट एज पर द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो डेफिनेशन है, द मेन पर्पस ऑफ ट्रेड यूनियंस कौन सा है, यहाँ पे 4 ऑप्शन से आप देख सकते हो। एंड व्हेन वी लुक एट दीज ऑप्शंस, सबसे क्लोजेस्ट जो ऑप्शन है दैट वुड बी द सी, to protect and improve the economic and social status of workers through collective action. ऐसे नहीं कि अकेले कुछ भी कर सकते, right? So they all will come together both from the employer's side and the employee's side, and that will help them to improve the working conditions. अगर working conditions improve हुए तो automatically economic and social status भी improve होगा. So that's a win-win situation. So here when we talk about the primary purpose, कई सारे purposes है, but this is one major purpose for which trade unions are formed as per the International Labour Organization's definition. So here option C is the correct answer. So coming to the next question, which of the following statements correctly describe the characteristics of trade unions? See, when we talk about trade unions, उनके भी कुछ अलग से features है, जैसे कॉमन फीचर्स जैसे कि एसोसिएशन ऑफ वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स, उनकी वॉलेंट्री इन नेचर, मेंबरशिप वॉलेंट्री है, कंटिन्यूस एसोसिएशन बिटवीन इट्स मेंबर्स एंड द ऑर्गेनाइजेशन जो भी जिसमें काम कर रहे हैं, जिसके पार्ट ऑफ ये यूनियन है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स के साथ फॉर्म होना वो, एंड मेंटेनिंग अ हार्मोनियस रिलेशनशिप बिटवीन द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स। उस तरह से कई सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है ट्रेड यूनियंस के भी। सो बेस्ड ऑन दैट लेट्स लुक एट द स्टेटमेंट्स एंड सी विच ऑफ दीज स्टेटमेंट्स is or are correct when it comes to the characteristic features of the trade unions. Trade unions are association of workers of or employees formed to address shared concerns and interests. Yes, this is one true statement. Membership in a trade union is mandatory for all the employees in an organization. ये गलत है because this is not true. ये voluntary है, ऐसा कुछ नहीं है कि they have to invariably join the trade union if they are part of the organization. ठीक है, trade unions operate on continuous associations providing ongoing support and representation to its members. Yes, wherever that is required they definitely come forward, उनका representation रहता है, so definitely this is a true statement. One of the main objectives of trade unions is to foster a harmonious relationship between the management and the workers. Yes, this is also true. So यहाँ पे 1, 3 and 4 are the true statements, 2 is the false one. So B is the correct answer here. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले हमने देखा है कि ट्रेड यूनियंस के कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, राइट? वन ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ये है कि उनके कुछ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। व्हेन दे एस्टैब्लिश द ट्रेड यूनियन, व्हाट आर द वेरियस ऑब्जेक्टिव्स दैट दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इनकॉर्पोरेट एंड बेस्ड ऑन विच इट विल वर्क, राइट? सो उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ट्रेड यूनियंस? सो सबसे पहला स्टेटमेंट ये कहता है कि ट्रेड यूनियंस प्रोटेक्ट वर्कर्स राइट बाय एंगेजिंग इन कलेक्टिव बार्गेनिंग एंड लीगल रिप्रेजेंटेशन। यस, वेर एवर रिक्वायर्ड, क्योंकि जब ट्रेड यूनियन बनता है तभी तो वो कलेक्टिव बार्गेनिंग पावर भी बढ़ता है उनका, राइट? सो दे ऑल कम टुगेदर, कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो, एंड अकॉर्डिंगली दे
negotiate, right? So वो बढ़ता है. And yes, legal representation भी जहाँ पे भी required है, yes, they come forward. So yes, this is a true statement. One of the primary aims of trade unions is to ensure economic security by negotiating fair wages, bonuses and workplace benefits. Yes, on behalf of all the union members, ये बात करते हैं, when it comes to the wages, किस तरह से होना चाहिए, fair wages, bonus, वर्क प्लेस बेनिफिट्स, कुछ अदर्स एज पर द लेट डाउन लॉस, जो भी जितने भी हमने ऑलरेडी लेबर एक्ट्स, लेबर लॉस एंड एक्ट्स पढ़े हैं, उसी के बेसिस पे. Yes, this is also true. Trade unions exclusively focus on workers' rights and do not engage in national development initiatives. Yes, trade unions, they focus on workers' rights, no doubt in that. But again, वो foster करता है, again, securing economic interest of both the workers as well as engaging in the national development initiatives. जो भी कुछ initiatives लेते हैं, definitely if उनसे होता है तो definitely they will look into or in implementing them. So definitely this is false. Though they focus on workers' rights, they also focus on that. So ये false statement है. Trade unions advocate for the welfare of workers and their families, including better healthcare and childcare benefits. Yes, when we talk about the workplace benefits and all that, that includes वर्कर्स जितने भी है, उनके फैमिलीज, बेटर हेल्थ केयर किस तरह से वो नेगोशिएट कर सकते हैं मैनेजमेंट से एंड प्रोवाइड देम विद दैट, वो सब भी वो देख लेते हैं. अलॉन्ग विद दैट उनकी तरफ से भी जो भी वॉट एवर दैट दे कैन do, they will, yes, ensuring welfare of the workers. Worker participation in management decision is facilitated by trade unions to foster a democratic work environment. Yes, this is very much true. ये सबसे important है, right? अगर डेमोक्रेटिक वर्क एनवायरमेंट है तो ऑब्वियसली दोनों का से रहेगा एंड वेन एवर देर इज एनी इश्यू they can resolve it amicably, right? So yes, this is a true statement when it comes to the objectives of trade unions. So इसमें 1, 2, 4 and 5 ये 4 statements true है. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following is not a primary reason for workers joining a trade union? See, now when we talk about joining a trade union, इससे पहले भी हमने देखा है when we looked at the characteristic features of a trade union, ये completely voluntary है. So joining the trade union is a voluntary decision of each worker. But yes, generally employees or workers who belong to a particular industry, based on the peer pressure and all that, or based on the kind of something that they expect, वो definitely वो join कर ही लेते हैं किसी न किसी trade union को. So what are those reasons for them to join? Let's have a look at these statements. Greater bargaining power to negotiate better wages and working conditions. Yes, this is one of the reasons. Yes, this is very much true. So ये हमारा आंसर नहीं हो सकता क्योंकि we are saying that कौन सा रीजन नहीं है, राइट? सेंस ऑफ सिक्योरिटी अगेंस्ट वर्क प्लेस अनसर्टेनिटीज एंड हैजर्ड्स. यस, क्योंकि उनका एक वही जो कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला आता है और इनको कुछ प्रॉब्लम होती है यूनियन मेंबर्स को, तो डेफिनेटली द यूनियन स्टैंड्स विद देम, राइट? तो ये भी ट्रू है, रीजन है. सो ये भी हमारा आंसर नहीं है. प्रोटेक्शन फ्रॉम अनफोर्सिन एक्सपीरियंसेस लाइक एक्सीडेंट्स, इलनेस. यस, वहाँ पे भी उनको सपोर्ट मिल जाता है, वहाँ पे ये भी ट्रू है. Opportunity to receive exclusive managerial training for leadership roles, ये नहीं है. This is not the reason for which they join is, so this is a false statement. Okay, so here C is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements best explains why dissatisfaction with employment and psychological contracts may lead an employee to join a trade union? देखिए, जैसे generally satisfaction in employee, it looks upon two types of contracts. One is the employment contract. ये होता है majorly कि कितने wages, कितना wages है, कितने hours of work and all that. Psychological contract जैसे कि working conditions किस तरह से है और उनके एम्प्लॉय मैनेजमेंट के किस तरह के क्वालिटेटिव, जो क्वांटिटी में हम लोग समझ नहीं पाते ना, वो सारे क्वालिटेटिव वाले एक्सपेक्टेशंस क्या है रिलेटेड टू द वर्क एंड ऑल दैट. ओके, नाउ व्हेन वी लुक एट दीज टू टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स और द वर्क इन विच इट इज डन, कहीं ना कभी ना कभी डिससेटिस्फैक्शन होती है. Okay, now that sometimes will lead to those persons joining the trade unions. Why? Again, simple reason.
एक कलेक्टिव बार्गेनिंग हो जाता है, इनको एक वो सेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग मिल जाता है. सो हियर एम्प्लॉयज हु एक्सपीरियंस अनफुलफिल्ड एक्सपेक्टेशंस रिगार्डिंग वेजेस एंड वर्किंग आवर्स may seek collective bargaining through unions. This is one of the reasons they join the trade unions. For example, कोई नया जॉब में आया है ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस और वॉट एवर, सो दे हैव देयर एवरीथिंग इन प्लेस, बट समवेयर दैट पर्सन फील्स दैट ए पर्सन ही फील्स दैट ही इज नॉट, जो भी उसमें कॉन्ट्रैक्ट में है, मे बी ऑन पेपर जो है दैट माइट बी गेटिंग फुलफिल्ड, बट व्हेन इट कम्स टू द वर्किंग कंडीशंस and all that, maybe that's not fulfill नहीं हो रहे हैं उनके expectations. So definitely that dissatisfaction might lead that person, उससे पहले जो join नहीं हुए trade union में भी he can join the trade union so that उनको एक collective bargaining power मिल जाए, he can negotiate. Employees who are completely satisfied with their job contracts, generally वो नहीं होते हैं उसमें, so this is false. Trade unions primarily focus on psychological contracts rather than employment contracts. ऐसा कुछ नहीं है, दोनों के इसमें भी they can help their members out. Union membership is only influenced by external economic conditions and not by individual job satisfaction. ऐसा कुछ नहीं है. Definitely अगर individual job satisfaction नहीं है, then also people, though employees, come forward to join the trade union. So in this case, A is the correct answer. So coming to the next question, how do trade unions provide a sense of security to workers? Now जैसे पहले भी हमने देखा है, कई सारे reasons होते हैं किस तरह से वो करते हैं. So let's have a look at the statements first. By ensuring job promotion and career growth for all members. ऐसा नहीं है, जो अगर work कर रहे हैं according to their timelines, their working conditions, their results, etc. उनका वो मिलता है. So this is not the true statement. So ये false है. By protecting workers from sudden income loss and workplace hazards. Yes, अगर सडनली किसी को सैक किया है विदाउट एनी रीजन और वर्किंग कंडीशन सही नहीं, तो डेफिनेटली दे कैन हेल्प देम ऑन दैट. दिस इज वेरी मच ट्रू. बाय गारंटीइंग फिक्स्ड सैलरीज रिगार्डलेस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशंस. नो, बिकॉज हमने पहले एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर में देखा है कि दे विल लुक एट द इकोनॉमिक जो इंडिकेशंस, उसके बेसिस पे भी इंडिकेटर डेवलपमेंट, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए भी दे हैव इंटरेस्ट, राइट. सो अकॉर्डिंग टू दैट ओनली वो अपना जो भी फेयर वेजेस, दैट्स व्हाई वी हैव सेड नॉट सिंपल वेजेस नहीं लिखा है हमने वहां पे, दे नेगोशिएट फॉर दैट फेयर वेजेस. जहां पे भी कुछ दिक्कत है तो डेफिनेटली दे हैव टू थोड़ा सा कम करना, मीन पीछे हटना पड़ेगा. इन दैट केस डेफिनेटली दे विल डू. सो हियर नो फिक्स्ड सैलरीज, ऐसा कुछ वो नहीं है. सो दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट. बाय ऑफरिंग डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट इन केस ऑफ जॉब लॉस, ऐसा भी कुछ नहीं है. यस, दे कैन सपोर्ट देम, नो डाउट, बट ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली दे कैन do that or they will do that, ऐसा कुछ नहीं है. So ये we can exclude A, C and D. B is the correct answer here when it comes to the how unions provide a sense of security to the workers by protecting the workers and from the sudden income loss and workplace hazards. Moving to the next question, what term describes the challenge or difficulty faced by an organization in replacing a particular employee? Now, before getting into that, let's have a look at few terms. See, एक एम्प्लॉई अपना डिससेटिस्फैक्शन को अगर निकालना है, or he is feeling dissatisfied, etc. Many times it happens that is because he is not exclusive and can be substituted very easily. Now, in such cases, he feels that he is in a state of powerlessness. ठीक है. नाउ इन सच केसेस जो अभी हमने डिस्कस किया है रिलेटेड टू डिससैटिस्फैक्शन, देयर आर टू टर्म्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. वन, एसेंशियलिटी एंड टू, एक्सक्लूसिविटी. एसेंशियलिटी क्या बोलता है? इट रेफर्स टू हाउ इंपॉर्टेंट और क्रिटिकल द जॉब इज टू ओवरऑल सक्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. अगर वो एसेंशियल है, डेफिनेटली अगर उस पोजीशन में कोई काम कर रहा है तो देन दैट पर्टिकुलर पर्सन will become exclusive and it will be difficult for the organization to replace that employee, because अगर वो वहाँ नहीं रहेंगे तो essential, right, critical job role है, that depends on that fosters the overall success of the organization. Definitely they have to look at that. So these two terms you have to understand when it comes to the employees dissent or dissatisfaction, sometimes which is comes because of his powerlessness. So here in this case
the term that describes a challenge or difficulty faced by an organization in replacing a particular employee is exclusivity. अगर एक्सक्लूसिव है तो डेफिनेटली उनको बहुत दिक्कत होती है उसको रिप्लेस करने के लिए. एसेंशियलिटी, it looks at how critical the job is to the success of the organization. So here in this case it is exclusivity, so B is the correct answer. Moving on to our next question. Now the next set of few questions will be focusing on the types of unions. कई सारे types है. Now here in this case we are talking about reformist unions. So consider the following statements regarding reformist unions. Which of the statements given below is or are correct? Now reformist unions कौन से हैं? Now these are those unions that seek to improve the existing economic and social conditions of the workers without attempting to uproot or drastically change the existing system. So simple reforms ले आके वो अपना धीरे धीरे से जो existing economic and social conditions of the workers है उनको better करना चाहते हैं. Okay, so this is basically the crux of reformist unions. The reformist unions aim to improve the economic and social conditions of the workers without attempting to dismantle and drastically change the existing economic system. धीरे धीरे वो उसी में छोटे छोटे reforms लाके करना चाहते हैं. Yes, this is very much true. Drastically नहीं करना चाहते हैं. Hoxie's concepts of business unionism and friendly or uplift unionism falls under the category of these reformist unions only. Yes, this is also true. फ्रेंडली और अपलिफ्ट यूनियंस और हॉक्सी का जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस यूनियनिज्म का, जहाँ पे दैट ऑल्सो सेज द सेम थिंग कि कुछ भी ड्रास्टिकली चेंज करने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे से छोटे छोटे रिफॉर्म्स ले आके दैट ऑल्सो विल लीड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक एंड सोशल कंडीशंस ऑफ द वर्कर्स. एट द सेम टाइम वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस जो है उसके ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. The Congress for Industrial Organization and the American Federation of Labor in the US are examples of the revolutionary trade unions. Actually, we are talking about reformist trade unions, and these two are the best examples of the reformist trade unions, right? But revolutionary यहाँ पे उन्होंने दिया example, so this is a false statement. Okay, कहीं हम लोग ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे. Obviously, we see that okay तीनों ही correct हैं, right? So जब ऐसे statement based questions आते हैं, please read the complete statement only, then attempt the answer. So here only 1 and 2 are correct, so A is the correct answer. Moving on to the next question. What is the primary objective of revolutionary unions in relation to the existing economic and social order? Now these are those unions, the name itself suggests revolutionary. They seek to destroy and abolish the existing economic and social order by means of force. एंड इससे क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव एक ही है, टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ द वर्कर्स, बट दैट दे ट्राई टू डू इट बाय सम फोर्स और एक्सरसाइज देयर पॉलिटिकल स्ट्रेंथ. Okay, so thus generally when we talk about revolutionary unions, they can be either anarchist unions हो सकते हैं या फिर political unions हो सकते हैं. And here in this case, two, that is to destroy and abolish the existing system through force or political strength. This is the correct option that fits into this revolutionary unions. To reform and improve the existing system, ये reforms वालों का है. To maintain and preserve the status quo in workplace, ये नहीं, ये तो सब कुछ फोर्सफुली करना चाहते हैं. टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट, नो, दिस ऑल्सो अगेन रिफॉर्म्स वाले में. दोनों को अभी वो हॉक्सीज जो हमने बिजनेस प्रिंसिपल्स पढ़ा है उसमें. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर व्हेन इट कम्स टू द रेवोल्यूशनरी यूनियंस कॉन्सेप्ट. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टाइप. which are the following statements regarding predatory unions is or are correct? अभी हमने रिफॉर्म्स का देखा, रेवोल्यूशनरी का देखा, ये तो और भी अलग लेवल का है. Now here they stick to no particular means and they can adapt any method to fulfill their purpose. Okay, and they use violence, other secret methods to achieve their objectives. बहुत dangerous. and इसमें दो major you can say types, एक तो hold up union है and दूसरा है guerrilla वाला. That let's have a look at the statements. Predatory unions adhere strictly to legal methods and peaceful negotiations to achieve their objectives. Is that true? No, this is very much false. Okay. Hold-up unions are formed by a combination of employees and employers who prioritize their own interest over any ethical considerations. Yes, this is very much true. These are formed by the combination of both employees and employers, but again उनके own interest के ऊपर ही they will work.
rather than any ethical considerations. वो कुछ नहीं देखते हैं. Okay. Guerrilla unions are controlled by central leader and may resort to extreme measures including violence against the employers. Yes, this is very much true. Guerrilla unions उसी तरह से करते हैं, no? They try to complete. They don't have any adhering to the legal methods या कुछ. No, they'll completely work on their own, in their own method, sometimes even resort into violence. Okay, so here only 2 and 3 are correct statements here. Here it's not D, here it's B is the correct answer. Okay. Moving on to our next type. Which of the following statements regarding the occupational or craft unions is or are correct? The name itself suggests occupational or craft unions. They include members from the same craft or trade or same sector. Okay. So now with this information, let's look into the statements. These unions are formed by workers belonging to the same trade or craft. Yes, this is very much true. उसी के लिए उनको occupational या craft union का title मिला है. Occupational unions tend to be large in size as they allow membership from multiple trades and industries. No, generally these are quite small in size क्योंकि एक ही ट्रेड या उसी क्राफ्ट के मेंबर्स दे कैन ज्वाइन. सो दिस इज वेरी मच फॉल्स. कभी कभी आपको दे सकते हो ऑक्यूपेशनल यूनियंस टेंड टू बी लार्ज इन साइज. ये भी सेंटेंस देने की जरूरत नहीं. इवन देन इट वुड बी रॉन्ग बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स दे आर स्मॉल इन साइज ओनली. ओके. पायलट्स एसोसिएशन इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ ऑक्यूपेशनल यूनियन. यस, दिस इज वेरी मच ट्रू क्योंकि उसमें सिर्फ पायलट्स ही मिलेंगे आपको और दूसरे ट्रेड या दूसरे क्राफ्ट किसी के मेंबर्स नहीं मिलेंगे. सो हियर 1 and 3 आर ट्रू. सो सी इज द correct answer in this case. Moving on to our next question. How do industrial unions differ from occupational unions? The name itself suggests industrial unions. उस particular industry के जो भी है they all can join. Occupational या craft उसी particular business. Best example हम लोग देते हैं aviation sector. Okay. जो पुराना वाला एग्जाम्पल के बेसिस पे ही. एंड उसी में है वन ऑफ, इसमें कितने पायलट्स होते हैं, ग्राउंड स्टाफ होती है एंड इसमें क्रू मेंबर्स होते हैं. राइट. सो ये अलग अलग. अगर हम लोग इंडस्ट्रियल यूनियन के बारे में बात करेंगे तो दैट कैन बी एविएशन इंडस्ट्री. सो हियर इंडस्ट्रियल यूनियंस रिप्रेजेंट ऑल वर्कर्स इन दैट स्पेसिफिक इंडस्ट्री. सो इसमें इस एसोसिएशन में इस पर्टिकुलर यूनियन में यू कैन फाइंड पायलट, यू कैन फाइंड ग्राउंड स्टाफ, यू कैन फाइंड क्रू एंड ऑल दैट. ओके. When it comes to occupational unions, it means either only pilots related union or ground staff related union or crew related union only. Okay, simple, बहुत easy फंडा है. So here A true है. Industrial unions focus solely on white collar workers. ऐसा कुछ नहीं है. This is nothing. So false. Industrial unions are smaller in size. No, in fact they are larger in size when compared to the occupational because they include all, as you have seen in this example. So ये भी false है. Occupational unions have members from different industries whereas industrial restrict membership to a single craft. No, बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे. So false है. ये A is the correct answer in this case. Moving on to our next question. Which of the following statements correctly distinguish general unions from the industrial unions? Next level. Now industrial unions क्या है? We have already seen एक particular industry से है. General unions क्या है? It's not different industries, different employments, different contracts, crafts. They can come into this union. So general unions include workers from different industries while industrial unions consist of workers from the same industry. This is very much true. Okay. ये unions ऐसे जैसे कि नेशनल यूनियन ऑफ म्यूनिसिपल एंड जनरल वर्कर्स सभी उसमें आते हैं, सभी स्टेट्स के. अगर वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो दे कैन कम एंड ज्वाइन. This is very much true. Industrial unions are smaller in size than general unions because they cover only one specific industry. Obviously true. लेवल जैसे कि हमने सबसे पहले देखा है ऑक्यूपेशनल. ओके. ऑक्यूपेशनल से वो सबसे छोटा है, उससे बड़ा है हमारा इंडस्ट्रियल. अब इंडस्ट्रियल से भी बड़ा है जनरल. राइट. सो दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. जमशेदपुर लेबर यूनियन इज एन एग्जाम्पल ऑफ जनरल यूनियन. दे get everyone into on their board like skilled, unskilled workers, everyone.
in that industries, all industries put together. So ये भी true statement है. Now इसमें when we talk about general unions, इसमें दो तरह के unions generally we can look at. One is the blue collar workers union or the white collar managerial workers union. Blue collar workers क्या है, जो floor on the maintenance shop या फिर manufacturing, इसमें on the floor when they work, okay, generally they are considered as blue collar and उनके जो trade unions होते हैं उनको unions ही बुलाया जाता है. But when it comes to white collar और managerial unions, जो generally skilled work करते हैं and non manual workers and they are generally paid monthly basis etc. क्योंकि blue collars में कई बार ऐसा होता है कि wages होते हैं उनके daily wages या weekly wages, उस तरह से इनका अलग है. And when we talk about the white collar employees union, generally their unions, they are called as either guilds, ओके, जनरली उनको गिल्ड्स बोलते हैं और एसोसिएशन बोलते हैं, ओके, नॉट यूनियन. जैसे कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफिसर्स एसोसिएशन और ऑल इंडिया बैंक ऑफिसर्स एसोसिएशन, ओके. सो एसोसिएशन या गिल्ड्स बोलते हैं इनको, rather than union, which is actually we use for the blue collar workers unions, okay. So here in this case all these statements are true, so 1 2 3 are true, so D is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements correctly differentiate the types of trade unions based on the level of operations? उसमें भी है, okay. Plant level unions operate at the factory or plant level and focus on local workplace issues. Yes, this is very much true. उसी केस में वो काम करते हैं. Industry level represent workers across multiple enterprises within a specific industry, okay. So यहाँ पे for example एक pharma industry है और उसमें मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का कुछ है, तो उस यूनिट का प्लांट वाला होगा. फार्मा इंडस्ट्री का कोई यूनियन है तो दीज दे कैन ज्वाइन, सो यस इंडस्ट्री लेवल यूनियन हो जाएगा वो ट्रू, फार्मा इंडस्ट्री. रीजनल लेवल दे कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल प्लांट एंड इंडस्ट्री लेवल यूनियंस विद इन ए पर्टिकुलर स्टेट और रीजन, यस दिस इज ऑल्सो वेरी मच ट्रू. वो हो सकते हैं, जैसे कई बार होता है यही रीजनल या फिर जो फेडरेशंस होते हैं या फिर यूनियंस होते हैं उसमें ये इंडस्ट्री लेवल यूनियंस, प्लांट लेवल यूनियंस, दे गेट देमसेल्व्स एफिलिएटेड टू देम कि हम उस पर्टिकुलर रीजनल पार्टी से, यूनियन से, एफिलिएशन फेडरेशन से या नेशनल लेवल फेडरेशन से बिलोंग करते हैं करके, ठीक है. National Federation are only open to the industry level unions and exclude plant level unions from their membership. No, this is false. Here when we talk about National Federation, वो industry level unions, regional level federations या plant level unions को भी members की तरह लेते हैं and they call themselves as the affiliates to these national federation. Okay, so here 1 2 3 are true, so B is the correct answer. Coming to the next question, match the following types of trade unions with their करेक्ट एग्जाम्पल्स. जो अभी हमने देखा है प्लांट लेवल, इंडस्ट्री लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, उसके अगेंस्ट कुछ एग्जाम्पल्स है दैट यू हैव टू मैच. प्लांट लेवल यूनियन, सो प्लांट लेवल हमने देखा है कि उस पर्टिकुलर फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जितने भी एम्प्लॉयज है उनके लिए बना है. यस, सो फैक्ट्री बेस्ड ट्रेड यूनियन रिप्रेजेंटिंग वर्कर्स इन ए सिंगल ऑटोमोबाइल प्लांट, ये बेस्ट एग्जाम्पल है इसके लिए. सो A4 है, ठीक है. इंडस्ट्री लेवल यूनियन, अब इंडस्ट्री लेवल मतलब एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री से एसोसिएट होते हैं ये, राइट. सो हियर a trade union covering multiple steel factories across India. अगर इंडिया का देखेंगे तो आप लगेगा नेशनल फेडरेशन है क्या? नो, नेशनल फेडरेशन में क्या है? प्लांट लेवल, इंडस्ट्री लेवल, रीजनल लेवल, सभी फेडरेशंस आते हैं उसमें, सभी तरह के इंडस्ट्रीज आते हैं. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्टील फैक्ट्रीज बट अक्रॉस इंडिया. ओके, सो ओनली टू ए पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो डोंट गेट कंफ्यूज कि इंडिया है तो वो नेशनल फेडरेशन होगा. प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल कि क्या कंप्लीट सेंटेंस में क्या दिया. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली स्टील फैक्ट्रीज, ओनली टू पर्टिकुलर इंडस्ट्री. सो हियर इट इज ट्रू. रीजनल लेवल फेडरेशन, regional level to a particular region, to a particular state, right. So in this, an organization of all trade unions in Tamil Nadu. This is the best example. So here 3.
नेशनल फेडरेशन, सो बिल्कुल ऑल इंडिया लेवल में काम करता है, इनटू विच डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज, डिफरेंट काइंड्स ऑफ regions, they all can join. So the खेत मजदूर यूनियन ऑफ AITUC, ओके, सो ये, और भारतीय खेत मजदूर यूनियन, कोई भी स्टेट से हो, कोई भी सेक्टर से हो, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड, या एग्रीकल्चर वो फार्मिंग कर रहे हैं या मार्केटिंग कर रहे हैं या फिर ट्रेडिंग कर, एनीवन, दे ऑल कैन जॉइन दिस. सो हियर दिस इज वन. Okay, so A4, B2, C3, D1, A is the correct answer here. See, when these kind of questions are asked, though I understand rarely पूछते हैं ऐसे, but when they ask you, please be very very careful कि एग्जैक्ट वर्डिंग्स क्या है, अकॉर्डिंगली आंसर. कि इसमें कीवर्ड है हमारा, जैसे इंडस्ट्री लेवल वाला ये है, कीवर्ड है इंडस्ट्री रिलेटेड, सो यहाँ पे स्टील फैक्ट्रीज एक ही है, ठीक है. यस. So hope you all have liked this session. So before winding up, I have a small announcement. Currently Edutap is offering 3 major types of courses for all the students who are appearing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and your AO examination. So इसमें 3 तरह के कोर्सेस वो अभी ऑफर कर रहे हैं. जो फर्स्ट वन है मास्टर कोर्स, ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहेगा जो बिल्कुल अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं अपना, एंड दे आर लुकिंग आउट फॉर सम ऑप्शंस वेयर दे कैन फाइंड एवरीथिंग एट वन प्लेस, ऑल द कंटेंट. एंड यहाँ पे वही है, द कंटेंट इज प्रोवाइडेड टू इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोज, चैप्टर क्विजेज, टेस्ट, एवरीथिंग. अलॉन्ग विद दैट कई सारे स्ट्रैटेजी सेशंस भी होंगे. इनफैक्ट एवरी थर्सडे कुलदीप सर आपको ऑनलाइन मिलेंगे एंड ही विल बी taking you through the strategy how you can utilize the entire content that has been provided to you wisely for your preparation. along with that जो भी आपके डाउट्स है वो क्लैरिफाई करेंगे. दूसरा कोर्स है ये उन बच्चों के लिए जो कई बार होता है ना कि कुछ कंटेंट हम खुद ही कर लेंगे बट कुछ टॉपिक्स हमें कोर्स में चाहिए. फॉर सच काइंड ऑफ स्टूडेंट्स दिस वुड बी द बेस्ट, जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल एक्सक्लूसिवली आपको लेबर लॉस या इंडस्ट्रियल रिलेशंस, और एक्सक्लूसिवली आपको पॉलिटी ऐसे कुछ कंटेंट चाहिए, दैट अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, ठीक है. थर्ड कोर्स ये है टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं या फिर एक बार ऐसे कुछ एग्जाम भी दे चुके हैं. नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम गुड नंबर ऑफ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड रियल एग्जाम फील के लिए मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट, फॉर देम दिस वुड बी द बेस्ट ऑप्शन. सो एज पर योर रिक्वायरमेंट यू कैन गो ahead with the course, and अगर आपको फिर भी doubts है you can always reach out to the people in the team members and get your doubts clarified before making an informed decision. आपको सारे details आपके description box में मिल जाएंगे. Thank you very much for being with me so patiently and hope you have liked this session. See you all in the next session soon. Thank you once again. Hello everyone, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, and as part of which in this session we are going to see the trade unions yet again. Part 3 है ये. And why this series important? ये series इसलिए भी important है. See, when we talk about UPSC EPFO exam, be it APFC or the APFC का एग्जाम हो उस पोस्ट के लिए हो या और A और EO पोस्ट के लिए हो, इन बोथ द केसेस IR एंड लेबर लॉस आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स. 120 क्वेश्चंस में 15 प्लस questions are asked from these topics only. So with this you can understand the kind of high weightage and high scoring potential this particular topic has. अगर basics भी आप सही तरह से cover करोगे, सही से practice करोगे तो definitely 10 plus MCQs सब तो आराम से आप निकाल पाओगे. So if you want to score high in either of these examinations, I would suggest you to watch these sessions regularly. Why? Because we are covering the content, all these in the form of MCQs. ओके, सो इससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ वेरी सून. सो विद दिस लेट मी स्टार्ट today's session. So moving on to our first question, there are two statements and you have to tell me which statements are true. Statement 1 says, to be recognized as a central
trade union organization. A trade union federation must have at least 1 lakh members spread over 2 states and 2 industries. ठीक है. स्टेटमेंट 2 बोलता है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज्ड 12 CTUOs that meet the criteria of having 5 lakh members spread over 4 states and 4 industries. Which of the following is correct? दोनों में से एक तो गलत होगा. ओके, सो हियर वन सेज कि 2 states and 2 industries में रहेगा and 1 lakh members होंगे, तो then we can consider it as a central trade union organization. The other says that the Ministry of Labor and Employment Government of India is the one that lays down the process of the concept of recognizing any trade union as the central trade union organization. So here ये तो correct है. Then when it comes to the criteria, minimum 5 lakh members होने चाहिए and it should be that union should be spread over 4 states and at least members from 4 industries should be the part of this union. Only then we can consider that union as a central trade union organization. तभी हम लोग उसको central trade union organization बोल सकते. So here statement 1 is false but statement 2 is true. So D is the correct answer here. Moving on to our next question. Again statement based है, then you have to tell me which of the statements mentioned are is or are true or false, जो भी है. Statement 1 says the All India Trade Union Organization was founded in 1920 in Bombay with Lala Lajpat Rai as its first president and it was initially associated with the Indian National Congress. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है. सेकेंड स्टेटमेंट सेज द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस split up in 1945 due to differences in political ideologies and since then it has been associated with the Communist Party of India. Which of the following is correct? See, when we look at the first statement, yes 1920 में ही हुआ था इसका फाउंडेशन. बॉम्बे में ही हुआ था. यस, लाला लाजपत राय हैज बीन इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंट बट इट वाज नॉट एसोसिएटेड विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इवन इनिशियली आल्सो. ओके, it included congressmen, socialists and communists that worked under the flag of this AITUC, but later subsequently based on the differences in the political ideologies ये split up हुआ था. उसके बाद AITUC has been associated with the कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, CPIM से वो जुड़ गया था. सो हियर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पार्शियली ये ट्रू है बिकॉज आधा स्टेटमेंट तो गलत है, so you have to consider this as false statement only, and yes this is a true statement. So here statement 1 is false but statement 2 is true. So here D is the correct answer. Moving on to our next question. What was the outcome for the All India Trade Union Congress after it split up in 1945 due to differences in political ideologies? जो हमने इससे पहले भी डिस्कस किया था, it became associated with the Communist Party of India. Communist Party of India के साथ वो associate हो गया. ये भी एक तरह का क्वेश्चन है that they can ask, क्योंकि जनरली जितने भी जो politically ट्रेड यूनियंस ऑलरेडी एंगेज थे और या फिर कहीं ना कहीं वो जुड़े हुए थे लेटर दे हैव ईदर कंप्लीटली उन्हीं के साथ जुड़ गए हैं या फिर इवन टुडे दे आर एफिलिएटेड टू दोस पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज. सो इन दिस केस AITUC हैज बीन एसोसिएटेड विद द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. Again statement based है, you have to tell me which of the statements are correct. Statement 1 says the Hind Mazdoor Sabha was founded in 1948 with the primary objective of freeing the trade union movement from the control of political parties. इसलिए ये किसी भी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. Hind Mazdoor Sabha. Statement 2 says HMS is affiliated with the International Trade Union Confederation and has been functioning as an independent and democratic trade union center. वो किसी political party के साथ जुड़ा हुआ नहीं है. Now which of the following is correct? So statement 1 भी correct है इसमें, statement 2 भी correct है because yes it was founded in 1940 and उसका primary objective वही था, एक union movement completely free from the control of any parties, and yes it is affiliated to the International Trade Union Confederation and it has been functioning as an independent and democratic trade union center जो किसी भी पार्टी के साथ affiliated नहीं है. So here both the statements are true.
Now, where was the Hind Mazdoor Sabha founded and who was its president? So, यहाँ पे Hind Mazdoor Sabha, it was founded or formed in Kolkata during a trade union conference that was conducted between 24th to 26th December 1948, and इसके first president है R.S. Ruikar. So, इस तरह से ड्यूरिंग दैट ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस इसका एक फाउंडेशन हुआ था एंड इट केम इनटू एग्जिस्टेंस. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अगेन ये स्टेटमेंट बेस्ड है एंड विल लुक इनटू द क्वेश्चन दैट इज विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. Statement 1 says the Indian National Trade Union Congress was founded on 3rd May 1948. Okay. Statement 2 says the Indian National Trade Union Congress is guided by the Gandhian Sarvodaya philosophy and is associated with the International Labour Organization since 1949, focusing on promoting egalitarianism, community welfare and improving the working conditions. Which of these following is correct? See, when we look at the INTUC, this came into existence, yes, on 3rd May 1948 only, after a resolution was passed by the Central Board of Hindustan Mazdoor Sevak Sangh. Hindustan Mazdoor Sevak Sangh HMSS ने 1947 नवंबर में एक रेजोल्यूशन पास किया था बेस्ड ऑन विच INTUC हैज बीन फाउंडेड एंड इसका एफिलिएशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ, INC के साथ. ठीक है. एंड मेजरली इसका बर्थ, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव था टू to provide voice to the genuine demands of the working class. Along with that, we have to also keep the national interest as well in consideration, thereby एक विन विन सिचुएशन होना चाहिए वर्किंग क्लास के लिए भी एंड द इकोनॉमी ऑफ इंडिया के लिए भी. दिस इज व्हाट देयर मेजर गाइडिंग प्रिंसिपल इज एंड हियर both these statements are true, hence A is the correct answer. Under which party's aegis was the Bharatiya Mazdoor Sangh BMS was formed under in 1955? Now BMS 23rd July 1955 को बना था. ओके एंड ये बना था अंडर द एजिस ऑफ जन संघ पार्टी. जन संघ पार्टी बाद में वो डेवलप हो गया इनटू बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. सो हियर इन सिंपलर टर्म्स BMS इज एफिलिएटेड और इट इज उसी के अंडर ये ट्रेड यूनियन फॉर्म हुआ था. नाउ एफिलिएटेड विद द बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी. सो हियर C इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Who was a leader under whose guidance the Bharatiya Mazdoor Sangh was founded on 23rd July 1955? So अभी तक हमने देखा yes जो भी dates दिया है यहाँ पे सही है and we have also seen कौन से पार्टी के affiliation से ये लोग अपना launch किए थे या found किए थे. That also we have seen. Now who is the founding member या फिर leader कौन थे, मतलब इसके जो मेन लीडर, इसके जो मेन लीडर थे दत्तोपंत जी टेंगड़ी. ही वाज द लीडर अंडर हुज गाइडेंस दिस भारतीय मजदूर संघ वाज फाउंडेड. Moving on to our next question. The Self-Employed Women's Association SEWA is an amalgamation of which three movements? Now ये actually SEWA has grew out of the Textile Labor Association Ahmedabad, which is considered as one of the India's oldest and largest union of textile workers. उसी के इससे ये बना है and this is guided by the Gandhian principles of Satya, Ahimsa and Sarvadharma. ओके एंड खादी. इन्हीं के बेसिस पे ये हुआ है. सिंपल 3 मूवमेंट्स चल रहे थे उस टाइम पे एंड ऑल दीज मूवमेंट्स दे हैव अमेलगमेटेड टू फॉर्म दिस सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन्स एसोसिएशन दैट इज सेवा मूवमेंट एंड दैट इंक्लूड्स लेबर मूवमेंट, कोऑपरेटिव मूवमेंट एंड वुमेन्स मूवमेंट. सो वुमेन्स का तो यू कांट remove that and so here B is the correct answer.
Who founded the Self-Employed Women's Association in 1972? Yes, 1972 में as we have discussed earlier also ये हुआ था, 3 different movements का amalgamation से हुआ था. इसके guiding principles है अहिंसा, सत्य, सर्व सबका सम्मान करना and खादी and all that, right? So इसमें 1972 में ईला भट्ट करके एक lawyer and union organizer थे. उनके लीडरशिप में ये सेवा ये जो यूनियन है that has been formed. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Accurate data regarding the number of unionized workers in India is primarily sourced from the general verification of membership of trade unions affiliated to the central trade union organizations. जो Ministry of Labor इसके अंडर है, जो हमने ऑलरेडी देख लिया था, राइट कि उन बेस्ड ऑन दैट ओनली उन्होंने एक दे हैव कम अप विथ क्राइटेरिया कि 5 लाख मेंबर्स होने चाहिए, एटलीस्ट 4 स्टेट्स में उनका प्रेजेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 4 इंडस्ट्रीज से उनके मेंबर्स होने चाहिए. ओनली देन विल कंसिडर दैट एज अ सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन. राइट नाउ हाउ मेनी unionized workers are there in a particular union and all that, वो उसके बाद ही तो हमें समझ में आएगा whether they are eligible for the as to be considered as central trade union organization. Now who will conduct that exercise? वो numbering, वो data collection, वो सब कौन करता है इसमें? So here in this case when we talk about this, the chief labor commissioner central government, उनके अंडर ये जो data collection का exercise है वो सब होता है. So here A is the correct answer. When we look at the problems of trade unions, one of the major problems of trade unions is a procedure when it comes procedure for recognition of the union. So here the Industrial Disputes Act 1947 mentions the term recognized unions, okay, but does not prescribe any procedure for recognition. Similarly, the Trade Unions Act 1926 does not address this issue as well. उनका एक legalization तो है, okay, procedure क्या है related to the recognition of the unions, that is not there. Now but some states they have come up with the enactment, specific enactments regarding the recognition of these trade unions. So here which are the following states have specific enactments regarding the recognition of trade unions? Okay, now you have to tell me that. So here when we talk about that, आंध्र प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, इन्होंने अपना एक स्पेसिफिक एनैक्टमेंट लेके आए हैं बेस्ड ऑन विच द यूनियंस आर रिकॉग्नाइज्ड. अब ये 6 स्टेट्स हैं तो इसका एक निमोनिक भी दिया है हमने कि किस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं. सो हियर बंगाल का अंदर मदमहान राजा गजराज. So West Bengal, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात एंड राजस्थान तो हो गया है. सो ये सारे इसमें आ गए हैं. सो 6 स्टेट्स है जिनमें अभी एनैक्टमेंट हुआ है रिलेटेड टू द रिकॉग्निशन ऑफ यूनियंस, रिकॉग्नाइज्ड यूनियंस. Moving on to our next question. Trade union leadership requires serious attention as most unions are politically affiliated, with leaders often serving political interest. Leaders, whether internal or external, usually work on an honorary basis. External क्या है मतलब एक्टिवली वो इस यूनियन में नहीं रहेंगे, वो किसी पार्टी के थ्रू एफिलिएटेड होंगे एंड देन दे वर्क, बाहर से ही वो यूनियन पे अपना वो काम करते रहते हैं. इंटरनल क्या है, दे आर पार्ट ऑफ दैट यूनियन, दे आर वर्किंग इन दैट ऑर्गेनाइजेशन और समवेयर एंड पार्ट ऑफ द यूनियन एंड इंटरनली ही वो अपना काम करते रहेंगे. ठीक है. नाउ विद दिस इंफॉर्मेशन इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, एक्सटर्नल लीडर्स आर मोर पॉलिटिकली इन्फ्लुएंशियल बट मे लैक डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द शॉप फ्लोर इश्यूज, क्योंकि वो तो पूरा है इंटरनल लीडर्स का, राइट. सो ये ट्रू है. Internal leaders are well versed in industry wide trends and have greater bargaining power. No, external leaders will have, क्योंकि वो खुद directly affiliated है किसी पार्टी के थ्रू, political party के थ्रू. So this is false. External leaders are more accessible to workers and have first hand experience with daily problems. No, वो internal leaders का रहता है क्योंकि वो खुद already completely associated है with that union and the organization etc. So ये भी false है. Internal leaders are more effective in bargaining due to their broader industry knowledge. That is of the external leaders, क्योंकि वो खुद बाहर बहुत घूमते हैं,
and all that, because of which they have that extensive knowledge and all. So इसमें से A is the correct answer because that is the only true statement here. So friends, hope you have liked this session. Before winding the session, I would like to update one thing. Currently Edutap is offering various courses associated with the upcoming UPSC EPFO examination. ओके सो ये उन बच्चों के लिए है जो यूपीएससी ईपीएफओ 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बीट एपीएफसी और ई और एओ दोनों के लिए भी है ये कोर्सेज. सो देखते हैं. सबसे पहला है मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए बहुत यूजफुल रहने वाला है, दोज हु आर और हु वांट और हु आर गोइंग टू अटेम्प्ट दिस एग्जाम एंड अभी डिसाइड किया एंड देन दे आर लुकिंग आउट फॉर कंटेंट. पूरा 1 पॉइंट एक जगह पे उनको कंटेंट चाहिए. सो उन बच्चों के लिए द बेस्ट है बिकॉज all the subjects, all the topics, everything, the content would be provided in the form of PDFs, in the form of videos, in the form of live sessions, chapter quizzes, test series, everything. Along with that, every week, especially on Thursday, Kuldeep sir aap sabse milenge online and he'll provide you with all those strategies how the content already that has been provided on the site can be utilized for your exam preparation. Along with that, जो भी आपके doubts है वो सब वो resolve करेंगे उसमें. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी एक आधे सब्जेक्ट्स खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर एक आधा सब्जेक्ट्स का ही उनको कंटेंट चाहिए अलॉन्ग विथ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. ठीक है, तो उनके लिए ये बहुत बेटर रहेगा, बेस्ट रहेगा इनफैक्ट. थर्ड आता है टेस्ट सीरीज. नाउ दिस वुड बी हेल्पफुल फॉर दोज इनका प्रिपरेशन ऑलरेडी हो गया है, okay, by on their own, and now they are looking out for some practice MCQs and test series so that उनको एक real exam का feel मिल जाए and at the same time good number of practice questions. ये उनके लिए the best होगा. So requirements के हिसाब से you can go ahead with opting the course, and if you still have any doubt you can always reach out to the team, okay, to any of the team members and get your doubts clarified before making an informed decision. All the details have been provided to you in the description box. उसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा. Thank you very much for being with me, and I really hope that you have liked this session. See you all in the next session very soon. Thank you very much once again. Hello everyone, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO exam 2025, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which today we are going to see trade unions part 4. This is the last part in this trade union series. So why is this series important? See, when it comes to this series, especially we are focusing on the upcoming UPSC EPFO 2025 for both the post APFC के लिए भी and EO और AO के लिए भी. ठीक है, and if you look at the examination pattern, 120 MCQs में से 15 plus MCQs they come from this topic only, that is labor laws and the industrial relations. सो ये तो बहुत ही अच्छा वेटेज भी है एंड हाई स्कोरिंग पोटेंशियल भी है, क्योंकि इफ़ यू कवर इवन द बेसिक लेवल और बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें कवर करेंगे तो ऑब्वियसली 10 प्लस MCQs तो आप आराम से क्लियर कर पाओगे. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस that is associated with this particular topic. So if you really want to score high, I suggest you to go through these sessions regularly, because whatever the content that we are covering here that are in the form of MCQs, so आपका एक revision भी हो जाएगा and practice MCQs भी आपके लिए मिल जाएंगे. And moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon, so that would add value to, or this series will add value to your exam preparation. With this, let me start today's session. Moving on toward the first question. What is the major consequence of the multiplicity of trade unions? अगर कई सारे trade unions होंगे plant level पे, क्या दिक्कत हो सकती है under the Trade Unions Act 1926? जब भी ऐसा कुछ होगा, then the most, क्योंकि यूनियंस अलग अलग बने ही क्यों, देर इज सम डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इन देम, राइट? सो दैट वुड डेफिनेटली क्रिएट इंटर यूनियन राइवलरी, वीकनिंग द ट्रेड यूनियन मूवमेंट एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग इन ऑल टुगेदर. सो यहाँ पे सी करेक्ट आंसर. इट स्ट्रेंथन्स द कलेक्टिव बार्गेनिंग, नो, क्योंकि ऑलरेडी ओपिनियंस में डिफरेंस है, दैट्स वाई अलग अलग यूनियंस बने हैं. सो ये तो नहीं हो सकता. इट रिड्यूसेस कॉन्फ्लिक्ट्स, नो, अगेन द सेम लॉजिक. इट सिंप्लीफाइज मैनेजमेंट टास्क ऑफ आइडेंटिफाइंग द रिप्रेजेंटेटिव्स, नो, ये तो और उलझा देगा कि इतने सारे यूनियंस है, हाउ दे हैव टू मैनेज. सो हियर सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन.
Moving on to our next question is statement based, and this is basically focusing on the declining membership in the unions in the current scenario. So the statement 1 says the rise of contract based employment has contributed to the declining membership of trade unions in India. Statement 2 है skilled workers in industries like IT are less interested in joining the trade unions due to their focus on personal career advancement. Which of the following is correct? If you look at the statements, actually ये दोनों भी true है. Both the statements are true. These are few of those reasons because of which the membership या फिर joining the trade unions वो declining में है. So here A is the correct option. Both these statements are true. Moving on to our next question. Women-led trade unions like SEVA and the Working Women's Forum, etc., they all have played a crucial role in addressing the gender-specific labor issues. No doubt in that. They have done a great job. However, their success highlights a key contrast with the mainstream trade unions. Why they have to come up with separate women-related trade unions? Now, what is a fundamental limitation of mainstream trade unions regarding women workers? तो कुछ तो रीजन होगा ना, कुछ तो ऐसे लिमिटेशन है बिकॉज ऑफ विच नो सेपरेट ट्रेड यूनियंस के लिए सोचना पड़ रहा है. सो इफ वी लुक एट दैट, सी बस स्टेटमेंट्स देख लेते देन विल डिस्कस. मेन स्ट्रीम ट्रेड यूनियंस प्रायोरिटाइज लीगल एंड वेज रिलेटेड डिमांड्स ओवर जेंडर सेंसिटिव कंसर्न्स लाइक वर्क प्लेस सेफ्टी एंड चाइल्ड केयर. यस, दिस इज वेरी मच ट्रू. ओके, वर्क प्लेस सेफ्टी तो है, it's part of that, but gender based वाला कुछ नहीं है. So okay, yes, this is a very true statement. They explicitly prohibit women from taking leadership roles. ऐसा कुछ भी नहीं है. So ये false. They exclusively represent workers in the formal sector, making them irrelevant to the informal sector workers. ऐसा ये भी नहीं है. In fact, they focus more on informal sectors. ये भी false statement है. Women-led trade unions receive significantly higher government support than mainstream unions. ऐसा भी नहीं है. Okay, majorly उनके priorities अलग है. That's the only thing, and that's what the statement A says. So here A is the correct option. Now, coming to the next question, despite historic contributions by women leaders like Ansuya Ben, Ela Ben, who have come up with various unions, etc., especially focusing on women like Seva, membership in trade unions still remains low when it comes to women. Which of the following policy measures would be the most effective in enhancing women's participation in trade unions? So आपको यहाँ पे options दिया है ना, you have to tell me which would suit best or which can be effective when to enhance the women participation in trade unions. Enforcing a mandatory quota for women in trade union, नहीं, ये when relatively देखा जाए तो it's not true. Let's see other statements and we can say this is not true. Restricting women's employment in hazardous jobs to ensure the safety, nahi. Encouraging subcontracting practices to provide women with flexible work arrangements, no. Strengthening labor laws to recognize informal sector workers and addressing gender specific workplace concerns, so that जो regular trade unions ही है उसमें ही उनका यहाँ पे the same thing, जो regular trade unions हो उसमें women participation कैसे बढ़ा सकते, क्योंकि उनका focus अलग है. So they have to focus on that. How? By strengthening the labor laws to recognize informal workers and addressing gender specific workplace concerns. वो अगर incorporate कर पाएंगे तो definitely more women they can come forward to participate in the trade unions or join them. So here D is the correct answer. Relatively अगर बाकी भी देखेंगे तो yes, they can also be used in enhancing, but सबसे आसान तरीका and which is easiest and most implementable वो है D here. So as I said earlier also, relatively अगर आप देखेंगे तो D would be the best effective method that can enhance the women's participation in trade unions. So here D is the correct answer. सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने देखा है ट्रेड यूनियंस एम्प्लॉयज़ के लिए किस तरह से काम करते हैं एंड ऑल दैट, बट डू यू नो दैट एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस आर आल्सो देयर. These are some formal bodies of employers from the same or from different sectors, majorly set up so as to champion and further the interest of employers, representing them at various forums.
Okay, and also it advises them to improve the conditions of conducting trade and maintaining harmonious industrial relations. So yes, employers organizations भी है. Now यहाँ से हम लोग थोड़ा सा उनके ऊपर फोकस करेंगे. अभी तक हम लोग ट्रेड यूनियंस, उनके किस तरह से वर्किंग होता है, उनके किस तरह से मेंबरशिप होती है, उनके किस तरह से दैट हेल्प्स द मेंबर्स ऑफ द यूनियन, एंड कई सारे ट्रेड यूनियंस का भी हमने देखा है, एंड हाउ दे आर पॉलिटिकली एफिलिएटेड, उनके पॉलिटिकल पार्टीज कौन से हैं जिनके साथ उनके एफिलिएशन है, ऑल दैट वी हैव सीन. ओके, नाउ लेट्स हैव ए क्विक लुक एट द एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशंस एज वेल. सो यहाँ पे प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन, सिमिलर टू एम्प्लॉयज, उनके जो वेलफेयर के लिए देखते हैं. यहाँ पे मेजरली दे फोकस ऑन द interest of the employers and promote a harmonious industrial relation along with representing them at various forums and also advising them to improve the conditions of conducting the trade. Okay, so here C would be the correct answer. To promote workers welfare नहीं, क्योंकि ये खुद employers का है. To advocate the government policies में ऐसा कुछ नहीं है. They are trying to help themselves and others in the same, either उसी industry में है या फिर दूसरे industry में, but if they are part of the union, that organization, definitely they'll help each other. To provide training and development program for employees नहीं है. This is C is the correct option here. सबसे पहला मतलब अगर इंडिया में फर्स्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स जो लॉन्च हुआ है, दैट इज कलकत्ता चेंबर ऑफ कॉमर्स. इट इज द फर्स्ट चेंबर ऑफ कॉमर्स एस्टैब्लिश्ड, बट अगेन ये ब्रिटिश रूल में हुआ है, एंड दिस इज एस्टैब्लिश्ड बाय इंग्लिशमैन. ओके, जो वहाँ से ब्रिटेन से यहाँ पे आके बिजनेस करने के लिए आए हैं, वो सब मिलके ये लॉन्च किए थे कैलकाटा चेंबर ऑफ कॉमर्स एक्सक्लूसिवली बाय द इंग्लिशमैन. ओके, सो this was established for the first time majorly for representing employers as such. It took place in 1833. कैलकाटा चेंबर ऑफ कॉमर्स हमने तो देखा है कि इंग्लिशमैन ने उस टाइम पे 1833 में लॉन्च किया. तो उसके बाद फर्स्ट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स भी लॉन्च हुआ था. वेयर वाज द फर्स्ट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स? द नेटिव मर्चेंट्स चेंबर ऑफ कोकोनाडा वाज सेट अप इन 1885. वहां से 1833 में होने के बाद 1885 में पहली बार इंडियन मर्चेंट्स दे हैव कम टुगेदर टू लॉन्च एक एम्प्लॉयर चेंबर कॉमर्स चेंबर ऑफ कॉमर्स उन्होंने लॉन्च किया, सो एज टू हेल्प देमसेल्व्स इन प्रमोटिंग द ट्रेड, इन हेल्पिंग गुड प्रैक्टिसेस इन द ट्रेड एंड ऑल दैट. सो ये हुआ था एक्चुअली कोकोनाडा. नाउ इट्स ए पोर्ट, एक्चुअली वहाँ पोर्ट है काकीनाडा. इट्स काकीनाडा, दैट इज इन आंध्र प्रदेश. ये फर्स्ट यू कैन से एज द फर्स्ट इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स लॉन्च्ड बाय द इंडियन बिजनेसमैन themselves. So here it is the correct answer is C. Now coming to the next question, the historical evolution of employers representation in India reflects a shifting economic and political landscape. Which of the following best explains the significance of the formation of the Council of Indian Employers? Now when we talk about the Council of Indian Employers, it is an umbrella organization for Indian employers. It was formed when the Employers Federation of India, it was established in 1933. It was amalgamated with the All India Organization of Employees, AIOE. So एक तो EFI, okay, plus AIOE, All India ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयर्स, ये दोनों मिलने के बाद काउंसिल ऑफ इंडियन एम्प्लॉयर्स डेवलप हुआ in 1956, and it focuses on it unified major employer organizations consolidating their influence in labor negotiations and policy making. Okay, so ये सबसे when we look at this, the significance of formation, this it has worked a lot on this. It marked the first instance of employer representation. और पहले ही था, now they have वो दोनों मिलके और strong हो गए हैं. It was established to counter the rise of trade unions. ऐसा कुछ भी नहीं, इनफैक्ट उसको भी प्रमोट करने के लिए, सी इन्फ्लुएंस लेबर नेगोशिएशन एंड पॉलिसी मेकिंग दोनों में करने के लिए. इट्स नॉट दैट टू रेस्ट्रिक्ट लेबर राइट्स और समथिंग, नो, इट इज टू प्रमोट देमसेल्व्स. इट वाज क्रिएटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट, ऐसा कुछ भी नहीं, इट इज बेस्ड ऑन द
the employers only. So here B is the correct answer. The Associated Chambers of Commerce and Industry of India, ASSOCHAM, is a key industry body representing businesses across sectors. Now, which of the following best describes the composition of its membership? Now, when we talk about this, it is one of the apex industry body established in 1920 by promoter chambers, various other small chambers. They have come together who represent all regions of India. Chote chote chambers, they all have come together. That's why it's called as Associated Chambers of Commerce and Industry of India. जो जितने भी छोटे छोटे chambers है regional level के, they all have come together to form this ASSOCHAM, and ये हुआ था 1920 में, ठीक है. And here it includes trade associations, chambers of commerce and individual businesses from diverse sectors. ये सारे मिलके बने थे. And the major objectives, if we look at of ASSOCHAM, are to promote trade by representing industry at various national and international forums, and also enhancing competitiveness and disseminating information about various national and international policies, so that जो भी वो regional members and all that, they can help themselves in using that effectively. So here B is the correct answer when it comes to ASSOCHAM, which was launched in 1920. Coming to the next question, the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry was founded in 1927 by G.D. Birla and Purushottam Das Thakur Das. Now, what was their primary motivation for establishing this organization? See, we were working 1927, मतलब तब भी British rule था. So, in order to create a platform, a separate platform exclusively for the Indian businesses, they have come up with this, so that जो global competitiveness that can be incorporated, thereby enhancing the efficiency of Indian industry, and also to expand business opportunities both in the domestic and foreign markets by helping each other. So for which they have come up with this FICCI, launched or founded by G.D. Birla and Purushottam Das Thakur Das. So here, to create a platform for Indian businessmen to advocate for economic independence and industrial growth, ये major है. To assist the British government, no. To represent only large, ऐसा भी नहीं है. To promote state controlled economic policies, no, nothing of that sort. To help themselves and others so that एक strong global competitiveness incorporate करे, and at the same time industry efficiency enhance करने के लिए they have founded this. So here A is the correct answer. Now coming to the Employers Federation of India. The Employers Federation of India represents the interest of employers at both national and international levels. Now, which of the following best describes its membership composition? So majorly this was founded in 1933. The purpose of defending, promoting and championing the interests of employers who are part of this. Now, this federation actually represents employees' concerns, views at various forums like यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट है, standing labor committees, Indian labor conferences and other industry committees, subcommittees, etc. They represent their views, etc. and all that. And also this EFI represents the Indian employers at the international level as a member of the Confederation of Asia Pacific Employers. So ये है इसकी जो basic information है. And majorly to regulate and maintain the harmonious relationship between the employers and the workers, and also promoting and supporting the legitimate interests of the employers, and collecting the information and disseminating the information among the employers, so that again they can make best use of that. एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी, ये सबके लिए भी ये बेसिकली ये फाउंड किया गया था, मेजरली स्टार्ट किया गया था. And here the correct option that fits into this is, it is an association of businesses, industries and employers committed to labor relations and policy advocacy. Basically it consists of individual workers, nahi. Its membership is restricted to government owned enterprise only, ऐसा भी नहीं है. Only multinational corporations, ऐसा भी नहीं है. So here C would be the best option for this question.
Moving on to our next question. NASSCOM was established in 1988. Okay, again with the objective of facilitating and promoting trade in a particular group. मैं वो बोलूँगी तो then you can answer it easily. Okay, it has been registered under the Indian Societies Act 1860. Which of the following best describes its primary role? Now, when we talk about NASSCOM, it is the National Association of Software and Services Companies. Okay, so it is related to the IT sector. Okay, and here it represents and supports IT and BPM companies through policy advocacy, trade development, and skill enhancement. So basically उस सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन से कंपनी से दे आर पार्ट ऑफ दिस. सो रेगुलेटिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स एंड नो. फंक्शनिंग एज ए गवर्नमेंट एजेंसी ओवरसीइंग आईटी सेक्टर, नो ये भी नहीं है. प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फाइनेंशियल, नो ऐसा भी नहीं है. सो इट रिप्रेजेंट्स एंड सपोर्ट्स दोज कंपनीज विच आर एसोसिएटेड टू द IT and BPM sectors. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following statements accurately reflect the key recommendations of the Second National Commission on Labour 2002 regarding the trade unions? ये लेबर कमीशन 2002 में अपने recommendations दिए थे and it was chaired by Ravindra Verma. Okay, now let's have a look at the statements. Only a union with at least 10% membership among workers of a unit can represent individual workers. Yes, this is very much true. This is what they have recommended. Workers who are not members of any trade union must pay an amount equal to the union subscription to a statutory welfare fund. क्योंकि उनको भी कुछ मेंबर भी नहीं है, तो if there is any requirement और कुछ प्रॉब्लम हुआ तो they can help them from this fund itself. That's the reason they have come up with this suggestion. So ये भी true है. Craft based or caste based union shall not be allowed to register. Yes, ये भी एक है. They said that it's not correct. Next, the check-off system should be compulsory for establishment with 300 or more workers and recognition should be based on it. Yes, this is also true. Actually, पहले 100 or more workers का है already. So here they said that okay, it should be 300 or more workers का. So ये भी true है. Recognition of any union should be valid for a period of 5 years. अभी 3 years का है, 2 years का है recognition, sorry 2 years का है. Now they said that as part of it 4 years का है. So it's not 5 years, they said they have recommended it for 4 years. So here this is not true, this is false. The Chief Labour Commissioner Central should verify union membership for representation in the national and international forums. Yes, that's very much true. ये already हो भी रहा है. So here only statements 1, 2, 3, 4 and 6 are correct. So A is the correct answer here. So friends, hope you have liked this session. Before winding up the session, I have a small announcement. Edutap ने अभी कुछ courses launch किए हैं exclusively for all those students who are targeting the upcoming UPSC EPFO exam for both APFC and EO 2025. So let's have a quick look at the courses. So first one है master course. ये उन बच्चों के लिए है जो अभी बिल्कुल preparation अपना start कर रहे हैं and they are looking at some one point source of information or content. So here in this course all the subjects का content आपको provide किया जाएगा in the form of PDFs, videos, a few live sessions wherever applicable, chapter quizzes, test, everything. Along with that every week Thursday के दिन कुलदीप सर आपसे exclusively online मिलेंगे and he'll take you through strategy on how to use all this content, क्योंकि बहुत ज़्यादा content है, how you can use that to the best of your exam preparation. Okay, so ये हो गया एक. नेक्स्ट आता है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा कोर्स नहीं चाहिए, बस कुछ सब्जेक्ट्स ही चाहिए उनको एंड एक्सक्लूसिवली एंड अलॉन्ग विद दैट कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस एंड ऑल दैट. ये उनके लिए है एक्सक्लूसिवली. ओके, एंड टेस्ट सीरीज ये उन बच्चों के लिए है जो पूरा प्रिपरेशन अपनी तरफ से कर लिया है बट नाउ दे आर लुकिंग आउट फॉर सम प्रैक्टिस MCQs और टू हैव अ रियल एग्जाम फील टाइप का मॉक टेस्ट एंड ऑल दैट टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा. सो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू एनी ऑफ द टीम मेंबर्स and all the details have been already provided in the description box. और अपना जो भी doubts you can get that clarified and look forward to take an informed decision associated with purchasing any of the courses. Okay.
I hope you like this session. Thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot. See you all in the next session very soon. All the best. Hello everyone, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which today we are going to see collective bargaining, which is one of the most important topic in industrial relations. See, when we talk about this series, we have launched this series so that you can have good number of practice questions as well as revision, because all the content that we are covering in this series will be in the form of MCQs. Okay, MCQs इसके बाद explanation, उससे आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रैक्टिस MCQs भी हो जाएंगे. एंड वाई लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, बिकॉज दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स व्हेन इट कम्स टू UPSC EPFO एग्जाम, बीट APFC पोस्ट के लिए हो या फिर AO और या EO के लिए हो, because close to 15 plus MCQs are asked from this topic out of 120, so you can understand the kind of weightage that it has and the kind of scoring potential, because even आप basics भी सही से practice करोगे तो definitely 10 plus questions आप आराम से कर पाओगे. So hope you really use this series for taking your preparation to the next level, and I suggest you to watch these sessions carefully or regularly so that आपका एक practice हो जाए. And moreover, we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So with this introduction, let me start today's session. So here comes the first question. Who is credited with using the term collective bargaining? And ये पहली बार यूज किया था 1891 में. Now collective bargaining मतलब collective, a group of people. Bargaining मतलब in this case, in this industrial relations, ये एक negotiation है between groups so that they can arrive at a mutual agreement. So overall अगर देखा जाए तो you can say that collective bargaining is an initial step in addressing as well as resolving various issues between the labor, that is the employees, and the employers, that is the management, so that एक industrial harmony को अपहेल्ड करे, मतलब एक सबसे पहले वो रखे. सो फॉर दैट दिस कलेक्टिव बार्गेनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज अ वॉलेंट्री एंड फॉर्मल प्रोसेस wherein both these parties engage in various negotiations pertaining to working conditions, terms and conditions of the employment, and thereby reach at an mutual agreement, so that जो भी इंडस्ट्रियल हार्मोनी है उसको बिल्कुल टॉप नॉच पे रखे. सो हियर व्हेन इट कम्स टू दिस इतना भारी वर्ड कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट, सो इसको फर्स्ट टाइम यूज किया था बेट्रिस वेब ने. Moving on to our next question. Now this is based on the key or chief characteristic features of collective bargaining. So which of the following statements correctly describe the key characteristics of collective bargaining? So let's have a quick look at the statements. So सबसे पहले statement बोल रहा है collective bargaining is a sequential process that begins with a list of demands followed by negotiations and ends with contract administration. and ये बहुत ट्रू है क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है सबसे पहले प्रॉब्लम, उसके बाद उसका लिस्ट ऑफ डिमांड्स जो भी आता है दैट दे विल पुट फॉरवर्ड फॉर दैट टू द मैनेजमेंट, फिर उसके बाद नेगोशिएशन होगा, नेगोशिएशन के बाद जो भी फाइनल कंक्लूजन होगा जो दोनों के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट पे होगा, दैट विल बी कमिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. सो ये ट्रू स्टेटमेंट है. It is a tripartite process involving workers, employees and the government. Collective bargaining. दो अगर जरूरत पड़ी तो definitely government भी आएगा, that is appropriate government in this case. But otherwise when we talk about collective bargaining, इसमें सिर्फ दो ही लोग और दो ही parties involved होंगे, that is the employers and the employees, that is workers and the management. And ये बहुत ही strictly बाईपार्टाइट प्रोसेस है, ये दोनों ही इसमें इन्वॉल्व होंगे मेजरली. सो हियर दिस इज नॉट ट्रू, ये फॉल्स स्टेटमेंट है. The primary objective of collective bargaining is to resolve the labor management issues through dialogue rather than strikes or coercive methods. Yes, this is very much true. That's why हमने पहले ही बोला था जो इंडस्ट्रियल हार्मोनी है वो सबसे ऊपर रहता है इसमें. So yes, this is very much true.
It is a collective activity where both workers and employers together they come act together in the negotiation process. And yes, this is also very much true. Obviously ये बिल्कुल opposite है second से. So वो हमने false बोला है तो this is true. Cooperation and mutual understanding between labor and management are essential for success of collective bargaining. Obviously दोनों तरफ से पहल होनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि एक ने बिल्कुल सारे डिमांड्स एक्सेप्ट किया या फिर एक ने बिल्कुल दूसरे के डिमांड्स एक्सेप्ट किया. इट्स नॉट लाइक दैट. दे हैव टू कम फॉर ए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग. सो फॉर विच दैट कोऑपरेशन एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इज वेरी मच एसेंशियल for this collective bargaining process to be a success. So ये भी very much true है. So here 1, 3, 4 and 5 are true. So here A is the correct answer. Okay. Moving on to our next question. Which of the following best defines productivity bargaining in the context of collective bargaining? See, when we talk about collective bargaining, इसका बहुत importance है not only in the lives or in the lives of the employees but employers as well. And when we talk about this productivity bargaining, it is a negotiation process where workers agree to enhance efficiency and productivity in exchange for better wages or working conditions. So ये बिल्कुल win-win situation है both employees and employers के लिए. And now that is what is called as productivity bargaining. They are improving the productivity by bargaining collectively, thereby arriving at a harmonious situation. So here A is the correct answer. बाकी statements भी एक बार देख लेते हैं. A bargaining approach where employees unilaterally decide productivity targets. No, ये नहीं है, false है. A conflict resolution method where disputes between the workers and management are settled through third party intervention. ये भी नहीं है. A negotiation strategy that focuses solely on reducing labor cost without considering. No, ये भी नहीं है. Okay, so relatively C थोड़ा सा हो सकता है कभी जरूरत पड़ी तो. Otherwise no, collective bargaining is a bipartite process. So सबसे अगर देखा जाए तो A would be best suitable for this question. So A is the correct answer here. Moving on to our next question. What is one of the primary outcomes of collective bargaining for workers? Workers के लिए क्या इसका outcome है? Increased conflict between employers and workers? No, actually ये कम हो जाता है क्योंकि mutual understanding and cooperation के through they are arriving at a solution, right? So ये false है. ग्रेटर मैनेजरियल कंट्रोल नहीं, एक्चुअली ये इक्वल स्टेटस दिलाता है. ओके, दैट एस्टैब्लिशेस अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन द एम्प्लॉयर्स एंड द वर्कर्स. सो दिस इज फॉल्स. रेड्यूस इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस इन नेगोशिएशंस. एक्चुअली ये यहाँ पे ज्यादा इनका वो रहता है इन ऑर्डर टू ब्रिंग आउट दैट अंडरस्टैंडिंग, दैट कोऑपरेशन एंड ऑल दैट, फॉर विच ट्रेड यूनियंस का बहुत हेल्प रहता है इसमें. सो ये भी फॉल्स है. एस्टैब्लिशमेंट ऑफ अ बैलेंस ऑफ पावर बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड workers ensuring equal status. बिल्कुल opposite है ना first से. So this second is से. So this is the right reason or the outcome of collective bargaining, especially for workers. So here D is the correct answer. Moving on to our next question. What is notable about the agreement between TISCO and Tata Workers Union in 1956? Now TISCO, that is Tata Iron and Steel Company Limited, and Tata Workers, they are of the same group, Tata Group. And when we talk about collective bargaining, they occur at various levels, like unit or plant level, और लाइक इंडस्ट्री लेवल, नेशनल लेवल, उस तरह से अलग अलग लेवल्स में ये होता है द नेगोशिएशंस, द कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिलेटेड टू कलेक्टिव बार्गेनिंग. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द एग्रीमेंट दैट हैज अकर्ड बिटवीन द टिस्को एंड टाटा वर्कर्स, ये एक यूनिट या प्लांट लेवल के नेगोशिएशन का रिजल्ट है, विच रिजल्टेड इन डिसेंट्रलाइज्ड एग्रीमेंट्स, एंड दिस इज कंसिडर्ड एज द पायोनियर, or you can say the first of its unit level agreement in India. जो collective bargaining हुआ है, that has happened here. So here different federations or same what you will say group है, but different units or plants. So they have
they have involved their respective federations at the company level or the plant level, involving representatives of unions, and they discussed on on the issues that have cropped up at that time, and they have come to an agreement. And this it has paved a way for the unit level agreements in India. And this, the importance of this is it was the first unit level agreement that has occurred in India when it comes to the collective bargaining under industrial relations. So यहाँ पे C is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following best describes the key characteristics of economy level bargaining? Now, when we talk about economy level bargaining, you can say that ये national level bargaining का ही एक extension है. Okay, and यहाँ पे the main objective is to fulfill the macroeconomic goals of the entire nation as such. So यहाँ पे जो भी collective bargaining होगा in whatever levels, that is individual workplaces to the national economy, वो that will try to fulfill the objective, okay, of whatever the negotiations that are being done, but focusing on the macroeconomic goals or the economic principles. So here when we talk about it, it is always a bipartite. No, when we talk about this economy level bargaining, सबसे ऊपर पड़ता है ये, and it can be bipartite or tripartite, involving the union confederations, employer associations and government agencies as well, to achieve macroeconomic goals. Yes, this is very much true. It focuses exclusively on resolving workplace disputes without considering, no, it has to take into consideration economic policies based on which the negotiation and the final outcome would be based. So this is false. It only applies to small enterprise, does not impact. No, ये सभी के लिए होगा. And yes, it has a impact on the national economic policies, hence ये economy level bargaining में आता है. So here when we talk about this, B is the correct answer in this case. So coming to the next question, here we are looking at the pre-bargaining stage. See, when we talk about the collective bargaining, there are वेरियस स्टेजेस, मेजरली 3 स्टेजेस. एक तो प्री बार्गेनिंग हो गया, एक तो बार्गेनिंग स्टेज हो गया जो जिसमें एक्चुअल नेगोशिएशंस होते हैं. प्री बार्गेनिंग क्या है? बोथ द एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉयर्स आर गेटिंग रेडी फॉर द कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रोसीजर्स. सो लास्ट में आता है अपना कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो फाइनल आउटकम जो है. सो हियर इन द प्री बार्गेनिंग स्टेज ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग, बोथ मैनेजमेंट एंड वर्कर्स अंडरटेक सिग्निफिकेंट प्रिपरेशंस. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली डिस्क्राइब दीज प्रिपरेशंस? सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? मैनेजमेंट केयरफुली स्टडीज द charter of demands and defines objectives such as improving productivity, production levels and worker relations etc. Yes, this is very much true, क्योंकि जब वो देखेंगे तो सबसे पहले उनका होगा कि if we fulfill these demands, उसका impact किस तरह से होगा, अगर नहीं करेंगे तो उसका impact किस तरह से होगा, या फिर बीच में कुछ है where we'll have a win-win situation. So उस एंगल में वो सोचते हैं. So based on that they prepare their arguments. Now, a negotiation team is formed, typically including HR managers, industrial relation experts, financial analysts and production heads. Yes, ये employer की तरफ से होता है, so that because overall impact क्या होगा, that they have to look into. So for that this is very much required. Workers must ensure that the charter of demands represents all categories of workers including women, skilled and unskilled labor. Yes, जब on the एम्प्लॉयज का किस तरह से है, दे हैव टू लुक इनटू जो भी कोई डिमांड कर रहे हैं, वॉट एवर दैट डिमांड दे आर डूइंग, इट शुड बी बेनिफिशियल फॉर ऑल द वर्कर्स. ओके, इट्स नॉट दैट कुछ सेक्शन ऑफ द वर्कर्स के लिए इंपॉर्टेंट यूजफुल रहेगा. सो यस, ये भी ट्रू है. Co-optation is a process where management and workers collaborate ethically to enhance bargaining outcomes. Actually, co-optation refers to the situation when the management tries to influence one or more of the union members by offering them promotion or other benefits in exchange for the information about the union strategies or for influencing the workers so that they can take undue advantage during the negotiation processes. So ये बिल्कुल अनएथिकल है एंड जनरली ये बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए एम्प्लॉयर्स को. But sometimes this also gets into
as they get murkier the politics, यहाँ हो भी जाता है कभी कभी, but otherwise this is completely false statement, ये होना ही नहीं चाहिए. Organizational bargaining refers to situations where negotiations occur within a worker body due to differences among the worker groups themselves. Yes, this is also very much true. कई बार हो जाता है, difference of opinion की वजह से हो जाता है, and this is true. So here only 4 is false. So 1, 2, 3 and 5. So here 1, 2, 3 and 5. A is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following best describes the nature of distributive bargaining in labor management negotiation? See, when we talk about collective bargaining, there are various types of collective bargaining, of which one of the types is distributive bargaining, which is also called as conjunctive bargaining. Okay, इसी को कंजंक्टिव बार्गेनिंग भी बोलते हैं. नाउ ये इसमें ये ऐसा बार्गेनिंग है, इट इज अ जीरो सम गेम, विन विन नहीं, विन लूज सिचुएशन है यहाँ पे. सो वेयर वन पार्टीज गेन कम्स एट द डायरेक्ट एक्सपेंस ऑफ द अदर, ऑफन लीडिंग टू स्ट्रेन्ड लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस. सो ये कई बार ऐसा होता है कि वहां पे कोई और ऑप्शन नहीं है अदर देन एक्सेप्टिंग टू द डिमांड्स ऑफ द वर्कर्स, और वर्कर्स को कोई और ऑप्शन नहीं रहता है कि मैनेजमेंट जो बोले वही करना है. ओके, सो दिस एक्चुअली समटाइम्स कैन ब्रीड मिसट्रस्ट एंड अनहेल्दी labor management relationships, manager relations as well. So but however उस तरह के जो bargaining होता है कभी कभी वैसे भी हो जाता है. So that kind of bargaining is called as distributive bargaining or conjunctive bargaining. So in this case it is B is the correct answer for distributive bargaining. Moving on to our next question. Which of the following best describes the integrative bargaining in labor management negotiations? इसको cooperative bargaining, okay, और interest based bargaining भी बोलते हैं. Okay, now ये है actually एक विन विन सिचुएशन टाइप का, rather than either one party losing out or only one party winning, और इसमें इस तरह से है दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होगा. ठीक है, दोनों का कुछ नुकसान नहीं होगा, अगर होगा भी तो दोनों का होगा, उस तरह से विन विन सिचुएशन फॉर ईदर. सो इट इज अ विन विन अप्रोच वेयर बोथ लेबर एंड मैनेजमेंट कोलैबोरेट टू फाइंड म्यूचुअली बेनिफिशियल सॉल्यूशंस सच एज इंक्रीज्ड जॉब सिक्योरिटी इन एक्सचेंज फॉर हायर प्रोडक्टिविटी एक्सेट्रा. ये एक एग्जांपल भी इसमें दे दिया है, यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है. सी फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयज बोलते हैं कि ओके we want job security. Okay, on the other hand management बोलता है okay काम करते हैं, we'll increase the working hours, okay, at the same cost, जो भी same wages है उसी पे करेंगे, but yes we will have job security. So win win situation, इनके लिए job security का वो हो गया और कंपनी को थोड़ा सा productivity, increased productivity मिल जाएगा at the same cost. So win win situation. So such kind of negotiations or bargaining, it's called as integrative bargaining or cooperative bargaining or interest based bargaining. So here C is the correct answer. See, there is a term attitudinal structuring that comes actually in collective bargaining. So what does the actually attitudinal structuring collective bargaining primarily aims at what? See, कई बार while negotiations कई बार ऐसा होता है कि create एक bitterness type का आता है because of the attitude. So attitudinal structuring is nothing but changing that kind of attitude and beliefs of both the workers and the management which they have already harbored. एक perception type का है that, and trying to create an environment of mutual trust. ओके, सो उस जो एटीट्यूड को चेंज कर रहे हैं, वी आर स्ट्रक्चरिंग दैट इज कॉल्ड एज एटीट्यूडनल स्ट्रक्चरिंग. जनरली ये दो सिचुएशंस में अप्लाई करना पड़ता है. एक तो पहला सिचुएशन है लूज लूज सिचुएशन. नाउ वेयर हियर दिस इज अ केस वेयर नन ऑफ द पार्टीज आर रेडी टू अकोमोडेट द इंटरेस्ट ऑफ द अदर पार्टी. ओके, एंड इन सच सिचुएशंस क्या होगा, नेगोशिएशन बिल्कुल डेड एंड पे आएगा एंड दोनों को कुछ फायदा नहीं होगा, दोनों का ही लॉस ही है. सो एक सिचुएशन है. दूसरा है व्हेन देयर इज विन लूज सिचुएशन.
ओके इसमें क्या है, एक पार्टी लूज हो रहा है, एक पार्टी बेनिफिट हो रहा है, इसकी वजह से एक बिटरनेस टाइप का भी आने के चांसेस है उसमें. सो इन सच केसेस वन कैन इन्वॉल्व दिस एटीट्यूडिनल स्ट्रक्चरिंग wherein this focuses only on economic factors. It changes the attitudes and beliefs of both the parties to foster mutual trust and cooperation, especially in situations of conflict or a deadlock. So उस तरह के negotiations जब होंगे, that leads to change in the attitude, thereby जो lose lose या win lose वाला है, that also can be changed to a win-win situation by applying this attitudinal structuring in collective bargaining. So this here in this case, D is the correct answer. So coming to the next principle of collective bargaining, which of the following best defines the principle of good faith bargaining? So in this, it requires both the parties to negotiate with the intent to reach an agreement, making honest attempts to resolve disputes while not being forced to accept any proposal or make undue concession. So बिल्कुल एक गुड फेथ में जैसे होता है, सो दोनों का बिल्कुल रेडीनेस होना चाहिए, बिल्कुल ओपन माइंड के साथ कि नेगोशिएशंस करें एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे वो लोग आए. ओके तो इसके लिए they should not compel the other party to bend down, all this happens only when they have that intent to reach an agreement positively. लेकिन कई बार ऐसा होता है कि this principle of good faith is violated. कब होता है ये? when one of the sides indulges in a surface bargaining, like I wash type का, मतलब अब हो रहा है एंड लेकिन बाद में, अभी के लिए हम लोग कर रहे हैं, बाद में वो इम्प्लीमेंट ही नहीं करे. ओके कुछ डिसीजन लिया है म्यूचुअल एग्रीमेंट पे, बट द डिसीजन दे वोंट बी इम्प्लीमेंटिंग दैट प्रॉपरली. सो उस तरह से है. और ईदर ऑफ द पार्टीज इन दे इंडल्ज इन द अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस ड्यूरिंग द नेगोशिएशन प्रोसेस, कि वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन लिया है, कोऑप्टेशन टाइप का कुछ कर दिया है एंड ऑल दैट. एंड तीसरा, एम्प्लॉयर ही रिफ्यूजेस, दे रिफ्यूज टू मीट द यूनियन रिप्रेजेंटेटिव्स एट ऑल, कोई डिस्कशन का स्कोप ही नहीं छोड़ रहे हैं वहां पे. ओके वो, या फिर एम्प्लॉयर बिल्कुल रिफ्यूज कर रहा है कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए यूनियन को, सो that information can be used for holding the discussions and negotiations. So इस तरह से कुछ भी होगा तो then they are violating the principle of good faith actually. But otherwise good faith में क्या है ना, as we have a good intent के साथ कोई भी problem हो उसको negotiate करना है and coming with a proper solution. So here A is the correct answer. So moving on to our next question. Contract administration is the collective bargaining process is crucial because, जैसे मैंने बताया है, when we talk about the steps of collective bargaining, सबसे पहले आता है प्री बार्गेनिंग, बार्गेनिंग इटसेल्फ जहां पे नेगोशिएशंस बिल्कुल हो जाते हैं, एंड देन कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन. कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? सी वंस एन एग्रीमेंट इज साइंड बिटवीन द ट्रेड यूनियन एंड द मैनेजमेंट, जो भी नेगोशिएशन होने के बाद, विच एक्चुअली इज कंसिडर्ड एज द final phase in the process of collective bargaining, and that is marked by this contract administration. That is, the parties they both जो भी साइन किया है उसको किस तरह से implement करना है, the entire process, everything falls under this actually. So here this contract administration ensures that the negotiated agreement is implemented effectively, grievances are addressed systematically, कि ऐसा नहीं है कि एक बार में अच्छे से implement हो जाए, कई बार grievances भी होते हैं, उसका भी इनके पास वो आंसर होना चाहिए कि किस तरह से वो एड्रेस करने वाले हैं. ओके एंड इंडस्ट्रियल हार्मोनी इज मेंटेन्ड थ्रू स्ट्रक्चर्ड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स. सो हियर कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सब कुछ ही होता है, मतलब कलेक्टिव बार्गेनिंग वाला जो मेन प्रोसेस जितना इंपॉर्टेंट है, कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वहां पे अगर कुछ डिसीजन हुआ है एंड दैट हैज टू बी इम्प्लीमेंटेड, सही तरह से इम्प्लीमेंट करना है विदाउट एनी ग्रीवेंसेस एंड ऑल दैट, तो डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत बड़ा रोल है उसमें. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. सो एक बार दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते हैं. टेलोस मैनेजमेंट टू री इंटरप्रेट कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स इन रिस्पॉन्स टू चेंजिंग बिजनेस कंडीशंस. नो, ये ऐसा नहीं होता, जो उन्होंने डिसाइड किया दैट ओनली will be final. अगर कुछ चेंज करना है तो अगेन दे हैव टू come to discussion and all that.
It primarily serves as a formality as most agreements remain self-executing. No, ऐसा कुछ नहीं है. They have to follow a proper protocol. सही तरह से करना पड़ेगा. तो ये false है. It gives a trade union unilateral authority to enforce the agreement even if certain conditions are impractical for. No, ऐसा कुछ नहीं है because they are coming to this no, जो भी decision होगा mutual agreement पे ही होगा. So obviously, so here B is the correct answer. So moving on to our next question, how does a strong legal and political framework contribute to the effectiveness of collective bargaining? So when we talk about this, जब भी कोई strong legal and political framework होगा, definitely that would help in contributing to the effectiveness of collective bargaining by establishing a structured approach to dispute resolution, ensuring that workers can negotiate through mechanisms like tripartite conferences, joint management councils, and grievance redressal, while also promoting mutual cooperation as emphasized in the Industrial Truce Resolution of 1962. This is very much true. ओके उसी तरह से करेंगे क्योंकि व्हेन वी टॉक अबाउट द अगर स्ट्रॉन्ग लीगल एंड पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है तो एक थर्ड पार्टी का भी इसमें आने के चांसेस हैं. दे हैव क्लियरली गिवन ट्राईपार्टाइट कॉन्फ्रेंसेस क्योंकि वहां से भी कुछ इनपुट्स मिलेंगे. ऐसा नहीं है कि डिसीजन प्रोसेस में उनका एक से रहेगा बट यस दे विल हैव इंडस्ट्री का या उस क्योंकि वो उनका जो ओवरव्यू है वो बहुत ही ब्रॉड रहता है. वी हैव ऑलरेडी सीन दैट क्योंकि पॉलिटिकल बैकग्राउंड के साथ एक्सटर्नल एम्प्लॉय इंटरनल एम्प्लॉय एंड ऑल दैट इन दैट वी हैव सीन. सो उनका एक व्यू बहुत एक 360 डिग्री व्यू यू कैन से इवन मोर देन दैट उस तरह से रहता है दैट दे कैन यूज हियर. सो डेफिनेटली दैट वुड हेल्प इन this resolution of the conflict, at the same time promoting mutual cooperation as emphasized in the इंडस्ट्रियल ट्रूथ रेजोल्यूशन क्योंकि इसमें ऑलरेडी सब कुछ मेंशन्ड है कि इस तरह से करना है. सो दे कांट एक अलग तरीके से या फिर एक किस गलत तरीके से वो नहीं कर सकते. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. दूसरे भी ऑप्शंस देख लेते हैं. बाय अलाउइंग एम्प्लॉयज टू डिक्टेट द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट यूनिलैटरल, ऐसा कुछ नहीं. ऑलवेज इट वुड बी बायलैटरली नॉट यूनिलैटरली. सो फॉल्स. बाय मेकिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग ऑप्शनल एंड अलाउइंग कंपनीज टू डिसाइड वेदर, नो कलेक्टिव बार्गेनिंग कंपल्सरी ऑप्शनल नहीं है. By enforcing rigid, no ये भी नहीं है. rigid labor laws तो क्या होता है फिर, that won't get that satisfied result in that. Okay, so here A is the correct answer. Why is an attitudinal framework crucial for successful collective bargaining? ओके सो यहाँ पे एक सपोर्टिव एटीट्यूड होना चाहिए फॉर नेगोशिएशंस फ्रॉम बोथ द केसेस, एम्प्लॉयर से भी एंड ट्रेड यूनियन से भी. ओनली देन दे विल बी एबल टू हैव अ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द कलेक्टिव बार्गेनिंग, राइट. सो बिकॉज अ रिजिड एंड हायरार्किकल मैनेजमेंट स्टाइल स्ट्रेंथेन्स द एम्प्लॉयर्स पोजीशन इन नेगोशिएशन, ensuring that workers comply with decision rather than challenging them. No, collective bargaining में दोनों का से रहता है. So this is false. Because negotiation should be adversarial in by nature, with each side focusing only on maximizing its own gains. No, they have to have win-win. दोनों का गेन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि अपना अपना देखा है. So this is also false. Because mutual trust, respect and workers' rights and a participative management style create an environment where negotiations are more constructive, increasing the chances of long-term industrial harmony and successful agreement implementation. So every step they have considered here. That's the reason attitudinal framework का बहुत crucial है क्योंकि दोनों का attitude उस तरह से होना चाहिए कि that they have to come out with a positive outcome. So this is very much true. Because trade unions must maintain a confrontational stance to secure the best possible terms for workers and flexibility in negotiations is a sign of weakness. ऐसा कुछ नहीं है. That actually is a sign of mutual understanding and to have that industrial harmony, and thereby जो decisions ले रहे हैं that also have to be implemented सही से. ऐसा नहीं कि ठीक है अब उस टाइम प्रेशर की वजह से they have said okay for that and उन्होंने continue कर दिया work, but अगर वो implement ही सही से नहीं हो रहे, so the entire process will go waste, right. So this is false. So here C is the correct answer. So how does the absence of statutory provisions of for trade union recognition impact collective bargaining in India? अगर statutory provisions ही नहीं है, okay,
सो किस तरह से कलेक्टिव बार्गेनिंग को इम्पैक्ट करेंगे. नाउ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट आई हैव टेकन फ्रॉम द रिकमेंडेशंस ऑफ द सेकेंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर जो 2002 में लॉन्च एस्टेब्लिश हुआ था. सो व्हाट दे हैड टू से वाज एक स्टैट्यूटरी प्रोविजंस होना चाहिए फॉर ट्रेड यूनियंस. व्हाई? बिकॉज अगर वो नहीं होंगे देन इट वुड वीकन द बार्गेनिंग पावर ऑफ द वर्कर्स एज एम्प्लॉयर्स कैन सेलेक्टिवली recognize unions that align with their interest, undermining the legitimacy of genuine worker representation and disrupting the collective bargaining process entirely. So ये compulsory है कि एक statutory provision होना चाहिए right to organize and collective bargaining या comprehensive industrial relations law etc. So that जो collective bargaining है that has to be held upright. सो यहाँ पे दूसरे ऑप्शंस भी देख लेते. इट स्ट्रेंथन्स इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी बाय अलाउइंग मल्टीपल यूनियंस टू नेगोशिएट इंडिपेंडेंटली. ऐसा कुछ नहीं है. दे हैव टू नेगोशिएट विद द एम्प्लॉयर्स इटसेल्फ एंड दैट टू मल्टीपल नहीं. अगेन दे हैव टू sit amicably, discuss amicably and come out with जो भी discussing parties है accordingly they have to discuss. It has no significant impact. No, it has, because अगर नहीं है तो collective bargaining तो हो ही नहीं सकता. सब कुछ one way होगा. So ये false है. It ensures a balanced negotiation process as employees have the discretion to choose trade unions that best represent their business interests. तो उनके हाथ में रह जाएगा which is not at all good for overall employees. सभी के लिए. कुछ लोग benefit हो सकते हैं employees में या फिर workers में, but everyone can't. So ये भी false है. So here B is the correct answer. So अगर absence हुआ है of any statutory provisions then that will lead to various problems. So how do the recommendations of the second National Commission on Labour 2002 aim to strengthen the collective bargaining in India? कई सारे उन्होंने बताया है and उसमें कुछ recommendations है to advocate for a comprehensive industrial relations law, strengthening the right to organize, ensure trade unions legitimate role in negotiations, that is collective bargaining themselves, and enabling the bonus determination through collective bargaining to make the process more structured and effective. So और भी इसको एक legitimate या फिर एक सही से structure देने के लिए they have said that they have to come up with an comprehensive industrial relations law जिसमें ये collective bargaining का एक बहुत ही ऊपर होना चाहिए, सबसे ऊपर होना चाहिए, because वहाँ directly management and the workers they can negotiate and come out with the best decisions, thereby impacting the both in a most positive manner and at the same time industrial harmony को भी वो maintain करे.
Hello everyone, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session and based on various topics. In this series, we are going to do MCQs on labor laws and industrial relations. Labor laws तो already हो गए हैं ना, we are doing industrial relations and उसमें आज हम लोग करने वाले हैं industrial discipline and grievance procedure and ये दो parts में करने वाले हैं हम लोग and ये part 1 है. Now when it comes to the syllabus, close to 15 plus questions are asked from these topics only, labor laws and industrial relations. So with this you can understand the kind of weightage and the potential that it has to score high, because क्योंकि जब बेसिक भी अगर आप सही से कवर कर लोगे ना तो आप आराम से 10 प्लस क्वेश्चंस तो क्लियर कर सकते हो. सो owing to that, this series has been started, and if you want to really score high in UPSC EPFO, be it APFC, ओके और ईओ और एग्जाम दोनों के लिए भी ये इम्पॉर्टेंट रहने वाला है एंड यू कैन स्कोर गुड बिकॉज वॉट एवर द कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर दैट वुड बी इन द फॉर्म ऑफ एमसीक्यूज. सो आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा एंड रिविजन भी हो जाएगा एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ यूपीएससी ईपीएफओ वेरी सून. सो होप you will utilize these sessions as per your requirement for your exam preparation. So the first question here comes, what is the purpose, primary purpose of industrial discipline in an organization? See, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी वर्क हो एज सच अगर कुछ कर रहे हैं तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स डिसिप्लिन, क्योंकि इफ दे वर्क नॉट वर्क टुगेदर और डिसिप्लिन में नहीं है, सही से रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं कर रहे, तो ऑब्वियसली द एंड गोल उसको रीच करना बहुत मुश्किल है. सो हियर इन दिस केस इंडस्ट्रियल डिसिप्लिन ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन, वेर इन डिसिप्लिन रेफर्स टू, अगर टेक्निकली देखा जाए तो इट रेफर्स टू industrial discipline. It refers to the process of systematically conducting the business by the organizational members by regulating their behavior in according to the established rules and regulations of the organization. So उसी के basis पे ये चलेगा. So yes, here the primary purpose is to regulate the employee behavior in accordance with the established rules and norms. यहाँ पे C आंसर है. To punish employees for non-compliance नहीं, they try to रेगुलेट द एम्प्लॉय सो दैट वो रूल्स ब्रेक ही नहीं करे बाद में. ऑल दैट वुड बी द प्राइमरी पर्पस तो यही है. टू प्रमोट, ये फॉल्स है. टू प्रमोट ए कल्चर ऑफ क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन, नो, दिस इसका अलग है. टू क्रिएट एम्प्लॉय टर्नओवर एंड रिड्यूस ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ये भी नहीं है. सो हियर सी इज द करेक्ट ऑप्शन. So moving on to our next question, how does the concept of discipline in an organization impact employee behavior and workplace culture? So now when we talk about डिसिप्लिन, उसके दो ब्रॉड एस्पेक्ट्स है, एक तो पॉजिटिव डिसिप्लिन, एक तो नेगेटिव डिसिप्लिन. पॉजिटिव डिसिप्लिन क्या है, without any punitive actions, if discipline is there, then it will create a positive atmosphere. So here the employees, they willingly conform to the establishment's rules and regulations and simply without much strictness teamwork अच्छे से हो जाता है यहाँ पे and everyone helps voluntarily. Okay, and that comes by म्यूचुअल एग्रीमेंट या म्यूचुअल जो कोऑपरेशन है उसके थ्रू आता है. ना नेगेटिव डिसिप्लिन दूसरा, ये थोड़ा सा ट्रेडिशनल अप्रोच है जहाँ पे सोचते हैं कि एक ये रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल गेट द पनिशमेंट, ये पनिशमेंट मिलेगा. सो इन द फियर ऑफ दैट पनिशमेंट द ऑर्गेनाइजेशन फील्स दैट द एम्प्लॉयज विल फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशन, बट समवेयर एक नेगेटिविटी टाइप का आ जाता है एंड देर वॉन्ट बी मच फ्रेंडलियर एटमोसफियर देर, एक मैनेजमेंट एम्प्लॉय टाइप का रहता है. सो हियर इन दिस केस व्हेन वी टॉक अबाउट दीज टू, by fostering an environment where positive discipline encourages voluntary adherence to the rules through motivation and rewards rather than punishments, यहाँ पे rewards and appreciation इसके through वो काम निकालते हैं. And while negative discipline relies on fear based enforcement, often leading to mixed outcomes depending on organizational culture. So in this case B is the correct answer.
Moving on to our next question. Which of the following statements best explains the underlying causes of workplace indiscipline? Workplace में indiscipline क्यों होता है first place में? जब everything is good, then why? See, कई बार ऐसा होता है कि जो दिखता है वैसा होता नहीं है, लाइक अनफेयर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हो सकते हैं, जैसे किसी के लिए बहुत अच्छे से पेमेंट हो रहा है सेम पोस्ट के लिए, किसी का नहीं हो रहा है एंड उसका कोई ग्रीवेंस सुनने वाला ही नहीं है, लाइक कोई पॉलिसीज है जहाँ पे कोई क्लियर रूल्स नहीं है मिनिमम वेज पे एंड वॉट एवर दैट इज ऑल्सो नॉट बीइंग फॉलोड बिकॉज ऑफ ट्रेड यूनियन में पोलिटिसाइजेशन की वजह से हो सकता है, या फिर वीक लीडरशिप की वजह से हो सकता है, या फिर प्रॉपर कोड ऑफ कॉन्डक्ट है ही नहीं यहाँ पे, एंड कम्युनिकेशन बैरियर से सही से प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आ रहा है, मीन बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कम्युनिकेट बिकॉज ऑफ द जो भी हायरार्की है वो सही से नहीं है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस दैट actually are the underlying causes of workplace indiscipline rather than directly. So एक बार options देख लेते हैं. Indiscipline in an organization arises only due to weak leadership. As a strong leader can single-handedly ensure, ऐसा नहीं होता है, कई सारे other reasons होते हैं, ये false है. Workplace indiscipline occurs primarily due to employees' unwillingness to follow rules and external factors like policies. ऐसा नहीं है. Okay, if everything is in place, definitely they have to follow. अगर नहीं है तो definitely that would be 1 or 2 persons only, not the entire work force. So definitely ये भी false है. The main cause of workplace indiscipline in strict enforcement of rules and excessive organizational control. ऐसा भी नहीं है, एक reason नहीं है, ये कई सारे reason है and majorly they're all interconnected. So like your indiscipline is often a result of multiple interconnected factors including unfair management practices, lack of clear code of conduct, communication barriers, politicized trade unions, all of which contribute to workplace disorders including weak leadership. ओके ऐसा नहीं कि एक ही रीजन की वजह से होता है, वन लीड्स टू अनदर. ओके सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. Which of the following scenarios best exemplifies the misconduct as per Schedule 1 of the Industrial Employment Standards or Standing Orders Act 1946? Now, अभी हमने बताया है कि discipline, okay, they have to follow the discipline. Now, which kind of conduct will, say that they are not following discipline, they are not following that, okay, misconduct. So कुछ ऐसे उन्होंने मेंशन किया है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट 1946 कि ऐसे ऐसे करेंगे तो that will fall under misconduct and that would attract the punishment, fine, whatever that has been mentioned. Okay, so here सबसे पहले willful insubordination और disobedience, जो उसका बॉस बोल रहा है वो नहीं करना है. दूसरा theft, fraud, dishonesty like bribery लेना etc. or damaging, willful damage to the goods or the property of the organization in which they are working, वही bribes लेना or giving bribes to get the work done, all these fall under the same. And habitual absence, बार बार छुट्टी लेना and without leave के लिए अप्लाई करना and without leave also for more than 10 days, तो वो misconduct में ही आ जाएगा and accordingly they have to take the punishment या जो भी है. Habitual late attendance without informing, habitual breach of any law, जो भी laws मेंशन किया गया है बाय द एस्टैब्लिशमेंट, जानबूझ के उसको वायलेट करना, या फिर रूड बिहेवियर, ओके, और जो बॉस है अपना सुपरवाइजर है उनका बात नहीं मानना है व्हेन इट कम्स टू द काइंड ऑफ वर्क, वॉट एवर द ड्यूटीज दैट पर्सन हैज टू डिस्चार्ज, हैबिचुअल नेग्लिजेंस और नेग्लेक्ट एट वर्क इवन आफ्टर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग बट स्टिल डूइंग द सेम थिंग. एंड फ्रीक्वेंट, बार बार रिपीटेड अफेंडर्स भी होते हैं, कई बार एक बार वार्निंग देने के बाद भी फिर वही काम करते हैं. सो ऐसे चीज़ों में देन दे हैव मैक्सिमम 2% ऑफ द वेजेस दे कैन डिडक्ट एज ए फाइन, वो भी कर सकते हैं. ये सारे मेंशन है अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट एक्ट. सो एक बार देख लेते हैं. एन एम्प्लॉय रिफ्यूजेस टू वर्क ओवर टाइम बियॉन्ड द शेड्यूल डिस्पाइट अ मैनेजर्स रिक्वेस्ट, नहीं ये नहीं आ सकता क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिक्वेस्ट किया, अकॉर्डिंगली दैट विल हैपन. ऐसा नहीं कि कोई जोर जबरदस्ती कर रहे हैं. अ वर्कर इज एब्सेंट विदाउट लीव फॉर ए सिंगल डे ड्यू टू एन इमरजेंसी बट इन्फॉर्म्स द सुपरवाइजर लेटर, सो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओनली 10 days के ऊपर विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन, दैट वुड बी कॉल्ड फॉर मिसकॉन्डक्ट. एन एम्प्लॉय रिपीटेडली अराइव्स लेट टू वर्क एंड इग्नोर्स मल्टीपल वार्निंग्स फ्रॉम द मैनेजमेंट, ये है बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मिसकॉन्डक्ट.
A trade union leader organizes a lawful protest outside the company premises after obtaining necessary approvals. अगर necessary approvals के बिना करेंगे तो definitely that will be called for misconduct, but here no. So here C is the correct answer. अप्लाइड क्वेश्चंस, अब ये ऐसा टॉपिक है जहाँ पे जितने आप अप्लाइड क्वेश्चंस करोगे दैट नो उतना आप समझ पाएंगे कि नो इट वुड बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. सो आई हैव पुट लॉट ऑफ अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चंस इन दिस पार्ट्स. Ravi, an employee of XYZ Limited, has a habit of using his phone during working hours despite repeated warnings from the management. Due to his continuous disregard for company policies, the employer decides to impose a fine which is deducted from his salary every month. According to the Industrial Employment Standing Orders Act 1946, what is the maximum fine that can be imposed on Ravi? अभी हमने देखा था what is that? It is 2% of his monthly wages. जिस month में उनको लग रहा है कि he has done he has violated or he had disregarded the policies of the company, definitely for that month they can deduct the wages as a fine, and here B is the correct answer. Moving on to our next question. Okay, an IAS officer, Mr. Sharma, is accused of corruption and misuse of power. Following the principles of handling indiscipline, what is the correct course of action under Article 311 of the Constitution of India? Now, what is this Article 311 of Constitution of India? Now, here, if any person of who is a member of the civil services of the union or on all India service or a civil service of a state, the person cannot be dismissed until and unless जो भी charges उन पे लगे हैं for which the person is given a reasonable opportunity to explain. Okay, only then some disciplinary action would be taken based on the based on the proceeding, based on the necessity, based on the outcome of that the explanation and the inquiry that has been done. So here in this case, Mr. Sharma must be given a fair inquiry and an opportunity to defend himself before any penalty is imposed. 311 Article 311 of the Constitution यही कहता है. ठीक है, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. ऐसा नहीं कि डायरेक्टली उनको सर्विसेज से रिमूव कर सकते हैं. फर्स्ट द प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से इंक्वायरी, फेयर इंक्वायरी, ओके, द एनी पर्सन एक फेयर इंक्वायरी करना चाहिए एंड देन एन अपॉर्चुनिटी, स्पेशली in this case. So here B is the correct answer. So coming to the next question, an employee in a public sector undertaking is accused of financial misconduct. The management decides to terminate the employee without conducting any inquiry or allowing them to present their defense. उनका खुद का जो भी explanation है. Now, which principle of natural justice is being violated in this case? See, when we talk about disciplinary actions, be it in PSUs or in private sector, they have to follow few principles. One of those principles is the principle of natural justice, that is, which is founded in equity, in honesty and right. Okay, in सही सेंस में देखा जाए तो, and the principle of this natural justice firmly grounded in articles 14, 21 and 311 of the constitutions, wherein there are two major ingredients of natural justice. एक हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे, दूसरा दूसरे क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. दोनों इंग्रेडिएंट्स व्हेन इट कम्स टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जहाँ पे इक्विटीज एंड इक्विटी, ऑनेस्टी एंड राइट, सही काम और सही तरीके से. So when we talk about that here, which is that principle, which is that ingredient of natural justice that is being violated in this case? So here in this case, D, odi alteram partem, the right to be heard before being condemned. मतलब उनको explanation देने का चांस ही नहीं दे रहे हैं. अगर हो सकता है उनसे अनजाने में हुआ है, या फिर someone might have place them in that position, whatever might be. So until unless we hear their explanation, it's not final. So here one of those जो ingredients या process जो बोलते हैं, that is odi alteram partem, that is a right to be heard before being condemned. Okay, so here D is the correct answer.
अब नेचुरल जस्टिस का जो दूसरा इंग्रेडिएंट हो इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे. अ सीनियर मैनेजर इन ए प्राइवेट कंपनी इज accused of favoritism in hiring. The company appoints the same manager's close friend as the head of the inquiry committee. Okay, now this raises concerns about impartiality. Now which principle of natural justice is most at risk in this situation? See here, nemo judex in casua sua. No one should be a judge in their own case. So always ऐसे cases में एक impartial person should be made as a judge, so that सही मायने में हम जजमेंट मिले. Okay, so here is the correct answer. So nemo judex in causa sua and audi alteram partem, ये दोनों ही प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस के दो मेजर इंग्रेडिएंट्स है. Now moving on to our next question. In a government department, two employees A and B were found guilty of the same misconduct under identical circumstances. Circumstances भी almost similar थे. However, employee A was given only a warning, while employee B was dismissed from the service. Now this situation violates which key disciplinary principle? Disciplinary principle में first one हमने देखा है principle of natural justice. अब second आता है principle of impartiality or consistency. That is, identical cases should have consistent actions. ऐसा नहीं कि एक के लिए एक तरह दूसरे के लिए दूसरी तरह होना चाहिए. So वही वहां दिख रहा है कि partiality दिखाई जा रही है. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. A senior manager in a public sector organization discovers that an employee Raj has committed a serious violation of company policy. During the disciplinary proceedings, the manager frequently makes sarcastic remarks about Raj's mistake and expresses dissatisfaction in punishing him. Okay, now this behavior violates which fundamental principle of disciplinary action? Now here we are going to look at the third principle of disciplinary action, and that is principle of impersonality. Disciplinary action should be free from personal emotions or biases. तो पहले से उनके एक perception है, so because of which he keeps on repeating that, saying that he has done this, he has done that, etc. So here it is B, that is the correct answer in this case. Moving on to our next question. In the disciplinary procedure, the preliminary inquiry report plays a crucial role in determining the next steps. What is the primary purpose of this preliminary inquiry report? Now, जो भी कंप्लेंट या फिर ऑफिसर है या फिर जो भी सुपरवाइजरी ऑफिसर है, दे आर द वंस हु विल क्रिएट द प्रिलिमिनरी इंक्वायरी रिपोर्ट. ओके, कुछ प्रॉब्लम, कुछ डिसिप्लिन इनडिसिप्लिन टाइप का हुआ है या फिर मिसकॉन्डक्ट हुआ है. ओके, नाउ बेस्ड ऑन द ग्रेविटी ऑफ what that has mentioned in that report, accordingly they will take the action की चार्जशीट फाइल करना है उनके ऊपर. मतलब उसके बेसिस पे अगेन इंक्वायरी एक टीम बैठेगा एंड दे विल ऑल डू द रिस्पेक्टिव इंक्वायरी एक्सेट्रा, बेस्ड ऑन विच पनिशमेंट या जो भी एक्शन लेना है वो ले सकते हैं और एक वार्निंग दे के छोड़ सकते हैं. ओके, सो दिस अ मेजर व्हाट यू विल से purpose or objective of this particular preliminary inquiry report. So here in this case, to evaluate whether the complaint has sufficient merit to warrant a formal charge sheet or disciplinary proceedings. दोनों में से किस तरह से करना है on the charged officer, that is जिसके ऊपर ये complaint आया है. Okay, so this is here B is the correct answer. Now applied question on the same. During the preliminary inquiry into allegations of workplace misconduct, the inquiry officer finds that the accused employee's actions were of minor magnitude and did not cause significant harm to the organization. Okay, according to the proper disciplinary procedure, what would be the most appropriate course of action? क्या उसको अभी decision लेना है? 1. Proceed with a formal charge sheet and disciplinary hearing to ensure strict compliance with the rules. माइनर है, जब भी माइनर मिसकॉन्डक्ट होता है इतना चार्जशीट वो सब फाइल करने की जरूरत नहीं होती है.
So false. Ignore the complaint entirely as minor offences do not require any response. No, response required, but not to the tune of option A. So or to the tune of option B की बिल्कुल छोड़ दे. So this is also false. Recommend immediate suspension of the employee to deter future violations. No, ये भी नहीं है, इतना भी strict नहीं है. So they have to provide an oral or written warning to the employee, ensuring they understand the expected code of conduct from them based on the whatever that mistake that the person has done. So here C is the correct answer, because this is what the disciplinary procedure says under complaint and preliminary inquiry. Moving on to our next question. Rajiv, a senior manager in a public sector company, is accused of leaking confidential information to the competitors. Now the company initiates a disciplinary procedure beginning with a preliminary inquiry. After finding sufficient grounds, a charge sheet is issued. Now इस केस में grievance प्रॉब्लम थी एंड प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में उनको पता चला कि उनको प्रूफ मिल गया कि यस द पर्सन हैज कमिटेड द मिस्टेक. So here based on that charge sheet has been issued and his explanation is sought. Charge sheet में क्या है, that would be sent and explanation is sought from the charged officer. Okay, Rajiv is then placed under suspension while the inquiry proceeds. Now based on the standing disciplinary procedure, what is the next logical step in this process? Okay, now ये सब हो गया है. Now here in this case they have to conduct a formal inquiry with an impartial committee to ensure Rajiv gets a fair chance to defend himself before any punitive decision is made. Obviously जो हमारे article 14, 21 and article 311 of the article 311 of the constitution, they all say the same thing. We have to give fair chance to the person before कितना भी बड़ा इंडियन जुडिशियल सिस्टम ही वैसा है, कितना भी बड़ा मिस्टेक किया हो किसी पर्सन ने, अनटिल अनलेस वी हियर देयर एक्सप्लेनेशन देयर फ्रॉम देम एक जो भी पनिशमेंट है उसे डिसाइड नहीं किया जाता है. ओके, वो फेयरली उसमें मेंशन्ड है ही आर्टिकल्स 14, 21 एंड 311 में. सो हियर इन दिस केस बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ अभी हमने बोला है कि चार्जशीट इश्यू करना पड़ता है अगर उनको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी में पता चला कि गलती हुई है. नाउ दिस चार्जशीट कैन बी इश्यूड बाय द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द अथॉरिटी हायर देन द अपॉइंटिंग अथॉरिटी और द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी और बाय एन अथॉरिटी सीनियर इन रैंक टू द कंसर्न्ड एम्प्लॉयर. उनसे नीचे नहीं, ओके, उनसे ऊपर जो व्हाट यू विल से जो चार्ज्ड ऑफिसर है उनके ऊपर के जो पोजीशन सीनियर है वही उस पर्टिकुलर अथॉरिटी में रह सकते हैं. ठीक है, एंड हियर वी आर सेइंग चार्ज शीट फाइल करना है. सो व्हाट इज द अदर नेम फॉर दिस चार्ज शीट? सो ये व्हाट इज अदर नेम फॉर ए चार्ज शीट? एज इट प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द एम्प्लॉय टू रेस्पॉन्ड टू द चार्जेस. So here this is also called as show cause notice. They have to show the cause, okay, or the explanation for the notice that is being served to them. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Amit, an employee in a government organization, receives a charge sheet for alleged financial irregularities. In response, he submits a written explanation claiming that the discrepancies were due to a clerical error and provides a supporting evidence as well. Now, the disciplinary authority reviews his explanation. Now, which of the following actions best aligns with the principles of the disciplinary procedures? Now, what does the principle say? It says that अगर explanation satisfactory है, then the DA, जो भी disciplinary authority है, who is always to be above the as a senior to the charged officer, they can withdraw the charge sheet. अगर नहीं satisfied है तो definitely they can go for a formal inquiry जहाँ पे फिर एक टीम रहेगा, they will inquire properly and all that and come with a conclusion जो भी डायरेक्शन है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. उसका ये नहीं कि immediately impose a penalty. No, he can't. The DA dismisses Amit from the service without further consideration. No. The DA ignores Amit's explanation and proceeds with an inquiry. No. Until and unless is not satisfied. उसके लिए भी इनको रीजन देना पड़ेगा. नहीं, ये इन्होंने बोला है but that doesn't sit well with the proof that we have got. उस तरह से they have to mention only then he can go ahead. ऐसा नहीं कि without reason they can go ahead. So here C is the correct answer.
So hope friends you have liked this session. Before winding up the session, I have a small announcement. Currently Edutap is offering various courses targeting for all the students who are targeting the upcoming UPSC EPFO, both APFC and EOR AO examinations 2025. So इसमें 3 तरह के कोर्सेज उन्होंने लॉन्च किया है. सबसे पहला कोर्स आता है मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो बिल्कुल वन पॉइंट सोर्स से उनको पूरा कंटेंट मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए कंटेंट एक्सेट्रा चाहिए. So यहाँ पे the entire content is provided to you in the form of PDFs, videos, chapter quizzes, live classes, हर तरीके से टेस्ट एक्सेट्रा एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड. along with that every week on Thursday कुलदीप सर will be meeting you online एंड वो आपको पूरा ये जितना भी कंटेंट है उसको किस तरह से स्ट्रैटेजिकली आप अपने प्रिपरेशन के लिए किस तरह से यूज कर सकते हैं वो समझाएंगे. along with that आपके जो भी क्वेरीज है वो he'll be looking into that. एंड सेकेंड कोर्स हमारा आता है टेस्ट सीरीज प्लस. ना इसमें कई सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें एक आधे सब्जेक्ट से चाहिए, बाकी हम लोग खुद कर लेंगे एंड हमें खूब सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए टेस्ट प्रैक्टिस करने के लिए. नाउ दिस इज बेस्ट फॉर देम क्योंकि इसमें आपको जो सब्जेक्ट्स है वो आपको मिलेंगे along with the टेस्ट सीरीज फॉर प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ ऑल द क्वेश्चंस. तीसरा कोर्स है बिल्कुल टेस्ट सीरीज, मतलब इसमें कोई कंटेंट एज सच पीडीएफ वीडियो से सब नहीं मिलेंगे, बट यू विल हैव the test practice questions and real exam feel वाले mock test and all that. and this best suits for those उनका preparation खुद से उन्होंने कर लिया या फिर एक बार एग्जाम दे दिया है एंड फिर से रिपीट कर रहे हैं. now they don't want to go for any other course but yes they do want lot of practice questions and mock tests. उनके लिए ये the best है. and based on your requirement you can make an informed decision. अगर आपको कुछ queries है तो आप टीम से पूछ सकते हैं. all the details have been already provided in the description box. Thank you very, very much for being with me so patiently and a very all the best and meet you all soon with the next part soon. Hello everyone, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination wherein we'll be doing 15 MCQs in a session as part of which आज हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस. उसमें टॉपिक है वेजेस जिसका पार्ट 1 हमने ऑलरेडी कर लिया है एंड इन दिस सेशन विल बी डूइंग पार्ट 2. Now why is this series important? When it comes to the number of questions that are asked from labor laws and industrial relations in the UPSC EPFO exam, be it APFC, दो पोस्ट के लिए है ना, जो APFC है या A और EO के लिए, दोनों के लिए भी out of 120 questions 15 plus questions इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाई वेटेज कितना है इनका. एंड मोर ओवर अगर आप बेसिक्स भी बहुत सही से कर लोगे इन टॉपिक्स का यू विल बी एबल टू आंसर 10 प्लस तो आप इजीली सॉल्व कर पाओगे. ओके बहुत इजीली. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेटेज दैट इट कैरीज नाउ. सो these topics are very important and in order if you want to score more you can go through these sessions regularly so that आप जो भी content हम इसमें पढ़ा रहे हैं that you can utilize for your preparation. and also we are doing that in the form of MCQs. so आपका एक रिविजन भी हो जाएगा एंड प्रिपरेशन भी हो जाएगा मतलब प्रैक्टिस क्वेश्चंस के साथ. सो एंड ऑल्सो वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO 2025 वेरी सून. सो I suggest you to utilize these sessions as part of your exam preparation. So without wasting much time, let's start today's session. So here comes the first question. Which article of the Indian Constitution mandates the state to ensure equal pay for equal work for both men and women? अगर ये देखा जाए तो this is article 39 that says that article 39 says that men या women दोनों के लिए equal pay होना चाहिए. Okay, one second. Yes. Okay, article 39 है. And there is one act also, the Equal Remuneration Act 1976, which gives effect to this constitutional provision, that is article 39. ठीक है. So here C is the correct answer. Moving on to our next question. Under the Plantations Labor Act 1951, an employer is required to provide suitable rooms for children of women workers if the number of women workers employed is at least, okay,
अगर नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉयर्स इससे ज़्यादा है तो डेफिनेटली दे हैव टू प्रोवाइड विद सूटेबल रूम्स फॉर द चिल्ड्रन ऑफ वुमेन वर्कर्स. अगर चिल्ड्रन एंड वुमेन मिलके ग्रेटर दैन 20 होंगे देन ऑल्सो इट्स द सेम, बट अदरवाइज वुमेन वर्कर्स जहाँ पे भी 50 प्लस है then they have to go for provision of suitable rooms. अगर children and women मिलके 20 plus है, even then in either of the cases they have to provide suitable rooms for the children. So here B is the correct answer. Moving on to our next question, there are various theory of wages, किस तरह से देना है. So here which of the following situations best illustrates the subsistence theory of wages. Now what is this subsistence theory? ये propose किया था डेविड रिकार्डो ने. Now it states that the price of the labor, that is the wages, the जो labor के लिए pay करना है, that would be depends on the कि कितना उसको मतलब जीने के लिए चाहिए. subsistence अभी के लिए, subsistence itself means बस अभी जीने के लिए चाहिए. So that much they have, उतना minimum wage उनको pay करना चाहिए. ओके, दैट शुड बी द वेज. एक्चुअली ये अभी कम्प्लीटली आउटडेटेड है, क्योंकि सिर्फ वेज नहीं, वो ब्रेड अर्नर है फैमिली के लिए, तो उनकी फैमिली का भी हमें देखना पड़ेगा. दैट ऑल्सो हैज़ टू बी काउंटेड इनटू कई सारी चीज़ें. सो दिस इज कम्प्लीटली आउटडेटेड नाउ. सो हियर इन दिस केस व्हेन वी लुक एट द वेरियस थियरीज और द सिचुएशंस दैट हैव बीन मेंशन्ड हियर एज ऑप्शंस, उसमें सबसे ज़्यादा ये डेवलपिंग नेशन सेट्स अ मिनिमम वेज that only covers basic necessities leading to fluctuations in workforce participation based on wage levels. ये सबसे जो सिचुएशन है जो subsistence theory के बहुत करीब दिख रहा है. So here B is the correct answer. बाकी भी देख लेते एक बार. country implements universal basic income program. ये सब citizens के लिए जो काम कर रहे हैं उनके लिए है. So this is no. A multinational corporation increases wages significantly, no. A strong trade union negotiates higher wages and benefits, improving job, ये भी नहीं. So this is the one, the situation that best suits with the subsistence theory of wages. Now comes the next question, which of the following scenarios best reflects the wages fund theory. Now ये क्या है? This theory was proposed by J.S. Mill and इसमें majorly क्या बोलते हैं कि जनरली इफ वी हैव ए फंड जहाँ पे वेजेस उसमें से पे करते हैं, सो ऑब्वियसली वो एक फिक्स्ड अमाउंट है, राइट. सो उस फंड में से व्हेन वी आर पेइंग वेजेस फॉर वेरियस कंपोनेंट्स, अगर हम एक कंपोनेंट का वेज अगर इंक्रीज करना है, सो व्हाट विल हैपन, इट विल इम्पैक्ट द अदर सेक्टर. वहाँ के वेज कम करेंगे बिकॉज ये तो फिक्स्ड कंपोनेंट है जिस फंड से हम लोग मनी ले रहे हैं. सो दैट काइंड ऑफ थियरी, ये जनरली अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के लिए जहाँ पे कैपिटल की कमी है या इन्वेस्टमेंट की कमी है, देर दिस थियरी इज फॉलोड. अदरवाइज ये भी आउटडेटेड ही है. एंड अगर सारे ऑप्शंस देखेंगे तो हियर अ कंट्री विथ लिमिटेड कैपिटल सीज वेज इंक्रीज इन वन सेक्टर but due to trade unions efforts, but wages in other sectors decline as a result of this fixed wage fund. ये बिल्कुल फिट बैठता है, ठीक है. ये सी इज द करेक्ट आंसर हियर. बाकी भी देख लेते. गवर्नमेंट इंक्रीज द मिनिमम वेज अक्रॉस ऑल इंडस्ट्रीज, नहीं. हायर एम्प्लॉयमेंट रेट्स, ये नहीं. A company raises wages for its employees by reinvesting its profit, no, because ये fixed fund है. A multinational corporation expands operations creating new jobs increasing wage levels, नहीं, ये भी नहीं. ये सबसे सही सिनेरियो है जो यहाँ पे बिल्कुल फिट बैठता है. So C is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following scenarios best illustrates the purchasing power parity theory in action? See what is purchasing power parity theory. कीन्स ने इसको कंसिडर किया था डिटर्मिनेशन ऑफ वेज रेट फ्रॉम ए मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू. सो इसमें क्या है, एज अगर फॉर एग्जाम्पल वेज रेट्स इंक्रीज किया है, सो ऑब्वियसली द परचेजिंग पावर ऑफ द लेबर विल इंक्रीज. नाउ जब वो इंक्रीज हुआ है उसका मतलब डिमांड इंक्रीज हो रहा है. नाउ डिमांड इंक्रीज हो रहे तो ऑब्वियसली सप्लाई को भी हमें इंक्रीज करना पड़ेगा. नाउ सप्लाई को इंक्रीज करना पड़ेगा मतलब ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी. अगर ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करना पड़ा मतलब मोर पीपल टू बी एम्प्लॉयड. ओके, अगेन इट्स अ सर्कल दैट गोस ऑन. अगर वही उन्होंने कम सैलरी कम कर दिया मतलब परचेजिंग पावर पैरिटी कम हो जाएगा, उनका जो खरीदने का जो है, उससे क्या है डिमांड कम हो जाएगा, फिर सप्लाई कम हो जाएगा. सो ऑल again impacted in both the ways. So in this case जो scenarios है ये बहुत सबसे सही फिट बैठता है. गवर्नमेंट reduces the minimum wage leading to decrease the consumer spending and lower overall the demand in the country.
सो उस तरह से ये सही है, ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी ऑप्शंस भी देख लेते हैं। कंट्री इंप्लीमेंट्स टैक्स कट्स फॉर हायर इनकम अर्नर्स इंक्रीजिंग देयर सेविंग्स बट हैविंग मिनिमल इम्पैक्ट। नो, ये इम्पैक्ट करता है डिमांड को, सप्लाई डिमांड को। ए कंपनी ऑटोमेट्स प्रोडक्शन रिड्यूसिंग इट वर्कफोर्स बट द प्राइसेस ऑफ गुड्स रिमेन अनचेंज्ड। A nation devalues its currency making imports expensive but domestic production remains unaffected. इससे भी कुछ वो नहीं है, that is not impacting the power parity of a labor or the people. So here A is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following scenarios best reflects the residual claimant theory of wages? The name itself suggests residual क्लेम करना है एज अ सैलरी और द वेजेस। दिस वाज गिवन प्रपोज बाय वॉकर। इसमें क्या है, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, सो व्हाट दिस थियरी सेज दैट किस तरह से वेजेस डिस्ट्रीब्यूट करना है। सबसे पहले जो उसका रेंट है या फिर बाकी जो भी खर्चे हैं, इंटरेस्ट है, ओवरड्यू हेड्स, ऑल दैट दे हैव टू फुलफिल, एंड जो भी बच रहा है दैट हैज टू बी पेड एज वेजेस। ओके, सो दिस इज व्हाट द थियरी सेज। एक्चुअली कई सारे इकोनॉमिक्स बोलते हैं ये भी एक सही तरीका है, बिकॉज उससे वॉट एवर द लेफ्ट दैट इज दैट विल बी पेड टू द मैन। मोर ओवर अगर एफिशिएंसी बढ़ेगा तो उनको ज्यादा मिलेगा, एक मोटिवेशन फैक्टर आ जाएगा वहां पे। सो हियर दिस इज व्हाट दिस थियरी सेज। सो यहाँ पे जितने भी सिचुएशंस, लेट्स सी, कंपनी पेज फिक्स्ड सैलरीज नहीं होते यहाँ पे। A business distributes wages to workers only after covering rent, interest payments, and shareholders' profits. Yes, this is very much true. Okay, and a government sets minimum wage, ensuring no the base salary होता नहीं है. So an employer increases wages based on the industry standards rather than company earnings. No. So as and when company के earnings बढ़ रहे हैं या फिर efficiency बढ़ रहा है, obviously that will automatically add that all that to the wages. So here B is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following scenarios best illustrates the marginal productivity theory of wages? Now this was associated और जिन्होंने इसको प्रोफाउंड किया था, दैट इज जॉन बेट्स क्लार्क, उन्होंने इस थियरी को प्रोफाउंड किया था। एंड उसके बाद लेटर इट वाज डेवलप्ड बाय मार्शल, जेवॉन्स, वालेस, वेरियस इकोनॉमिस्ट्स, दे हैव एडेड देयर कंट्रीब्यूशन टू दिस, एंड फाइनली अभी जो डिस्कस करने वाले हैं दैट हैज बीन अराइव्ड एट। नाउ एज पर दिस मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थियरी, जो लेबर का डिमांड है दैट इज डिटरमाइंड बाय द वैल्यू ऑफ आउटपुट दैट हैज बीन जनरेटेड बाय द एडिशनल वर्कर। सो जो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो डेवलप हो रहा, दैट इज एडिशनल एम्प्लॉयर या एडिशनल वर्कर से जो भी जनरेट हो रहा है, okay, that based on that extra output only the wages for that person would be decided. Okay, so where others all other factors of production being constant, only the unit of labor जो भी increase हो रहा है उसके accordingly the wages would be paid. Okay, so here जो हम लोग यहाँ पे सिचुएशंस देख रहे हैं, लेट्स लुक एट दिस। अ कंपनी इंक्रीजेस ऑल एम्प्लॉयज सैलरीज इक्वली रिगार्डलेस ऑफ their productivity. No. A factory has an additional worker and pays them based on the extra output they generate. This is very much true for this marginal product. ना जितना वो additional, जैसे marginal productivity का एक इकोनॉमिक्स में एक थियरी है ना, उसी के बेसिस पे as on when we keep adding जो भी उसका output मिलेगा, for that only they'll be providing the wages. A government mandated minimum wages business to pay fixed salaries to workers. No. A firm decides to pay higher wages to employees based on the years of experience rather than their output. No, ये भी नहीं है. So here in this case for marginal productivity of theory, this is the best option, that is B. Which of the following scenarios best illustrates the bargaining theory of wages? Now bargaining theory of wages ने propose किया था जॉन डेविडसन ने। Now what does this say here? This theory says that the wage determination is based on the negotiation skills among the जो यूनियन है and the management. दोनों को चाहिए कि जो प्रॉफिट्स मिले हैं उसमें सबसे बड़ा शेयर मिले, बट अगेन बोथ ऑफ दे नो कि अगर यूनियन स्ट्राइक पे गई तो मैनेजमेंट को कितना नुकसान होगा, यूनियन को भी ये भी पता है कि अगर यूनियन खुद स्ट्राइक पे गई तो उनको कितना नुकसान होगा। सो बेस्ड ऑन ऑल दिस, कीपिंग एवरीथिंग इन व्यू, जब वो डिस्कस करके नेगोशिएट करके व्हेन दे फाइनली अराइव एट सम फाइनल पे,
such kind of wage determination is that falls under bargaining theory of wages. So here एक बार options देख लेते हैं. A company sets fixed wages without any negotiations. No. A government agency enforces uniform wage structure across industry. यहाँ पे भी negotiations तो हो ही नहीं रहे. No. A labor union negotiates with management for higher wages and the final pay is determined based on the bargaining power of both the sides. Yes, this is very much true. Okay, an employer pays wages solely based on the employee's education qualification without considering negotiations. ये भी नहीं है. So here this theory says that जिसका जितना bargaining power होगा उतना वो उसके हिसाब से wages decide होंगे. So here C is the correct answer. Coming to the next question, which of the following scenarios best illustrates the efficiency wage theory? Actually एक hypothesis भी माना जाता है and the term efficiency wages it was coined by the noted economist Alfred Marshall. उन्होंने coin किया था. Now what does this say? Now this says that when अगर आप जब भी irrespective of the profits and all that you are earning, अगर आप हायर जो मार्केट इंडस्ट्री का जो एवरेज सैलरी से उससे ज़्यादा अगर पे कर रहे हैं एम्प्लॉयज़ को, डेफिनेटली दैट वुड ऐड टू देयर मोटिवेशन एंड देयर बाय दे विल कंट्रीब्यूट मोर टू द ऑर्गेनाइजेशन. देयर बाय जितना आप लोग एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं उससे ज़्यादा वो प्रोडक्टिविटी दिखाएंगे. ओके, सो ऑल दिस बॉइल्स डाउन टू द मोटिवेशन एंड ऑल दैट. एंड ये एक थियरी है जो से दैट एक्चुअली majority of the जो economists बोलते हैं this is one of the best actually. Okay, but still again first they have to invest वो wages वो सब देना. सो हियर इससे क्या होता है, एक तो एब्सेंटिज्म कम हो जाएगा, हाईली स्किल्ड लेबर भी आने लगेगा क्योंकि यहाँ तो इंडस्ट्री एवरेज से अच्छे सैलरीज मिल रहे करके, एंड दैट ऑल विल लीड टू द ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन द एफिशिएंसी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर लेट्स सी क्या क्या है. ए कंपनी पेज मिनिमम वेजेस टू ऑल टू मैक्सिमाइज बेनिफिट्स. नो. अ कंपनी पेज वेजेस solely based on the year's experience without considering the performance. No. A business reduces wages to cut costs leading to higher employment. No. A firm offers higher than average salaries to its workers to boost motivation, productivity, etc. Yes, क्योंकि based on their experience, based on their work, all that they'll consider, and moreover एक morale बढ़ाने के लिए they give this. So here D is the correct option in this case. Moving on to our next question, which of the following scenarios best illustrates the demand and supply theory of wages? The title itself suggests कि जिस पोस्ट का और जिस स्किल अगर डिमांड में है तो ऑब्वियसली अगर उसका सप्लाई कम है तो ज़्यादा सैलरी देके हम लोग करते हैं, राइट. अगर लेकिन ये जनरली टेक्निकल या टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जब बात है, अभी एआई एंड मशीन लर्निंग का बहुत आ रहा है. सो अभी कई सारे एड्स भी आपको देखने को मिल रहे होंगे कि जिसका एआई में अच्छे से नॉलेज है एंड दे नो हाउ टू यूज दैट एंड ऑल दैट, दे आर एबल टू गेट गुड सैलरीज बिकॉज उनका अभी सप्लाई कम है मार्केट में. वी आर स्टिल पीपल आर स्टिल अपडेटिंग देयर स्किल्स, राइट. सो वही अगर स्पेशली अनस्किल्ड वाले हैं, सो ऑलरेडी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, डिमांड अभी कम है उनके लिए, सो ऑब्वियसली उनके जो वेजेस है वो कम हो सकते हैं. सो ऑल दिस जो डिमांड एंड सप्लाई के बेसिस पे जो रिक्वायरमेंट है एंड एट द सेम टाइम द नंबर ऑफ वर्कफोर्स एट डिस्पोजल, ये सब डिपेंड करता है. सो हियर इन दिस केस अ बिजनेस like a company increases wages for software developers due to rising demand for tech skills, ये बिल्कुल ट्रू है. A government sets fixed minimum wages regardless of market conditions, ये नहीं है. An employer pays workers the same wage every year ignoring market fluctuations, नहीं. they have to play, जैसे वहाँ पे demand बढ़ रहा है तो obviously in order to retain them, okay, they have to. So a business offers salaries based on own seniority without considering labor market trends. No, ये ट्रेंड्स के हिसाब से चलता है, स्किल्स के हिसाब से चलता है, अभी मार्केट में किस तरह से. So here A is the correct answer. Yes. Moving on to our next question. The National Policy on Child Labour 1987 introduced a three-pronged strategy to combat child labour in India. Which of the following is not one of its key approaches? So एक बार देख लेते. Legislative action to prohibit child labor in hazardous conditions. Yes, this is very much true क्योंकि जो Child Labor Prohibition and Regulation Act है 1986, it prohibits the engagement of children
below 14 years in 18 occupations and 65 processes, and also to regulate the conditions of work of children, and children मतलब young age 15 and to 18 years वालों को मैं बता रही हूँ यहाँ पे. So that they have done. So this is very much true. Legislative action इन्होंने लिया है, and as part of that जो अभी मैंने act बताया है, that they have implemented. Developmental programs aimed at rehabilitating child laborers and providing alternate livelihoods. Yes, this is also they have been doing. जहाँ पे भी child labor जब they get, definitely they look into this. Awareness campaigns to sensitize society on the ill effects of child labor. Okay, ये भी ये लोग कर रहे हैं. Along with that कई सारे constitutional उनको provisions है, like your article 21A right to education, जो free education देता है for all those children between 6 to 14 years. Okay, so that वो labor में जाने से पहले they can go for education. And determined by the law. Article 24 बोलता है कि it prohibits employment of children below the age of 14 in any factory or mine or any hazardous occupation. ये एक इन्होंने प्रोविजन दिया है. तो तीसरा है आर्टिकल 39E states that the health and strength of the workers, men and women, and the tender age children are not to be abused, and they should not be forced in any economic necessity so that उसकी वजह से जो जॉब करना पड़े या फिर कुछ काम करना पड़े. So all these provisions have been made already. Okay. नेक्स्ट आता है फोकस ऑन यूनिवर्सलाइजिंग हायर एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन ऑफ लेबरर्स अबव 14 ईयर्स ऑफ. ये नहीं है, 6 to 14 ईयर्स तक एजुकेशन का है फ्री, सो वो है. एंड अबव दैट जो अभी हमने डिफरेंट आर्टिकल्स अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड डिफरेंट एक्ट्स जो बीइंग इम्प्लीमेंटेड है बिकॉज टू प्रमोट दिस बिल्कुल कॉम्बैटिंग चाइल्ड लेबर, ये सब कर रहे हैं. सो हियर ऑल दीज आर देयर बट दिस इज नॉट हियर, सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question, how does Article 21A of the Indian Constitution contribute to the prevention of the child labor? अभी हमने डिस्कस किया था in the last question की किस तरह से they are doing, right? हमने options में सिर्फ simple statements दिए थे कि they are doing this, they are doing that. How they are doing, that we have already discussed. As part of which हमने Article 21A भी देखा था. How they are doing? By mandating free and compulsory education for children aged 6 to 14 years, reducing their engagement in labor. So here A is the correct answer. So moving on to our next question. Which commission was the first to recommend the setting up of a wage board in India? See, 1931 में एक कमीशन आया था, commission on the labor, and they are the ones, this commission was for the first time they recommended for setting up of a wage board, and that commission is none other than Whitley Commission on Labor. And उनका recommendation आने के बाद yes government has looked into that, but कब ये मटेरियलाइज हुआ है? ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 ईयर प्लान सबसे पहला वेज बोर्ड हमने इस्टेब्लिश किया है. वो क्या है हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे. सो मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट वेज बोर्ड इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड फॉर व्हाट इंडस्ट्री वाज द फर्स्ट वेज बोर्ड सेटअप? सो द फर्स्ट वेज बोर्ड ऑफ इंडिया वाज सेटअप इन 1957. दो फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ही ये डिस्कस हुआ था एंड ऑल दैट, बट वो सब होते होते 1957 में हुआ था, एंड इट वाज फॉर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, एंड इसका नाम उस टाइम पे दिया गया था सेंट्रल वेज बोर्ड. ओके, सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question, consider the following statements regarding the structure and appointment process of a wage board in India. Let's have look at the statements. A wage board is a tripartite in structure consisting of a chairperson, representative of employers and employees, and 2 independent members. Yes, this is very much true. इसी तरह से रहता है. The chairman and the wage board is appointed by the appropriate government in consultation with the Chief Justice of the High Court concerned or the Supreme Court of India. ये भी true है. A member of parliament is mandatorily nominated to represent consumers on the wage board. No, ये mandatory नहीं है. Okay, जहाँ पे भी requirement है, only then they look into that. So here only 1 and 2 are the correct options. So here 1 and 2, that is A is the correct answer.
So I hope you really like this session. Before winding up, a small announcement. Edutap is currently offering various courses, especially for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, be it APFC or E or AO. तो इसमें 3 तरह के courses majorly they have launched. One है मास्टर कोर्स जो 1 पॉइंट सोर्स होगा आपके लिए हर सब्जेक्ट, हर कंटेंट के लिए, in the form of PDF, videos, chapter quizzes, everything, and along with that every Thursday कुलदीप सर एक strategy session लेंगे to guide you on how to utilize that enormous content that has been provided as part of this course. Along with that जो भी आपके queries है वो सब resolve करेंगे. दूसरा है and ये दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस है. ये उन बच्चों के लिए है जो मेजरली दे आर लुकिंग आउट फॉर एक सिंगल सब्जेक्ट एंड कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हमें, बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेंगे, उस तरह के बच्चों के लिए है ये. ओके एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज, मतलब ये ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दिया होगा या फिर कंप्लीटली अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं बट दे नीड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन और रियल एग्जाम फेल होने के लिए कुछ मॉक टेस्ट टाइप का. फॉर दैट दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम मेंबर्स. बाकी सब डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. Okay, and with this I'm winding up this session. Thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot and all the best. See you all in the next session very soon. Thank you. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO exam, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which in this session we are going to see industrial relations, workers' participation in management. Okay, now when it comes to this series, this is very important for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, given the fact that labor laws and industrial relations is one of the most important topic when it comes to UPSC EPFO exam, be it APFC और A और EO दोनों पोस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि out of 120 questions 15 plus questions are asked from these topics only. So you can understand the kind of high weightage that it has, मतलब good number of questions that it has. Now even if you know basics भी आप सही से अच्छे से रिवाइज कर लोगे, सही से आप पढ़ लोगे, तो यू विल बी एबल टू क्लियर 10 क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाओगे. सो विद दैट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ वेटेज इट हैज़ गॉट. सो ऑल ओवर में अगर आप सही से इसको कर लेंगे तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू स्कोर वेल. सो आई सजेस्ट यू टू गो थ्रू दिस सेशंस रेगुलरली सो दैट आपका एक रिवीजन भी हो जाए एंड प्रैक्टिस भी हो जाए, क्योंकि जो भी कंटेंट हम इसमें करने वाले हैं ऑल दैट वी आर डूइंग इन द फॉर्म ऑफ MCQs ओनली. ठीक है. एंड दूसरा, मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द UPSC EPFO 2025 notification very soon, so this is going to help you in your exam preparation. So with this, let me start today's session. Moving on to the first question. सबसे पहला क्वेश्चन, हाउ डज वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कॉन्ट्रीब्यूट टू इंडस्ट्रियल पीस. किस तरह से वो इंडस्ट्रियल हार्मनी को ज़्यादा करता है. बाय रिड्यूसिंग वेजेस एंड इंक्रीजिंग द वर्कलोड, नो, फिर तो वो होगा ही नहीं. बाय लिमिटिंग कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज एंड मैनेजमेंट, नो, एक्चुअली इनफैक्ट इंक्रीजिंग द कम्युनिकेशन दैट विल हेल्प देम अ लॉट. बाय डिस्करेजिंग एम्प्लॉय इन्वॉल्वमेंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, नो, मैनेजमेंट में अगर वो पार्टिसिपेट करे तो ऑब्वियसली दे विल बी इन्वॉल्व इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग एज वेल, ये भी नहीं है. बाय गिविंग वर्कर्स स्टेक इन डिसीजन मेकिंग, फोस्टिंग ए सेंस ऑफ वैल्यू एंड रिस्पेक्ट, दिस विल लीड टू कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रियल पीस और harmony. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following is an example of direct participation as per the International Labour Organization? As per the International Labour Organization, there are two kinds of participation. एक तो direct है, एक तो indirect है. Now direct मतलब क्या है? Here the name itself suggests कि एम्प्लॉयज़ डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर रहे हैं इन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस या फिर प्रॉब्लम recognizing and then solutions as well. So here employees participate in team meetings to discuss production challenges and propose solutions. सब कुछ एक साथ ही डिस्कस करेंगे. So ये B is the correct answer. बाकी भी वो देख लेते हैं ऑप्शन. A trade union negotiates wages on behalf of employees with the management.
नहीं. A company's board of directors make strategic decisions without workers involvement, ये भी नहीं, क्योंकि वो इन्वॉल्व हो रहे हैं. यहाँ पे इनडायरेक्टली हो रहा है, सो ये डायरेक्ट वाला नहीं है. द HR डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट्स न्यू पॉलिसीज विदाउट कंसल्टिंग एम्प्लॉयज, ये भी नहीं है. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question, which of the following scenarios best represents indirect or representative participation as per the International Labour Organization? So simple, indirect या फिर representative participation. So they are selecting someone to represent their issues and discuss with the management. So simpler term जो union type का होता है, that will come into place here. So एक बार options देख लेते हैं. A group of employees votes to elect representatives who will negotiate workplace policies with the management. Very much true है. The management unilaterally decides without, नहीं. A company conducts an employee survey, so directly उनसे feedback ले रहा है, ये भी नहीं. इंडिविजुअल वर्कर्स डायरेक्टली सजेस्ट, अगेन डायरेक्ट वाला जो पहले क्वेश्चन में, जो इससे पहले हमने क्वेश्चन डिस्कस किया था, डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन, उसमें ये आता है. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. Which of the following best illustrates financial participation as per the International Labour Organization? Now when we look at it, financial participation, so company के जो profits है उनका किस तरह से इनको मिल रहा है and all that. And here जितने भी ऑप्शन है यहाँ पे एक बार देख लेते हैं. रिटेल फर्म प्रोवाइड्स एनुअल बोनसेस बेस्ड ऑन कंपनीज प्रॉफिट्स एंड इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस. सो हियर दे आर मेकिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेट फाइनेंशियली. सो हियर जो कंपनी के प्रॉफिट्स है वो डिस्ट्रीब्यूट करे. सो दिस इज वेरी मच ट्रू इन दिस केस. मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अलाउज एम्प्लॉयज टू इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव्स फॉर वर्क प्लेस नेगोशिएशंस. नो, बिकॉज फाइनेंशियली कुछ इन्वॉल्वमेंट नहीं है. अ कंपनी ऑर्गेनाइजेस रेगुलर मीटिंग्स वेयर एम्प्लॉयज कैन सजेस्ट, ये भी नहीं है. अ हेल्थ केयर कंपनी कंडक्ट्स, ये भी नहीं है. सो हियर दिस ए इज द करेक्ट ऑप्शन हियर. So coming to the next question, as per Amartya Sen's classification of workers' participation, which of the following best describes real participation? Now when we look at the classification of workers' participation as given by Amartya Sen, ये तीन तरह का है. Okay, एक तो है superficial participation, दूसरा है इंटरमीडिएट पार्टिसिपेशन, तीसरा है रियल पार्टिसिपेशन. सुपरफिशियल पार्टिसिपेशन में क्या है, वो कहीं पे भी डायरेक्टली नहीं करेंगे, जैसे कि कोई सर्वे टाइप का है. ओके, एंड एनोनिमस लाइक बॉक्स सिस्टम टाइप का है. आपको जो भी सजेशन है, जो भी प्रॉब्लम्स है, वो बोलेंगे कि उस बॉक्स सिस्टम में आप उसमें डाल दीजिए. देयर बाय दैट विल गेट टू द मैनेजमेंट, दे लुक इनटू दैट एंड सी व्हाट दे कैन डू ऑन दैट. ओके, ये हो गया हमारा सुपरफिशियल, बिल्कुल ज्यादा कुछ ना के बराबर कह सकते हो, क्योंकि देयर इज नथिंग, नो से ऑफ द एम्प्लॉय इन दिस. सेकेंड आता है इंटरमीडिएट. नाउ इंटरमीडिएट में क्या है, रादर देन दे गेटिंग डायरेक्टली इन्वॉल्व, वो किसी के थ्रू करते हैं, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्रू यूनियंस एक्सेट्रा. सो एक रिप्रेजेंटेटिव होता है, डायरेक्टली नहीं, बस ये सब उस यूनियन के मेंबर्स को बोलते हैं, दे विल गो एंड नेगोशिएट विद द मैनेजमेंट. तो ये इंटरमीडिएट हो गया. तीसरा आता है रियल पार्टिसिपेशन. एक्चुअली here employees actively form part of various teams, committees, etc., and they'll participate in some unrestricted consultations, and thereby जो भी decisions लेना है उन सब में वो participate करते हैं. So here with all these options, C, that is employees are actively involved in unrestricted consultations and co-determination on both strategic and operational decisions within the enterprise, ये सही है. एक बार बाकी options भी देख लेते हैं. Employees are allowed to submit anonymous suggestions, ये actually superficial participation में आता है. Workers engage in collective bargaining, ये आता है intermediate वाले में. Workers are informed about company policy and changes but do not have any direct influence, ये एक्चुअली सुपरफिशियल टाइप का ही समझ सकते हो. एक्चुअली इसमें कुछ भी, देयर इज नो जीरो से एक्चुअली ऑफ द एम्प्लॉयज. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question, which of the following statements best describes a quality circle? Now quality circle क्या है, एक्चुअली इट इज ए पार्टिसिपेटिव मैनेजमेंट टेक्निक, जहाँ पे स्मॉल टीम्स जनरली ऑफ 6 to 12 मेंबर्स वो सब मिलके आते हैं. दिस इज अगेन वॉलेंट्री. ओके, एंड देन दे विल कम टुगेदर एंड जो भी उनके प्रॉब्लम्स है, all that they'll discuss and accordingly arrive at the solution for those problems. ये पहले सबसे पहले जापान में
आया था. Okay, now here of all that mandatory committee, no mandatory नहीं है. Trade union led group that negotiates, no actually voluntary group है जो they'll come together. Okay, a government regulated body ये भी नहीं है. A participative management technique where small team of employees voluntary identify and solve quality and performance related issues, ये true है. So here in this case B is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following statements about stock ownership as a method of worker participation is correct? Stock ownership allows workers to become shareholders, increasing their control over the industry. Yes, this is very much true. यही है. Employee stock options plan was first introduced in India by TCS. ये TCS ने नहीं, Infosys ने किया था. ठीक है. एंड सबसे पहले वर्ल्ड में ESOPs वाला प्लान जो आया था, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान, ये यूएस में हुआ था. ठीक है. पब्लिक सेक्टर कंपनीज इन इंडिया आर नॉट अलाउड टू इम्प्लीमेंट ESOPs, ऐसा कुछ भी नहीं है. सबसे पहले इन्फोसिस ने लॉन्च किया, उसके बाद सबसे पहले PSU जो ESOPs का प्लान लॉन्च किया था वो है NALCO, दैट इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड. सो ये यहाँ पे इट फर्स्ट पायनियर्ड इन US, नो डाउट. ओके, बट दिस इज ऑफ इंडियन PSU which has launched for the first time. So here A is the correct answer of all the options. So here we are looking at the levels of workers' participation in management. At which level of workers' participation in management do employees engage in decision making through bodies like industrial committees and wage boards? So if you look at the level, सबसे पहले international level, ऊपर से नीचे आते हैं. तो सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल, यहाँ पे इंटरनेशनल लेवल कॉन्फ्रेंसेज या सेमिनार्स जो कंडक्ट करके डिस्कस करते हैं, लाइक योर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन एक्सेट्रा. उसके बाद आता है नेशनल लेवल. नेशनल लेवल पे जो ट्राइपार्टाइट बॉडीज होते हैं एंड ऑल दैट विल कम इनटू पिक्चर. ओके, उसके बाद आता है रीजनल लेवल. नाउ हियर स्टेट लेबर एडवाइजरी बोर्ड्स एक्सेट्रा, दैट रीजनल लेवल पे जो वर्कर्स पार्टिसिपेशन होता है वो आते हैं. उसके बाद आता है इंडस्ट्रियल लेवल. इंडस्ट्रियल लेवल पे आते हैं कई सारे डिफरेंट तरह के इंडस्ट्रियल कमिटीज, वेज बोर्ड्स एक्सेट्रा. उसके बाद आता है यूनिट और एंटरप्राइज लेवल. यहाँ पे जो कलेक्टिव बार्गेनिंग करने के लिए जो यूनियंस होते हैं और वर्क्स कमिटीज एक्सेट्रा, दे आर मेड सो दैट वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट कैन हैपन. ओके, ये डिफरेंट लेवल्स. तो इसमें जो इंडस्ट्रियल कमिटीज एंड वेज बोर्ड्स है, दैट विल फॉल अंडर द इंडस्ट्री लेवल workers participation in management. So here C is the correct answer. Moving on to our next question, which constitutional amendment led to the introduction of Article 43A emphasizing the workers participation in management through mechanisms like shop councils, joint councils etc. से 1975 में पहली बार गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च किया था रिलेटेड टू शॉप काउंसिल्स एंड जॉइंट काउंसिल्स. Majorly this would be applicable to all those enterprises, manufacturing and mining where employing 500 or more people. Okay, in the public, private, cooperative sector, irrespective of the joint consultative machineries. So इससे क्या होगा, based on these shop councils and joint councils, the labor, the employees, the workers, they can participate in the management by organizing these councils, shop councils, joint councils, जैसे works committee etc. ठीक है. now ये आया है, so that now this has to be introduced into the constitution. तो उसकी वजह से, वो स्कीम की वजह से, in the same year Article 43A was amended and this was introduced, which was form of the directive state principles जो होते directive principles of state policy, उसमें उन्होंने amendment किया so that there is a legal mechanism for shop councils and joint councils to be established in various establishments so that workers participation in management can be done. So ये हुआ था वन सेकेंड, ये हुआ था हमारा 42nd अमेंडमेंट 1976 में. 1975 में वो सब डिस्कशंस वो सब होने के बाद 1976 में ये हुआ था. सो हियर A is the correct answer. Moving on to our next question, what is the primary function of a shop council in an industrial unit? जो shop floor area होता है या फिर जहाँ पे major work जो होता है, there in with that workers etc, this has to be constituted. And when we talk about shop councils, majorly they assist the management in achieving the production targets and improving the efficiency. तो इसमें जो चेयरमैन होता है वो मैनेजमेंट करती है, मतलब डिप्लॉय करती है.
एंड जो वाइस चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं इस शॉप काउंसिल को, वो एम्प्लॉयज़ वर्कर्स की तरफ से आते हैं एंड एटलीस्ट 2 years इसको वर्क करना पड़ेगा एंड मंथली वंस डेफिनेटली दे हैव टू मीट फॉर डिस्कसिंग ऑन वेरियस इश्यूज एंड इसमें जो बाकी मेंबर्स होते हैं इट हैज़ टू बी equal representation from the management and the workers. Okay, so here in this case B is the correct answer. Moving on to our next question, what's the key function of a joint council at the plant level? Yes, plant level पे, floor level पे हमने देखा है कि shop council है. Now when we look at the plant level थोड़ा सा higher, वहाँ पे joint councils होते हैं and ये joint councils में again chairman को management decide करती है, nominate करती है and vice chairman को वर्कर्स मेंबर्स डिसाइड करते हैं एंड इनको एटलीस्ट 3 months में एक बार मिलना पड़ेगा and majorly they'll be focusing on the discussions associated with production efficiency, safety measures, working conditions, जो भी issues है वो सब वहाँ पे वो discuss करेंगे. So that again all this to improve or to increase the workers' participation in management, thereby leading to industrial peace. So here C is the correct answer. So moving on to our next question. As per section 3(2) of the Industrial Disputes Act 1947, what is the primary objective of a works committee? Now section 3(1) बोलता है of the Industrial Disputes Act, it provides for the setting up of the works committee. जहाँ पे भी 100 से ज़्यादा वर्कमैन है वहाँ पे वर्क्स कमेटी होना ज़रूरी है. एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, जहाँ पे भी वर्क्स कमेटी होगा उसमें मैक्सिमम 20 मेंबर्स होना चाहिए एंड इन दैट देयर शुड बी इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द वर्कमैन. And section 3(2) of the Industrial Disputes Act 1947 says this is to secure and preserve amity and good relations between the employer and the workman. Negotiation नहीं, to enforce labor laws नहीं, to represent workers in legal disputes against, ये भी नहीं है. This is the right answer. B is the right answer here. What is the primary role of a worker director in an enterprise? जहाँ पे भी वर्कर डायरेक्ट है मेजरली उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर प्राइमरी रोल ये होता है टू रिप्रेजेंट द वर्कर इंटरेस्ट एट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेवल एंड फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट. दिस इज द प्राइमरी रोल ऑफ द वर्कर डायरेक्टर ऑफ एनी एंटरप्राइज. Moving on to our next question, what is the primary objective of the joint consultative machinery established in 1966? Now joint consultative machinery as it has been given in the question 1966 में ही establish हुआ था by the government on the basis of recommendations of the second pay commission which was constituted in 1959. अब इनको कहाँ से मिला था ये, मतलब
कहीं से तो देखा था, ये यूके में विटली काउंसिल्स करके होते हैं, जहाँ पे टैक्स एज ए प्लेटफॉर्म फॉर कंस्ट्रक्टिव डायलॉग्स बिटवीन द वर्कर्स एंड द मैनेजमेंट उन्होंने किया था। ऑन द सेम लाइंस जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी भी इंडिया में लॉन्च किया गया था। नाउ दिस इज नॉन स्टैट्यूटरी एंड म्यूचुअली एग्रीड अपॉन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड एम्प्लॉयज, दे हैव कम अप विद दिस। ये 3 टियर का होता है, ऑफिस लेवल, डिपार्टमेंट लेवल, नेशनल लेवल। एंड जॉइंट कंसल्टेटिव मिशनरीज जनरली ये वंस इन 4 मंथ्स मीट करते रहते हैं एंड अकॉर्डिंगली दे कीप ऑन डिस्कसिंग और दे पेव द वे for discussion between the workers and the management so that dispute resolution हो जाए. So here in all these options C is the correct answer. Okay. How often are joint council, जो अभी हमने shop councils, joint councils देखा था, how often they are required to hold meetings, ये उस टाइम पे हमने डिस्कस किया था. And here they meet every 3 months, quarterly they have to meet and discuss. Okay, so here B is the correct answer. So I hope you really like the session. Before winding up, a small announcement. Edutap is currently offering various courses, especially for all those who are preparing for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, be it APFC or E or AO. तो इसमें 3 तरह के courses majorly they have launched. One है मास्टर कोर्स, जो 1 पॉइंट सोर्स होगा आपके लिए हर सब्जेक्ट, हर कंटेंट के लिए, इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग. एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी थर्सडे कुलदीप सर एक स्ट्रैटेजी सेशन लेंगे to guide you on how to utilize that enormous content that has been provided as part of this course. Along with that जो भी आपके क्वेरीज है वो सब रिजॉल्व करेंगे. दूसरा है दूसरा है टेस्ट सीरीज प्लस है. ये उन बच्चों के लिए है जो मेजरली दे आर लुकिंग आउट फॉर एक सिंगल सब्जेक्ट एंड कई सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस चाहिए हमें, बाकी सब्जेक्ट्स हम पढ़ लेंगे, उस तरह के बच्चों के लिए है ये. ओके. एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज, मतलब ये ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी एक बार एग्जाम दिया होगा या फिर कंप्लीटली अपने हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट दे नीड सम प्रैक्टिस क्वेश्चंस फॉर प्रिपरेशन, और रियल एग्जाम फील होने के लिए कुछ मॉक टेस्ट टाइप का. फॉर दैट दे कैन गो फॉर दिस टेस्ट सीरीज. सो बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट यू कैन टेक एन इन्फॉर्म डिसीजन. अगर आपको कुछ डाउट है तो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम मेंबर्स. बाकी सब डिटेल्स हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है. Okay, and with this I'm winding up this session. Thank you very much for being with me so patiently. Thanks a lot and all the best. See you all in the next session very soon. Thank you. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which today we are going to see MCQs from international industrial relations. Now when it comes to these industrial relations and labor laws, ये one of the most important topics है आपके UPSC EPFO एग्जाम के लिए, be it APFC और ए और ईओ पोस्ट, दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस 15 प्लस क्वेश्चंस इन्हीं टॉपिक से आते हैं. ओके, सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज इट हैज़. एंड उसके बाद अगर आप बेसिक्स भी बहुत सही तरीके से आप कर लोगे, तो अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चंस एक्सेट्रा, 10 प्लस क्वेश्चंस तो बहुत आसानी से आप क्लियर कर पाओगे. So with this you can understand the kind of high scoring potential that it has got. So I suggest you or advise you to go through these sessions regularly so that ये आपके प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो सकते हैं. एंड मोर ओवर ये जो भी हम लोग कंटेंट कवर कर रहे हैं, दैट ऑल आर इन द फॉर्म ऑफ MCQs. सो आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा एंड प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्वेश्चंस का. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So this is going to add value to your preparation. So with this, let me start today's session. Here comes the first question. Which of the following is a characteristic of the industrial relations system in many Asian countries? Now when we look at the international industrial relations system, हर country का अपना एक वो सिस्टम होता है. कहीं पे बाईपार्टाइट होता है, मतलब बहुत एम्प्लॉय एम्प्लॉयर ही अपना जो भी डिस्प्यूट्स है वो सब रिजॉल्व कर लेते हैं. कई जगह पे ट्राईपार्टाइट होता है, जहाँ पे एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के साथ गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होता है, सो दैट थोड़ा सा उसका एक नेगोशिएशन में वो हेल्प कर सके. एंड
इस तरह से हर कंट्री का अपना एक वो है। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल जापान में है, वहाँ ट्राइपार्टाइट सिस्टम है। वही कॉन्वर्सली यूएसए में देखा जाए तो ऐसा कोई सिस्टम है ही नहीं, वहाँ पे डिस्प्यूट के लिए नेशनल लेवल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सिस्टम एक्सेट्रा। ओके, सिमिलरली अगर एशियन कंट्रीज का देखा जाए तो हियर वी हैव a tripartite consultation system where the state assumes paternalistic role, मतलब एक बड़ा एक एज ए फादरली और ए पैटर्नल रोल लेके टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर वर्कर्स वेलफेयर एंड ऑफन फैसिलिटेटिंग द ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस। तो जनरली एशियन कंट्रीज में इस तरह का ज़्यादा है ट्राइपार्टाइट कंसल्टेशंस का। सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। Now comes the next question. Which of the following is true regarding the trade union systems in the European Union and communist regimes? एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। The European Trade Union Federation includes all major trade union confederations in EU and non-EU countries. And these unions operate independently without any affiliation. ठीक है, they will actually they include, but again उनका एक affiliation होता है। So ये false statement है, even though it is about European Trade Union Confederation. In communist regimes like China and Vietnam, trade unions are controlled by the state and are affiliated with the ruling parties, acting as official representatives of the workers. And this is true. This is how it is happening. Okay, the trade unions in the US is primarily decentralized with no large federations coordinating union activities. डिसेंट्रलाइज है बट इनका एक कोऑर्डिनेटिंग मतलब फेडरेशंस है, दोज विल कोऑर्डिनेट द यूनियन एक्टिविटीज। सो ये भी फॉल्स है। Japan's trade union system consists of multiple national union centers with no collaboration between the unions and the government on their labor policies. ये भी false है क्योंकि इनका एक 3-tier system है and majorly enterprise level का system है जहाँ पे unions form होते हैं। So here this is also false. So here only B is the correct answer. So B is the answer. Moving on to our next question. Which of the following characteristics is most associated with the Nordic corporatism model of industrial relations? Now, when we look at the industrial relations system in the European Union, there are various types. One of those types is the Nordic corporatism, जहाँ पे high levels of trade union membership होता है, इंडस्ट्री लेवल नेगोशिएशंस होते हैं एंड सेंट्रलाइज्ड बार्गेनिंग अरेंजमेंट्स होते हैं। ऑल दीज विदाउट द नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन they do this. So here B is the correct answer, and this kind of model is followed in various Scandinavian countries like Denmark, Finland, Sweden, etc. So here B is the correct answer. Moving on to our next question. Which of the following best describes the social partnership model of industrial relations? जैसे हमने देखा है यूरोपियन यूनियन के कई सारे इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मॉडल्स है। वन ऑफ दैट इज अगेन सोशल पार्टनरशिप। इसमें क्या है, इट इज बेसिकली this exists in such countries where employers associations and trade union confederation play a key role in ensuring the success of agreements. So यहाँ पे again इन दोनों का मेजर रोल है एंड ये अगर यूरोपियन यूनियन में देखा जाए तो ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, जर्मनी, लग्जमबर्ग, नेदरलैंड, स्लोवेनिया, उन कंट्रीज में सोशल पार्टनरशिप का बहुत ज़्यादा यूज है इन द ये मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस बहुत ज़्यादा acceptable is. So here A is the correct answer. Just yes, A is the correct answer. So moving on to our next question. So here comes the question. Which of the following statements accurately describes the liberal pluralism model of the industrial relations? Now here इस तरह के जो relation है जहाँ पे यहाँ पे union density जो है that tends to be lower एंड उसकी वजह से जो कलेक्टिव बार्गेनिंग है वो भी रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है एंड जो नेगोशिएशन दे आर नॉट सेंट्रलाइज्ड एंड देयर इज नो लीगल मीन्स ऑफ एक्सटेंडिंग कंपनी लेवल डील्स इंडस्ट्री वाइड। सो जो भी होता है कंपनी लेवल पे ही होता है। सो हियर इन दिस केस सी विच इज आंसर, लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस आर mainly at the company level of a confrontational and collective bargaining coverage is restricted due to lower union density. मतलब यूनियंस में मेंबरशिप बहुत कम है। सो ये वाला मॉडल जनरली फॉलो होता है आयरलैंड, यूके, साइप्रस, माल्टा जैसे कंट्रीज में। सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर व्हेन इट कम्स टू लिबरल प्लूरिज्म मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन। Now comes which of the following best describes the industrial relation model in countries like France, Greece, Italy, Portugal and Spain. Now यहाँ पे इससे पहले हमें explain किया गया था then asked, but here they are giving directly country देके they are asking you what kind of industrial relation model exists here. So here
In these countries, governments play a significant role in exercising control, while unions and employers are accommodated to avoid any social confrontation directly, with collective bargaining coverage extended by law and employers association. So everything is under the purview of the legal, and majorly the employers association and everything that will be looking into these जो भी कलेक्टिव बार्गेनिंग जो होता है. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. इस तरह का जो इंडस्ट्रियल रिलेशन मॉडल है दैट रन्स इन फ्रांस, ग्रीस, इटली, पोर्चुगल एंड स्पेन लाइक कंट्रीज. What is the concept of pattern bargaining in the context of labor unions in the USA? हमने ऑलरेडी कई सारे अर्लियर सेशंस में देखा था कलेक्टिव बार्गेनिंग क्या है, किस तरह से दैट विल गिव अ पावर ऑफ नेगोशिएशन टू द यूनियन मेंबर्स, एम्प्लॉयज एक्सेट्रा. ओके, किस तरह से वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एक पीस लेके आता है बिकॉज ऑफ दैट बार्गेनिंग पावर एंड नेगोशिएशंस एंड ऑल दैट. ना उसमें भी कई तरह के पैटर्न, कई तरह के लेवल्स है, कई तरह के प्रोसेसेस है. सो वन ऑफ दैट इज पैटर्न बार्गेनिंग, जो लेबर यूनियंस इन द यूएसए में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है. नाउ हियर इन दिस, इसमें क्या होता है, एक पर्टिकुलर कंपनी में जो भी कलेक्टिव एग्रीमेंट्स होते हैं बेस्ड ऑन वेरियस नेगोशिएशंस, दोज एग्रीमेंट्स कैन बी एक्सटेंडेड टू अदर फर्म्स इन द सेम सेक्टर. ओके, सो ये पैटर्न बार्गेनिंग मतलब एक में जो
So friends, hope you have liked this session, and before winding up I have a small announcement. Currently Edutap is offering various courses associated with UPSC EPFO 2025 examination for all those students who are targeting for both APFC and your AO 2025 एग्जामिनेशन. इसमें 3 तरह के मेजर कोर्सेस है, एक बार मैं बता देती हूँ. एक तो है मास्टर कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है दोज हु आर लुकिंग फॉर वन पॉइंट सोर्स ऑफ कंटेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं ना, उन सब सब्जेक्ट्स का एक ही जगह पे आपको कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग. एंड इवन एवरी थर्सडे एक सेशन भी होगा, स्ट्रैटेजी सेशन, जिसमें इतना कंटेंट को किस तरह से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, वो समझाएंगे कुलदीप सर. अलॉन्ग विद दैट आपके जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई होते रहेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स, ये है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन बच्चों के लिए जिनको चाहिए बस एक आधा सब्जेक्ट का कंटेंट एंड ऑल्सो बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लॉट ऑफ, उनके लिए ये बहुत सही है. ठीक है. एंड थर्ड कोर्स है जो टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं अपने तरीके से, या फिर एक बार उन्होंने एग्जाम भी दे दिया है, फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ दे वांट ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज, उनके लिए ये द बेस्ट है. एंड अगर आपको जो भी क्वेरीज एंड ऑल दैट यू कैन गेट देम क्लैरिफाइड विद द टीम, एंड इसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड विद दिस यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट सूटेड है. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विथ मी सो पेशेंटली टिल द एंड. I wish you all the best and see you soon with another session. Thank you very much. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which in this session we are going to see industrial relations, international industrial relations part 2. Part 1 already हमने कर लिया है, ये part 2 है. So why this series is important? When it comes to the number of questions that are asked from labor laws and industrial relations, now out of 120 close to 15 plus questions है, and you can see the high weightage that it has got. and अगर आप basics भी सही तरीके से पढ़ लोगे and practice कर लोगे, so very easily you will be able to clear 10 plus questions. So with this you can understand the kind of high scoring potential that it has got. So अगर ये आप सही तरीके से करोगे, this will really help you a lot in your exam preparation. So I suggest you to go through these sessions regularly, because जो भी content हम यहाँ पे cover कर रहे हैं that are in the form of MCQs, so that आपका एक revision भी हो जाए and then आपका एक practice भी हो जाए questions का. And moreover we are expecting the notification of UPSC EPFO 2025 very soon. So I hope that you'll utilize these sessions for your exam preparation. With this, let me start today's session. Which of the following conditions must be met for a state to become a member of ILO? एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस. फॉर्मल एक्सेप्टेंस ऑफ ILO कॉन्स्टिट्यूशन ऑब्लिगेशंस टू द डायरेक्टर जनरल, यस दिस हैज टू बी डन. membership in the United Nations General Assembly, वहाँ पे भी membership होगा, only then they'll be able to take membership here, yes this is also true. A 2/3 vote in favor by the General Conference of ILO delegates, and yes this is also true, whenever they apply for it उनका एक vote in favor चाहिए by the other delegates. So here all of these are the conditions that need to be met by a state, मतलब किसी country को ILO में member बनना है तो. So here D is the correct answer. Moving on to our next question, what is the required notice period for a member country to withdraw from ILO as per its constitution जो उन्होंने बनाया है? So here जो भी member अगर अपना membership वापस लेना चाहता है तो definitely they have to serve a notice period of 2 years. 2 years serve करने के बाद ही they'll be able to come out of that ILO as a member. So here B is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following is not a function of International Labour Conference? Now when we look at this International Labour Conference, it's also called as International Parliament of Labour, and this is associated with the ILO only, in that only, and इसमें it has a function of setting global labor and practices standards, जो भी है वो सारे वो करती है. Adopting the ILO's budget, उसका क्या budget and all that, serving as a discussion forum for various labor related issues, everything it has. And also this conference every year एक बार meet करती है in Geneva, so that जो भी उनका discussions है वो सब कर सकते हैं, and this has been done since 1919 बिना कोई रुकावट except during World War II etc.
इसमें जो इलेक्शन है डायरेक्टर जनरल ऑफ द ILO, ये इसका काम नहीं है, बाकी सब इसी के फंक्शन है. सो हियर B is the right answer. How many government delegates does each ILO member state send to the International Labour Conference? जैसे मैंने पहले से बताया है कि जो इंटरनेशनल लेबर कॉन्फ्रेंस ILC है एवरी ईयर मीट होता है, एंड फॉर दैट जो भी मेंबर स्टेट्स है उनको अपने टीम भेजना पड़ता है, मतलब जो डेलीगेट्स है, एंड दे आर जनरली जो उनके ऑफिशियल्स है या फिर सेक्रेटरीज है, वो सब उन्हीं में से सेलेक्ट करते हैं डेलीगेट्स को, एंड दे हैव टू सेंड देयर, एंड ईच डेलीगेट हैज़ वोटिंग पावर, एंड जो भी उनका वहाँ पे वॉइस होता है दैट वुड बी देयर ईच डेलीगेट के लिए. एंड हियर व्हेन वी लुक एट दिस, एवरी ILO member state can send 2 government delegates for this conference every year. So here is the correct answer. So here, which of the following is not a function of the governing body of the ILO? Now when we look at the ILO, as I have said earlier also, इसका एक governing body होती है, and there are various functions of the governing body, जैसे policies, decision making, setting the conference agenda, budget scrutiny भी करती है, appointment of director general ये भी इसी का काम है, monitoring implementation etc. Now what does this governing body consist of? इसमें 56 जो टॉप के हैं 56 मेंबर्स होते हैं, जिसमें 28 के गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स, 14 एम्प्लॉयर से रिप्रेजेंटेटिव्स एंड 14 वर्कर्स से, मतलब ये यूनियंस एंड ऑल दैट, एंड 66 डिप्यूटी मेंबर्स भी होते हैं, जिसमें अगेन 28 गवर्नमेंट से, 19 एम्प्लॉयर्स की तरफ से, 19 वर्कर्स की तरफ से. एंड ये जो आउट ऑफ दिस 28 गवर्नमेंट से, उसमें 10 ऐसे गवर्नमेंट से जो परमानेंट होते हैं इसमें. दीज आर हेल्ड by those countries which have chief industrial importance in the world. Okay, उसमें होते हैं. एंड ये जो 10 सीट्स है ना, इसमें इंडिया भी एक मेंबर है. ठीक है, सो हियर नॉट ए फंक्शन. सेटिंग द एजेंडा, नहीं ये इसका फंक्शन है. इलेक्टिंग द DG, यस ये भी इसी का फंक्शन है. एनफोर्सिंग लेबर लॉस विद इन मेंबर स्टेट्स, ये इसका फंक्शन नहीं है, बिकॉज इट इज डन बाय देम, इट्स दे हैव टू डू दैट. मॉनिटरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ILO कन्वेंशंस एंड रिकमेंडेशंस, यस ये इनका काम है. सो हियर C is the correct answer, because this is not the function of the governing body of the ILO. So coming to the next question, how many titular government seats in the ILO governing body are permanently held by states of chief industrial importance? ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको दूसरे क्वेश्चन में as part of the explanation बताया था, and I really hope that you all would answer this question. And here it is, ये जो गवर्नमेंट सीट्स है इसमें 10 परमानेंट सीट्स है, एंड इंडिया भी उसमें से एक है. सो हियर B is the correct answer. So now coming to the next question, what is the primary role of the International Labour Office? So यहाँ पे इंटरनेशनल लेबर ऑफिस का सबसे बड़ा काम है, जो अगेन एज पार्ट ऑफ ILO, सर्विंग एज अ सेक्रेटेरिएट एंड रिसर्च सेंटर फॉर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन. सो हियर A is the correct answer. Okay, so here it is, A is the correct answer. So as part of the ILO's objectives and its mandate and its working, all that, it comes up with different things like your conferences, conventions, recommendations, etc. Now here, which of these following statements correctly describe the difference between the ILO's conventions and recommendations? Okay, see, conventions वो होते हैं generally जो as part of the international treaties they are done, एंड दे आर जनरली लीगली बाइंड होते हैं, मतलब जिसने साइन किया है उसको दे हैव टू फॉलो दैट, दे हैव टू फॉलो ऑन दैट. उसके लिए जो भी उनके रिस्पेक्टिव कंट्री में जो भी पॉलिसीज लाना पड़ा है, जो भी चेंजेस लाने पड़े, दैट ऑल दे हैव टू डू. वेयर एज जो भी ILO के रिकमेंडेशंस होते हैं, दैट वुड बी नॉन बाइंडिंग गाइडलाइंस. ये गाइडलाइंस है दैट वन कंट्री हैज टू फॉलो दीज, बट ये नहीं है कि अगर नहीं फॉलो करेंगे देयर विल बी सम लीगल एक्शन अपॉन देम. So here conventions, they are legally binding international treaties जो various countries they come together, sign and accordingly follow, whereas recommendations would be as non-binding guidelines. ठीक है, so here A is the correct answer. बाकी भी देख लेते एक बार. recommendations are legally binding, no, legally binding नहीं होते. both are legally, no. conventions and recommendations have no legal significance, no, ऐसा कुछ नहीं है. this is what it is. So A is the correct answer.
Moving on to the next question. Which of the following ILO fundamental conventions has not been ratified by India? ILO के कई सारे ऐसे conventions है, fundamental conventions है related to various issues. उसमें इंडिया ने ratify किया है, मतलब it has signed and it is following them by making respective जो भी उसके associated policy changes या जो भी amendments लाना है, that all they have done and accordingly it is working. But एक ऐसा convention है, it hasn't ratified that, उसने साइन नहीं किया है. एक तो है इक्वल रेम्यूनरेशन कन्वेंशन 1951, यस इंडिया हैज राटिफाइड दिस. वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन 1999, इसको भी इंडिया ने राटिफाई किया है. एबॉलिशन ऑफ फोर्स लेबर कन्वेंशन, ये भी 1957 का जो है, इसको भी इंडिया ने राटिफाई किया है. राइट टू ऑर्गेनाइज एंड कलेक्टिव बार्गेनिंग कन्वेंशन, इसको इंडिया ने राटिफाई नहीं किया. रेस्ट ऑफ द थ्री इंडिया हैज ऑलरेडी राटिफाइड. Moving on to our next question. Which of the following Indian labor laws was influenced by the ratification of the Hours of Work Industry Convention 1919? As I've said earlier also, कई सारे ऐसे conventions हैं जिसके basis पे Indian labor laws influence हुए, based on which there have been amendments या फिर नए policies have been made so that जो हमने ratify किया है उसको fulfill करें. ठीक है, उसी तरह से कुछ है जैसे कि नो फैक्ट्रीज एक्ट में या फिर माइंस एक्ट 1952, प्लांटेशंस लेबर एक्ट, द बीडी एंड सिगार वर्कर्स एक्ट, इन सब में जो वर्किंग आवर्स एंड वीकली रेस्ट वाला जो प्रोविजन है, दैट हैव बीन इनकॉर्पोरेटेड बेस्ड ऑन द दिस आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री कन्वेंशन 1919, उसी के बेसिस पे किया है. ठीक है, तो इसमें जो अभी हमने पढ़ा है, जो भी मैंने अभी आपको बताया है, दैट इज जो राइटिफिकेशन ऑफ द आवर्स ऑफ वर्क इंडस्ट्री, द फैक्ट्रीज एक्ट इसमें आता है 1948, अलॉन्ग विद द माइंस एक्ट, द प्लांटेशन लेबर एक्ट, द बीडी एंड सिगार वेलफेयर एक्ट, ये सारे इसी के बेसिस पे उन्होंने वो जो राटिफाई किया है कि कितने वर्क्स वीकली रेस्ट कब मिलना चाहिए, वीकली वर्क कितना होना चाहिए, नो, एंड ऑल दैट. Along with that, the minimum wage fixing machinery convention 1928 का and the minimum wage fixing convention 1970 का, this have influenced the minimum wages act 1948. ठीक है, so based on those ratifications, as I've said, जो उनका कन्वेंशन से रैटिफिकेशन से एज इंडिया हैज रैटिफाइड, बेस्ड ऑन दैट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड. ये फ्यू एग्जांपल्स है आपके सामने. And here in this case, B is the correct answer. So friends, hope you have liked this session, and before winding up, I have a small announcement. Currently, Edutap is offering various courses associated with UPSC EPFO 2025 examination for all those students who are targeting for both APFC and your AO 2025 examination. इसमें 3 तरह के मेजर कोर्सेस है, एक बार मैं बता देती हूँ. एक तो है मास्टर कोर्स, ये उन बच्चों के लिए है दोज हु आर लुकिंग फॉर 1 पॉइंट सोर्स ऑफ कंटेंट फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स. ओके, इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स है ना, उन सब सब्जेक्ट्स का एक ही जगह पे आपको कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ्स, वीडियोस, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग. एंड इवन एवरी थर्सडे एक सेशन भी होगा, स्ट्रैटेजी सेशन, जिसमें इतना कंटेंट को किस तरह से आप लोग यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन में, वो समझाएंगे कुलदीप सर. अलॉन्ग विद दैट आपके जो भी डाउट्स है वो क्लैरिफाई होते रहेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स, ये है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन बच्चों के लिए जिनको चाहिए बस एक आधा सब्जेक्ट का कंटेंट एंड ऑल्सो बट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लॉट ऑफ, उनके लिए ये बहुत सही है. ठीक है, एंड थर्ड कोर्स है जो टेस्ट सीरीज, ये उन बच्चों के लिए है जो ऑलरेडी अपना प्रिपरेशन कर चुके हैं अपने तरीके से, या फिर एक बार उन्होंने एग्जाम भी दे दिया है, फिर से प्रिपरेशन कर रहे हैं, नाउ दे वांट ओनली प्रैक्टिस क्वेश्चंस या टेस्ट सीरीज, उनके लिए ये द बेस्ट है. एंड अगर आपको जो भी क्वेरीज एंड ऑल दैट, यू कैन गेट देम क्लैरिफाइड विद द टीम, एंड इसके सारे डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है. एंड विद दिस यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट सूटेड है. ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स फॉर बीइंग विथ मी सो पेशेंटली टिल द एंड. I wish you all the best and see you soon with another session. Thank you very much. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which in this session, today's session, we'll be doing industrial relations, इंडस्ट्रियल हेल्थ एंड सेफ्टी. ये पार्ट 1 है, एक और पार्ट इसमें आएगा. ठीक है, नाउ व्हाई इज दिस सीरीज इंपॉर्टेंट? व्हेन वी लुक एट दिस सीरीज, यू नो,
as part of your preparation, if you look at the number of questions that are asked from this, especially labor laws and industrial relations in the UPSC EPFO exam, be it APFC या फिर ई और एओ पोस्ट, दोनों के लिए, दोनों में भी क्लोज टू 15 प्लस क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दीज टॉपिक्स. ओके, सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज गॉट. एंड दूसरा, जब आप सही तरीके से आप पढ़ोगे, थोड़ा बेसिक्स भी अच्छे से आप कवर कर लोगे, even then you'll be able to clear 10 plus questions very easily. So with this you can understand the kind of weightage, scoring potential that it has got. So good scoring potential, good weightage. सो ये आप लोग जब ये जो भी आपका एग्जाम प्रिपरेशन है, इन दैट यू कैन यूज दिस सीरीज, बिकॉज जो भी हम लोग इसमें कॉन्सेप्ट्स कवर कर रहे हैं एसोसिएटेड विद लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, वी आर डूइंग दैट इन द फॉर्म ऑफ MCQs, सो दैट आपका एक प्रैक्टिस भी हो जाए एंड रिविजन भी हो जाए. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO 2025 very soon, so you can understand the kind of importance attached to this series. So I hope you really will utilize these sessions and the series efficiently for your exam preparation. With this introduction, let me start today's session. So friends, here comes the first question. Which of the following statements best describes the concept of an accident? We are talking about industrial health and safety. So सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जिसको हमें बहुत केयरफुली देखना पड़ेगा एंड अवॉइड करना पड़ेगा, सो दैट जो भी वर्क फोर्स उसके जो भी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं उसमें किस तरह का केयर लेना पड़ेगा, किस तरह के प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे. ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे दो टर्म्स देखेंगे, एक तो एक्सीडेंट एंड दूसरा है रिस्क. मैं पहले रिस्क के बारे में बताती हूँ. इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ द लाइकलीहुड ऑफ एन अकरेंस ऑफ एन हैजार्डस इवेंट and the severity of the injury or damage to the health of the people caused by this event. तो आगे कुछ होगा करके हम लोग थोड़ा सा एंटिसिपेट करते हैं, अच्छा इसमें होने के चांसेस है. ठीक है, तो वो हो गया रिस्क, जिसमें कुछ हैजार्डस इवेंट हो सकता है, इंजरी हो सकती है, जो भी है रिस्क को हम लोग पहले ही एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, नाउ व्हेन वी लुक एट द एक्सीडेंट, ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है. ये दिस इज एन अनएक्सपेक्टेड अकरेंस दैट रिजल्ट्स इन डैमेज टू फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड इंजरी टू लिविंग बीइंग्स कॉज्ड बाय प्रीसीडिंग सर्कमस्टेंसेस. कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है. ठीक है, सो एक प्रीसीडिंग सर्कमस्टेंसेस की वजह से ये अनएक्सपेक्टेड अकरेंस of something that results in damage to physical objects and sometimes to living beings as well. So here B is the correct answer. Now coming to the next question. According to W.H. Heinrich's domino theory, what is the sequence of accident factors that ultimately leads to an accident? See, there are various theories of accidents that have been developed to explain the causation of the accidents. ठीक है, उसमें से एक है WH हेनरिच का जो डोमिनो थियरी है. मतलब डोमिनो से आपने देखा होगा, लाइन से हम लोग रखते हैं कि एक आपने डिस्टर्ब किया, द एंटायर सिस्टम गेट्स डिस्टर्ब. से ये भी वैसे है. तो इनका कहना है कि एक जगह पे हमने गलती की, दैट विल लीड टू द एक्सीडेंट थ्रू सीरीज ऑफ सम इवेंट्स. सो यहाँ पे ये इनके according to him, he says that 88% of all the accidents are caused by unsafe acts of people, 10% by unsafe actions and 2% by acts of God. Otherwise, जो you can say that 98% of the times जो accidents हो रहे हैं, that is by unsafe acts of the people and their actions. Only 2% बोल सकते बिल्कुल लक खराब है या फिर एक्ट ऑफ गॉड जैसे बोलते हैं वो है. सो दिस इज एज पर हिम. एंड इन्होंने एक 5 फैक्टर एक्सीडेंट सीक्वेंस का डेवलप किया है, जिसमें इन्होंने कहा है कि एक तो एंसेस्ट्री एंड सोशल एनवायरनमेंट, उसके बाद दिस विल लीड टू वर्कर्स फॉल्ट, नाउ दिस विल लीड टू अनसेफ एक्ट, नाउ दिस विल लीड टू द एक्सीडेंट. लाइक एन एम्प्लॉय हु फेल्स टू वेयर ए सेफ्टी हेलमेट व्हाइल वर्किंग एट हाइट्स, okay, which might risk तो है नीचे गिरने का, so that might lead to causing them to fall, resulting in severe injuries to that person. So सबसे पहले उनका बिल्कुल करना ही नहीं है, मतलब है ही नहीं. उसके बाद सोशल एनवायरनमेंट भी ऐसे कोई कर नहीं रहा है, वर्कर का फॉल्ट है ये, ऑल दिस विल लीड टू वर्कर्स फॉल्ट. एंड अनसेफ एक्ट है जो कर रहा है वो,
कि इतनी ऊंचाई पे कर रहा है एंड एट द सेम टाइम कोई प्रिकॉशन नहीं ले रहा है, डेफिनेटली दैट माइट लीड टू द एक्सीडेंट. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. वन सेकेंड, लेट मी सी. यस, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द मल्टीपल कॉजेशन थियरी विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स वुड बी क्लासिफाइड एज बिहेवियरल फैक्टर्स. सो पहले ये थियरी देख लेते, देन विल लुक इनटू द आंसर. See, now this particular theory, what it states that as per a single accident there may be many contributory factors. ऐसा नहीं कि एक रीजन की वजह से वो हुआ होगा, ठीक है. एंड अकॉर्डिंग टू दिस थियरी, ये जो कॉन्ट्रीब्यूटरी फैक्टर्स जिसके बारे में हम लोग बोल रहे दैट विल लीड टू द एक्सीडेंट, ये दो पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, दो ग्रुप्स में. एक तो है बिहेवियरल कैटेगरी, दूसरा है एनवायरमेंटल कैटेगरी. नाउ बिहेवियरल कैटेगरी में क्या है, दिस जनरली पर्टेन्स टू द फैक्टर्स एसोसिएटेड विद द वर्कर या वर्क फोर्स विच इज इन डायरेक्टली इन दैट वर्क. ओके, लाइक एक इम्प्रॉपर एटीट्यूड है, लैक ऑफ नॉलेज, लैक ऑफ स्किल्स, इनएडिक्वेट फिजिकल एंड मेंटल कंडीशन, इन सब की वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस है, कॉज, ठीक है. दूसरा है एनवायरमेंटल. नाउ ये है इम्प्रॉपर गार्डिंग ऑफ देयर हजार्डस वर्क एलिमेंट्स, क्योंकि जो भी वर्क कर रहे हैं उसमें कई सारे एलिमेंट्स होंगे, ओके, उस पर आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो. या फिर डिग्रेडेशन ऑफ द इक्विपमेंट थ्रू यूज, कंटिन्यूस यूज की वजह से वो डिग्रेड हो गया, उसमें बिल्कुल करेक्शन नहीं कर रहे हैं. एंड तीसरा है बिल्कुल अनसेफ प्रोसीजर्स, मतलब ना तो हेलमेट पहन रहे ना तो कुछ, एंड वी आर ट्राइंग टू डू द वर्क. Okay, so here we are talking about the behavioral factor. So improper guarding of the hazardous work elements है तो environmental हो गई. Degradation of equipment through use, ये भी environmental है. Unsafe working conditions due to poor lighting, ये भी environmental conditions है. Lack of knowledge और skills of the worker, ये आता है इसमें, मतलब behavioral वाले में, ठीक है. जैसे कि एटीट्यूड सही नहीं है, बिल्कुल सेफ प्रोसीजर्स कुछ भी फॉलो नहीं कर रहे हैं, अनसेफ मेथड से कर रहे हैं, ऑल दैट, दैट वुड बी दिस बिहेवियरल फैक्टर. सी इज द करेक्ट आंसर हियर. मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. अकॉर्डिंग टू द प्योर चांस थियरी एक्सीडेंट्स अकर, रीजन क्या है उसका? प्योर चांस, सिंपल, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, बिल्कुल ये लक के ऊपर है. मतलब जो हेनरिच ने बोला है, जो 2% चांसेस है, जो एक्ट्स ऑफ गॉड, ये यहाँ पे 100% वो कर लेता है, ठीक है. मतलब इसमें कोई रैंडम, आई मीन कोई रीजन है, विदाउट एनी डिसर्नेबल पैटर्न और प्रिवेंटेबल कॉज, कोई भी रीजन है, बस हो गया है. सो दिस थियरी सेज दैट. सो हियर इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. According to the bias liability theory, once a worker is involved in an accident, इसमें क्या है ये theory, it is based on the view that a worker if involved in an accident, the chances of the same worker becoming involved in future accidents are either increased or decreased as compared to the rest of the workers. Either वो उस accident से सीख के आगे बहुत careful रहेगा, या फिर वही उसकी एटीट्यूड की वजह से वो करता रहेगा. सो दिस इज व्हाट दिस थियरी सेज. सो हियर द चांसेस ऑफ फ्यूचर एक्सीडेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज कंपेयर टू अदर वर्कर्स, ये है. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. According to the energy transfer theory, for every change of energy that leads to injury or damage, there are 3 essential components. वो क्या है? Now this energy theory, energy transfer theory as such, actually ये बोलता है कि those who accept this, the energy transfer theory, they say that a worker incurs injury or the equipment suffers damage through a change of energy. कुछ तो वहाँ पे change energy हो रहा है, मतलब कुछ तो वहाँ चेंज हो रहा है ना, कुछ इवेंट या कुछ तो हो रहा है. एंड दैट ऑफ एवरी चेंज ऑफ एनर्जी देयर इज अ सोर्स, क्योंकि उस एनर्जी चेंज जो हो रहा है उसका कुछ रीजन है, कुछ कोई तो है. इट कैन बी अ पर्सन, इट कैन बी द सर्कमस्टेंस, जो भी है. तो वो एक सोर्स है एंड एक पाथ है, मतलब जिसके थ्रू एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, मतलब कुछ गलती किया है वहां पे, मतलब वो पाथ हो गया. एंड रिसीवर, जो वहां पे जो इवेंट वहां पे हो रहा है, ठीक है, जो एक्सीडेंट है. सो दिस हैज अ सोर्स, अ पाथ एंड अ रिसीवर, 3. सो हियर एनर्जी ट्रांसफर थियरी में ये 3 मेन कंपोनेंट्स इट सेज
कि एनर्जी ट्रांसफर होता है फ्रॉम ए सोर्स थ्रू ए पाथ टू द रिसीवर. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. So here comes the next question. According to the symptoms versus causes theory, unsafe acts and unsafe conditions are. Okay. See, when we look at this theory, ये theory ये बोलता है कि rather than the symptom, we have to look at the cause. So generally ये जो unsafe acts है, unsafe conditions है, ये सिर्फ एक symptoms है, not the root cause. For example, एक worker का accident हुआ है एंड जब बाद में उसको देखा था कि क्यों एक्सीडेंट हुआ, दे फाउंड आउट दैट देयर वाज मॉल फंक्शनिंग ऑफ द मशीनरी. ठीक है, ये हो गया हमारा सिम्टम. ठीक है, लेकिन वो क्यों हुआ, मॉल फंक्शनिंग क्यों हुआ? क्योंकि उसका सर्विसिंग टाइम पे नहीं हुआ था. सर्विसिंग टाइम पे नहीं हुआ था एंड दिस इज द रूट कॉज. ठीक है, सो वी हैव टू फोकस ऑन दिस रूट कॉज टू अवॉइड द एक्सीडेंट्स रादर देन लुकिंग एट द सिम्टम्स विच आर जस्ट अनसेफ एक्ट्स एंड अनसेफ कंडीशंस. ठीक है, दिस इज व्हाट दिस थियरी सेज. सो यहाँ पे दिस द अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशंस आर नथिंग बट द कॉन्सिक्वेंसेस. Okay, proximate causes but not the root cause of the accident. So here B is the correct answer. Which theory emphasizes the importance of identifying the underlying root cause of an accident rather than just focusing on the immediate symptoms? जो अभी हमने देखा है थोड़ी देर पहले ही, उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से यहाँ पूछा है. तो जनरली जो हम लोग देखते हैं, rather than that, दिस इज वॉट सिम्टम्स से ज्यादा हमें रूट कॉज पे फोकस करना चाहिए एंड दैट इज वॉट दिस इज सिम्टम्स वर्सेस कॉजेस. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. According to the concept of human factors in accident causation, which of the following is a direct consequence of work overload? Now when we look at the factors that give rise to accident, there are two major factors. एक तो human factors हो गए, एक तो mechanical factors हो गए. ठीक है, human factors में भी फिर दो तरह के और है. human factors associated with the workers, human factors associated with the management. Now when we look at the human factors associated with the workers, जनरली ये होता है उनके पर्सनैलिटी वेरिएबल्स की वजह से. मतलब उनकी पर्सनैलिटी क्या है, अगर वो सही से एटीट्यूड ही उनका सही से नहीं, तो डेफिनेटली दैट सम पीपल आर मोर लाइकली टू हैव एक्सीडेंट्स बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड एंड दैट काइंड ऑफ प्रेजेंस उनका उसी तरह से है. दूसरा है बिल्कुल एटीट्यूड, लेजीनेस, क्लमजीनेस, उसकी वजह से जो उनका एटीट्यूड उनका वो है. तीसरा है हैबिट्स, उनके खुद के हैबिट्स किस तरह से हैं. एंड फोर्थ है स्ट्रेस. Now there is a direct work overload that is supposed to be the prime cause of industrial stress and that falls under this human factor. So यहाँ पे अगर direct consequences of the workload देखा जाए तो that is consequence of industrial stress जिसकी वजह से workload overload हो रहा है and that also is one of the reasons for the causing of any accident. So here B is the correct answer. So friends, इससे पहले भी हमने देखा था कि जो causation of the factors associated with the causing of accidents, उसमें देखा था हमने कि human factors भी है, mechanical factors है. उसमें human factors में factors associated with workers and factors associated with management, दोनों तरह से. Now here we look into the management related human factors. Which of the following management related human factors involves a failure to ensure that workers are properly monitored and comply with safety rules and protocols? Now when we look at the managerial related human factors, सबसे है inadequate training. जो बिल्कुल ट्रेनिंग सही से नहीं देते हैं जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है, तो ये इसमें नहीं आता है. एंड दूसरा आता है लैक्सिटी ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द सेफ्टी नॉर्म्स. जो बिल्कुल सेफ्टी नॉर्म्स जो है लेजीनेस की वजह से वो बिल्कुल फॉलो ही नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो ये भी नहीं है. तीसरा और फ्लॉस इन जॉब डिजाइन. ओके, वही है जो सेफ्टी नॉर्म्स ये सब जो आते हैं, ये सब इसी में आते हैं. एंड अनसाउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, बिल्कुल वो देखते नहीं कि कैंडिडेट एक्चुअली ये कर पाएगा कि नहीं, बस सस्ते में आ रहा है तो ले लिया. फॉर एग्जाम्पल ये बहुत कम में आ रहा है तो इसको ले लो. सो अनसाउंड रिक्रूटमेंट पॉलिसीज. एंड लास्ट है पुअर सुपरविजन. मतलब बिल्कुल है कुछ सब पॉलिसी सब कुछ है लेकिन बिल्कुल वो मॉनिटरिंग ही नहीं है वहां पे. ना तो मॉनिटरिंग है प्रॉपरली, ना तो जो भी सेफ्टी रूल्स प्रोटोकॉल्स जो भी उन्होंने बनाया है वो बिल्कुल वो खुद ही फॉलो नहीं कर रहे हैं. सो डेफिनेटली दैट माइट लीड टू द एक्सीडेंट.
So here it is poor supervision, that is because of which this can happen. So D is the correct answer. Which of the following management related human factors involves ensuring that jobs are designed to optimize the human well-being and overall system performance? दोनों का चाहिए. Okay, human well-being भी चाहिए and overall system performance. Taking into account the interactions among humans and other elements of a system in which the person is working. So here ये तब होता है, मतलब ये दिस फैक्टर तब होता है जब देर इज सम फ्लॉज इन जॉब डिजाइन कि ये फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं एर्गोनॉमिक्स. सो हियर B is the correct answer. We are not talking about inadequate training. We are not talking about unsound recruitment policies. We are not talking about poor supervision. But we are talking about the design. That jobs are designed to optimize human well-being and overall system performance. जो नहीं कर पा रहे हैं, that is flaws in job design. So उसकी वजह से भी accidents होने के chances हो सकते हैं. So here B is the correct answer. Moving on to our next question, which of the following is an example of a mechanical factor contributing to accidents? तो यहाँ देख सकते हैं human error due to inadequate training, ये तो human error, human factor है. Poor supervision by the management, human factor by the management. Laxity in implementation of safety norms, again human factor under the management. मतलब जो mechanical factor मतलब जिस machinery के साथ काम कर रहे हैं, जिस environment में काम कर रहे हैं, that would fall under this. So here failure of machines and the control systems, that is the best example of the mechanical factor contributing to accident. So here A is the correct answer. Moving on to our next question. According to the International Labour Organization, which of the following types of diseases are recognized as arising out of exposure to substances or dangerous conditions in processes, trades or occupations? So here एक term देख लेते हैं सबसे पहले, occupational safety and hazards. Now this can be defined as the risk to the health or life of the employee who is associated with the work because of the inherent nature of the work that he is doing and the nature of the work environment in which he is doing. तो risk तो है, ठीक है. Now because ना हमने बिल्कुल precautions नहीं लिया, still the person is working in the same kind of environment, condition, etc. In such cases that might lead to diseases which can be called as the occupational diseases. So यहाँ पे B is the correct answer. So कई सारे examples दे सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि that person कहाँ पे जिस तरह से टेक्सटाइल्स इसमें काम कर रहे हैं तो उसमें न्यूमोनिया होने के चांसेस है. जैसे कि दे आर वर्किंग इन दैट वूल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, लोगों को एस्थमा की प्रॉब्लम होती है बिकॉज वो बहुत पतला सा वो जो डस्ट उड़ता है ना जब वूल को वो सब क्लीन करते हैं, when we inhale it all gets settled in the lungs, especially the alveoli, so बहुत heavy हो जाते हैं, that leads to बॉडी को बिल्कुल ऑक्सीजन कम मिलता है, तो न्यूमोनो लंग रिलेटेड डिजीजेस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. जैसे कोल या स्टोन क्रशर्स में काम करते हैं उनको सिलिकोसिस टाइप के डिजीज होने के चांसेस ज़्यादा है. उस तरह से हैजार्डस कंडीशंस होते हैं, बट अगेन proper precautions and proper care needs to be taken so that all these can be avoided. So here B is the correct answer. So friends, before winding up the session, I would like to bring to your kind notice that Edutap is offering currently 3 types of courses for all those who are targeting the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EO or AO. इसमें क्या है, एक तो है मास्टर कोर्स जिसमें आपको ये उन बच्चों के लिए जो सोचते हैं कि मुझे 1 पॉइंट सोर्स चाहिए सारे कंटेंट के लिए, सारे सब्जेक्ट्स के लिए, सो दैट बेस्ट. सो यहाँ पे आपको बिल्कुल सारा कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोस, इन द फॉर्म ऑफ लाइव सेशंस, इन द फॉर्म ऑफ MCQs, चैप्टर क्विजेस, एवरीथिंग. अलॉन्ग विद दैट एवरी थर्सडे कुलदीप सर आपसे एक स्ट्रैटेजी सेशन भी करेंगे, सो एज टू मेक यू अंडरस्टैंड कि इतना कंटेंट दिया है तो उसको किस तरह से आप अपने एग्जाम प्रिपरेशन के लिए यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है. नाउ उसके बाद आता है आपका टेस्ट सीरीज प्लस. नाउ इसमें उन बच्चों के लिए जो एक आधे सब्जेक्ट्स खुद से ही प्रिपेयर करते हैं क्योंकि उनका डिग्री में था या कहीं पे था या ईजी था, बट अदर सब्जेक्ट्स दे वांट टू हैव सम गाइडेंस, तो यहाँ से वो ले सकते हैं. उसी के साथ साथ पूरे MCQs आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे प्रैक्टिस के लिए,
ठीक है। तीसरा है बिल्कुल टेस्ट सीरीज से, जो बच्चा ऑलरेडी बिल्कुल अपने हिसाब से पढ़ लिया है या फिर एक बार ऑलरेडी एग्जाम दे चुका है और फिर रिपीट कर रहा है, लेकिन उसको अच्छे से नंबर ऑफ क्वेश्चंस चाहिए फॉर प्रैक्टिस। ओके। एंड जो बिल्कुल पहली बार दे रहा है उनको एक फील चाहिए एग्जाम का, मॉक टेस्ट चाहिए, सो उनके लिए ही है ये। So you can go through these courses details everything, and description box में सब कुछ available है, and if you have any queries also you can reach out to the team and get your doubts clarified so that आपको जो course suitable करता है that you can go ahead with the purchase. So here it is, and thank you very much for being so patient till here, and I really hope that you have liked this session. See you all very soon with the next part. Thank you very much once again, and all the best. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs a day, and as part of which today we are going to see industrial relations, industrial health and safety. इसका part 1 हमने already कर दिया है and इस session में हम लोग part 2 करने वाले हैं. Okay, now why is this series important? When it comes to UPSC EPFO examination, be it APFC या फिर AO और EO, दोनों के लिए भी लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है, एंड जिसमें से मोर 120 क्वेश्चंस में से 15 प्लस क्वेश्चंस इसी टॉपिक्स में से आते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ हाई वेटेज दैट इट हैज गॉट. एंड अगर आप सही से बेसिक्स भी अच्छे से आप पढ़ लोगे तो विद दैट ऑल्सो यूल बी एबल टू स्कोर और सॉल्व 10 प्लस क्वेश्चंस बहुत आसानी से आप क्लियर कर सकते हो. So with this you can understand the kind of high scoring potential that it has got. Okay, and एक एक मार्क वहाँ पे वैल्यू करता है. So I suggest you or I advise you to go through these sessions and utilize them for your exam preparation. And जो भी हम लोग कंटेंट कर रहे हैं everything we are doing in the form of MCQ, so that आपका जो प्रिपरेशन है उसमें जो भी रिवीजन है या फिर प्रैक्टिस है वो सब हो जाए. एंड मोर ओवर वी आर एक्सपेक्टिंग द नोटिफिकेशन ऑफ UPSC EPFO 2025 very soon, so this will really help you in your exam preparation. So with this, let me start today's session. So coming to first question, according to the Plantations Labor Act 1951, what is the primary responsibility of every employer regarding the safety and occupational health of the workers in plantations? See, statutory safety measures की जब बात करेंगे, there is no single legislation in India that addresses every aspect of occupational health and safety. So with this you can understand the kind of importance associated with this. ठीक है. So उसी तहत कई सारे एक्ट्स हैं, एंड फॉर विच एक और एक्ट है प्लांटेशंस लेबर एक्ट 1951. सो इसमें प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरी एम्प्लॉयर रिगार्डिंग द सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ ऑफ workers in plantations is to ensure compliance with safety measures. चैप्टर 4A में ये पूरा कवर होता है. ओके, चैप्टर 4A of this act में this all are covered related to the ensuring compliance with the safety measures. Moving on to our next question, as per section 18A1 of the Plantations Labor Act 1951, what is the specific provision regarding safety measures for workers handling insecticides, chemicals and toxic substances? Now here it is again the responsibility, as per this section, it is again the responsibility of the employer to adopt safety measures for storage and transport of these insecticides, chemicals, toxic materials, etc. Okay, and so here as per this section we are talking about, it is C is the correct answer. Moving on to our next question, according to the section 18A4 of the Plantations Labor Act 1951, what is the specific training requirement for workers handling insecticides, chemicals and toxic substances? Now this particular section it says that जो सेफ वर्क प्रैक्टिसेस है या फिर उसमें किस तरह के हैजार्ड्स हो सकते हैं, रिस्क्स, वो सब वो पहले से ही इनको पता होना चाहिए, एंड दे हैव टू बी ट्रेन्ड ऑन दैट. ओके, अगर वो सही से ट्रेन करेंगे तो बाकी जितने भी इक्विपमेंट ऑपरेशन है, इमरजेंसी रेस्पॉन्स प्रोसीजर्स है, या बाकी जो भी प्रोसीजर्स है वो सब ऑटोमेटिकली वो हो जाएंगे. बट सबसे इम्पॉर्टेंट है कि एक्चुअली वहाँ इस तरह के हैजार्डस कंडीशन में किस तरह से उनको काम करना चाहिए. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर, ट्रेनिंग ऑन सेफ वर्क प्रैक्टिसेस एंड हैजार्ड्स.
Moving on to our next question. As per section 18A6 of the Plantations Labor Act 1951, what is the provision regarding health records of workers exposed to insecticides, chemicals and toxic substances? इसमें एम्प्लॉयर को जो भी हेल्थ रिकॉर्ड्स है जब भी चेकअप होती है या जो भी है, दैट ऑल शुड बी मेंटेन्ड सो दैट जब भी वर्कर्स उसका रिक्वेस्ट करे कि उनके हेल्थ रिकॉर्ड चाहिए, ही शुड बी इन ए पोजीशन टू प्रोवाइड दोज हेल्थ रिकॉर्ड्स टू द वर्कर्स अपॉन रिक्वेस्ट. सबमिशन टू गवर्नमेंट या फिर डिस्प्लेइंग या फिर कॉन्फिडेंशियली रखना, ये कुछ नहीं है. दिस इज व्हाट ही हैज टू, द एम्प्लॉयर हैज टू डू, सो दैट जब जरूरत पड़ी, सो ही शुड बी एबल टू प्रोवाइड दैट टू द वर्कर्स अपॉन रिक्वेस्ट. सो हियर ए इज द करेक्ट आंसर. Yes. Yes. Moving on to our next question. The Shops and Establishments Acts of various states provide for the health and safety of the employees. Which of the following provisions is commonly found in these acts? When we look at the Shop and Establishments Acts, it is a state enactment. मतलब state की responsibility है. So वो अपने अपने तरीके से उसमें provisions डालते हैं, right? कई सारे उनके स्टेट स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज की वजह से भी हो सकता है, राइट? सो इसमें लेकिन एक चीज ये है कि कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं बिल्कुल कॉमन है इन दीज एक्ट्स. ओके, वो कौन से वाले कॉमन है? इससे हियर दोज आर द प्रोविजंस फॉर द क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, लाइटिंग एंड प्रिकॉशंस अगेंस्ट फायर. ये कॉमनली फाउंड प्रोविजन है इन ऑल दीज एक्ट्स ऑफ द शॉप्स एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. मैंडेटरी प्रोविजन ऐसा कुछ नहीं है. मैंडेटरी प्रोविजन ये भी नहीं है. एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस का प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय हाउसिंग ये भी नहीं है. दिस इज व्हाट इट इज. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. According to the Mines Act 1952, as I've said earlier also, एक act नहीं है, कई सारे acts होंगे. As per the different sectors, different industries, different kinds of acts are there for industrial safety and this hazard related provisions. ठीक है. Now here, as per that Mines Act 1952, what is the power granted to inspectors under section 22A1 to maintain safety of mine workers? Now इसमें the power given to the this inspectors is they have the power to prohibit employment in certain situations where they feel that कि the employer has failed to comply with the provisions related to the safety. ठीक है, अगर उन केसेस में डेफिनेटली द इंस्पेक्टर हैज द पावर. वही सेक्शन 23 में देयर इज अ प्रोविजन दैट फॉर द नोटिस टू बी गिवन बाय द ओनर, एजेंट और मैनेजर ऑफ ए माइन दैट दैट अकरेंस ऑफ एन एक्सीडेंट इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड प्लेस. अगर कुछ हुआ है तो दैट ऑल्सो दे हैव टू रिपोर्ट. इस तरह से डिफरेंट सेक्शंस में डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोविजंस आर प्रोवाइडेड एंड हियर 22A1 इज द इंस्पेक्टर हैज अ पावर to prohibit the employment in certain situations. अगर उसको लग रहा है कि वहां पे उस तरह के conditions नहीं है, workable conditions. ठीक है, so here D is the correct answer. So as per the Mines Act 1952, again, what is the provision regarding notification of diseases contracted by mine workers as mandated under section 25? As I've said, different sections का अपना different वो provisions है. And as per section 25, जब भी mine में किसी worker को कोई disease होता है, definitely that has to be notified to the गवर्नमेंट, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट, क्योंकि माइंस आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर. सो दैट हैज टू बी नोटिफाइड टू देम ऑन टाइमली बेसिस एंड दिस इज व्हाट section 25 of the Mines Act 1952 says. So here A is the correct answer. So according to the McGregor hot stove rule, which of the following characteristics is essential for maintaining discipline in a workplace? See, discipline कभी maintain करना है workplace में तो definitely there should be some proper rules and they have to adhere to that rules. Okay, so according to McGregor, एक hot stove rule करके उन्होंने एक theory propose किया है. ठीक है. Now इस theory के हिसाब से there are 4 major characteristics that are essential in any workplace to maintain the discipline. Now सबसे पहले characteristic है the immediate feedback, that is when you touch a stove you will burn your hand. Now the burn was immediate, वो तो wait नहीं करेगा, and the pain is a result of your action, so you cannot blame the hot stove for burning your hand. Okay, so rather you should understand your fault and learn
a lesson of not repeating that act. So similarly management भी जब भी कोई गलती होती तो immediately they must take the action against that indiscipline and ensure that it is not directed to any person, क्योंकि उनकी खुद की गलती की वजह से ही वो डिसिप्लिन में नहीं थे। ठीक है, दूसरा आता है प्रायर वार्निंग। नाउ इसमें क्या है, द रेड हॉट स्टव वाज वार्मिंग, ठीक है, वो ऑलरेडी गर्म है एंड वो खुद ही एक वार्निंग है। ठीक है, आप टच करोगे तो डेफिनेटली आप बर्न होगे एंड इफ यू इग्नोर दैट वार्निंग डेफिनेटली दे शुड गेट पनिश्ड, दैट इज कुछ तो फाइन होना चाहिए। सो सिमिलरली अगर कोई इनडिसिप्लिन हुआ है तो डेफिनेटली दैट हैज टू गेट पनिश्ड। यहाँ पे इनडिसिप्लिन का मतलब है हॉट स्टव है, इनडिसिप्लिन टच किया है तो ऑब्वियसली दैट वुड गेट बर्न। सो आपने वर्कर ने कभी इनडिसिप्लिन में कुछ किया, डेफिनेटली ही और शी शुड पे द पेनाल्टी या फाइन या जो भी पनिशमेंट है दैट दे हैव टू टेक। तीसरा है कंसिस्टेंसी। नाउ एवरी टाइम यू टच ए स्टव यू गेट बर्न्ट, मैनेजमेंट मस्ट ऑल्सो बी कंसिस्टेंट इन डिसिप्लिनिंग द अनसेफ एक्ट्स ऑफ वर्क्स। कुछ ऐसा नहीं है कि वो हमारे रिश्तेदार है या फिर ऐसा, एवरीथिंग, अदरवाइज वो डिसिप्लिन रहेगा ही नहीं। कंसिस्टेंट होना चाहिए गलतियों के लिए। नेक्स्ट आता है इम्पर्सनल नेचर, वो कोई भी हो अगर टच करेगा तो जलना ही है हॉट स्टव को। ठीक है, सो मैनेजमेंट शुड अडॉप्ट द सेम अप्रोच, द डिसिप्लिन नो जो भी इनडिसिप्लिन के लिए जो भी पनिशमेंट है वॉट एवर दैट इज दैट इट शुड बी इम्पर्सनल। ओके, सबके लिए एक ही होना चाहिए। सो हियर कंसिस्टेंसी, दैट इज एक ही तरह का पनिशमेंट होना चाहिए, एक ही तरह की गलती के लिए, जो भी इसमें अपनों के लिए बाहर अलग अलग टाइप का नहीं होना चाहिए, एंड इट इज इम्पर्सनल। कोई भी करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलना ही मिलना, अदरवाइज डिसिप्लिन करना बहुत मुश्किल होता है। सो हियर हॉट स्टव रूल के हिसाब से दीज 4 आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट वन शुड फॉलो, एसेंशियल for maintaining discipline in the workplace. So here B is the correct answer. Now, which of the following organizations provide specialized training courses for senior managers, safety officers, supervisors, trade union officials and safety committee members from the industry? Now, जहाँ पे भी see, जब अगर हैजार्ड्स नहीं चाहिए वर्क प्लेस में, सब कुछ अच्छा चाहिए, तो डेफिनेटली ट्रेनिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड ट्रेनिंग वहाँ तो नॉर्मल वर्कफोर्स को जो ट्रेनिंग देना चाहिए दैट वुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर, लेकिन जिनको मीन जो वर्कफोर्स को ट्रेनिंग देना है तो जो ऊपर सीनियर लेवल पे है दे ऑल्सो हैव टू बी ट्रेन, दैट इज कैपेसिटी बिल्डिंग, उनका कैपेसिटी बिल्डिंग होना बहुत ज़रूरी है। हु विल गिव दैट? नाउ दैट वुड बी गिवन बाय द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फैक्ट्री एडवाइस सर्विस एंड लेबर इंस्टीट्यूट्स। वो उनका काम ये है कि दे शुड ट्रेन दीज और दे शुड do that capacity building programs for the senior managers, officials, etc. So here B is the correct answer. What is the primary purpose of employee counseling in the context of occupational safety and health? ठीक है, जब भी हम लोग occupational safety and health के कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे काउंसलिंग का, तो डेफिनेटली वो काउंसलिंग उनका जो एटीट्यूड है, उनका जो हैबिट्स है, जिनकी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस है या फिर हुए हैं, दैट हैज़ टू बी कंट्रोल और चेंज होना है। सो फॉर दैट दिस काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर टू चेंज ह्यूमन वेरिएबल्स लाइक सेफ्टी, एटीट्यूड, habits and assist employees in dealing with such stress. Okay, all these fall under the counseling part. To investigate and address workplace accident, ये उनका काम नहीं है काउंसलर्स का। To provide training, ये भी नहीं है। To conduct performance evaluation and provide feedback, ये भी नहीं। उनका major है to change the human variables like their safety, attitude, habits, etc. and thereby avoid the accidents। और कुछ हुआ है तो so again dealing with the stress, जो भी उनका हो रहा है प्रायर टू एक्सीडेंट और जो प्रिकॉशनरी मेजर्स है वो भी, एंड अगर बाई चांस कुछ हुआ है इवन इन दैट केस दिस वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर। Moving on to our next question. In the context of the occupational safety and health in India, where does the welfare of the workers fall? नाउ ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है बिकॉज दिस इज डन इन एट 3 लेवल्स। जो भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ देखा जाता है इंडिया में, एट सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड प्लांट लेवल। सो तीनों का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है एंड
मेजरली सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. सो लेबर वेलफेयर का जो है, दैट इज वेलफेयर ऑफ द वर्कर्स, दैट फॉल्स अंडर द concurrent list. So here C is the correct answer. Moving on to our next question, at how many levels is occupational health and safety managed in India and what is the responsibility of the Director General? So इससे पहले जो क्वेश्चन था उसी लाइंस में है, बट वो थोड़ा सा अलग है, ये थोड़ा सा अलग है. एंड अगेन हमने डिस्कस तो कर लिया है, ये 3 लेवल्स पे है. सो ये 3 लेवल्स पे है, सेंट्रल लेवल पे है, स्टेट लेवल एंड प्लांट लेवल. एंड डायरेक्टर जनरल इज ऑल्सो द चीफ इंस्पेक्टर ऑफ द डॉग सेफ्टी, जो है DGFASLI का. So here in this case, when we talk about occupational health and safety that is managed in India, वो 3 levels पे होता है. So here B is the correct answer. I hope you have liked this session and आपको ये questions अब अच्छी तरह से use हो आपके examination preparation में. So before winding up, I have a small announcement. Currently at Edutap they're offering various courses for all those students who are targeting the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EOR AO post. ठीक है. नाउ इसमें क्या क्या कोर्सेज है? सबसे पहले है तो मास्टर कोर्स. ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल 1 पॉइंट सोर्स चाहिए उनको सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट्स के लिए, क्योंकि इसमें कई सारे सब्जेक्ट्स हैं, राइट. सो उनके लिए ये बहुत द बेस्ट है, बिकॉज यहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट्स का कंटेंट मिल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ PDFs, वीडियोस, MCQs, चैप्टर टेस्ट, एवरीथिंग, सो दैट आपका जो प्रिपरेशन है बिल्कुल फुल प्रूफ हो. एंड अलॉन्ग विद दैट एवरी वीक आपको कुलदीप सर मिलेंगे, जो UPSC EPFO का वन ऑफ द बेस्ट मेंटर्स हैं. आपको स्ट्रैटेजाइज करेंगे कि किस तरह से आप इतना ज़्यादा कंटेंट को किस तरह से आप अपने एग्जाम में यूज़ कर सकते हो, मतलब एग्जाम प्रिपरेशन में यूज़ कर सकते हो. अलॉन्ग विद दैट जो भी आपके डाउट्स है वो क्लैरिफाई करते रहेंगे. ठीक है. ना दूसरा कोर्स आता है टेस्ट सीरीज प्लस. ये उन बच्चों के लिए जो उनको लगता है ना कुछ सब्जेक्ट्स हम लोग कर लेंगे लेकिन कुछ सब्जेक्ट्स हमें चाहिए कोचिंग, एंड अलॉन्ग विद दैट टेस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए. ये उनके लिए द बेस्ट है. ठीक है. एंड तीसरा है टेस्ट सीरीज. ये उनके लिए है जो बिल्कुल अपना प्रिपरेशन खुद से कर रहे हैं या फिर ऑलरेडी एक बार एग्जाम दे दिया है एंड नाउ लुकिंग एट लुकिंग फॉर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्विजेस एक्सेट्रा. उनके लिए ये बेस्ट है. वन ऑफ बिल्कुल रियल एग्जाम फील के साथ आपको उसी लेवल टाइप का पेपर्स दिए जाएंगे as part of the mock test etc. So these are the 3 courses and description box में सारे information दे दिया गया है. And if you have any doubt you can always reach out to the team and get your doubts clarified, and accordingly you can make an informed decision. Thank you very much, and if you have any doubts you can always reach out to us, and see you all soon with the next video or the next session. Thank you once again. All the best. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, and as part of which आज हम लोग करने वाले हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस. इसमें जितने भी टॉपिक्स है ओके वो सब हमने कर लिया था. कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स जो कुछ लेफ्ट और कहीं पे कुछ है टॉपिक जो जहाँ पे थोड़ा सा अदर इन्फॉर्मेशन डालना है, ऐसे कुछ उस तरह के टॉपिक सारे हम लोग इस 2 पार्ट्स में कर लेंगे. ठीक है. सो मिसलेनियस टॉपिक्स पार्ट 1. Now when it comes to this series, especially labor laws and industrial relations, ये one of the most important topics है आपके UPSC EPFO एग्जाम के लिए, be it APFC और A और EO दोनों के लिए भी ये important है. Why? Because 120 questions में से 15 plus questions इसी में से आते हैं, so you can understand the kind of importance that is attached to it. And अगर आप basics भी सही से कर लोगे, बहुत अच्छी तरीके से practice कर लोगे, revise कर लोगे, now you should be able to solve 10 plus questions easily. So with this you can understand the kind of high weightage attached to it. So I suggest you to go through this series regularly so that जो आपका practice है या revision है वो सही से हो जाए. And moreover we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon. So वहाँ पे भी आपको ये important रहेगा. So with this let me start today's session. So coming to the first question, when was the Universal Declaration of Human Rights proclaimed by the United Nations General Assembly?
Now when we look at this particular declaration, ये actually एक document है in the history of the human rights, बहुत ही important document है, and it was it was drafted by various representatives from different legal and cultural backgrounds from all parts of the world, जितने भी regions है वो सब आए थे, and then it was proclaimed in the यूनाइटेड नेशंस और बाय द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, क्योंकि उनके थ्रू ही ये हुआ है, एंड दिस वाज डन और दिस हैज हैपेंड ऑन 10th December 1948. So here B is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following is not explicitly covered under the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights? Now ये एक human rights का key treaty है, okay, and this has been adopted by the United Nations General Assembly. ये वाला हुआ था 16th December 1966 and it came into force on 3rd January 1976. ठीक है, एंड इससे क्या है, दिस कमिट्स टू वेरियस economic, social and cultural rights of the individuals. So that include right to fair wages and social security, right to education and adequate living standards, right to highest attainable standards of health, everything all associated with this. So ये तीनों ही उसमें covered है. So here none of the above would be the answer. And when it comes to the SCR, this is monitored by the Committee on Economic, Social and Cultural Rights. ठीक है, ये इसको मॉनिटर करता है. So here D is the correct answer. So moving on to our next question, which article of the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, जो अभी हमने पढ़ा था कि कब हुआ, कैसे हुआ, it explicitly recognizes the right of everyone to social security including social insurance. ये कौन से आर्टिकल में हाईलाइटेड है? See, as we can see, ये कई सारे आर्टिकल्स है that have been incorporated under ICESCR, एंड उसी के तहत जो जितने भी रिलेटेड टू इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल राइट्स है उसके लिए जो ह्यूमन राइट्स का रिलेटेड है, दैट ऑल इज इनकॉर्पोरेटेड हियर. सो जो द राइट ऑफ एवरीवन टू सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग सोशल इंश्योरेंस, ये आता है आर्टिकल 9 में. सो हियर बी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question, according to Article 10 of the ICESCR, which of the following protections is specifically mentioned for वर्किंग मदर्स? ठीक है, जैसे मैंने बताया है कि ICESCR में कई सारे आर्टिकल्स हैं एंड उसमें आर्टिकल 10 स्पेशली एसोसिएटेड विद द वर्किंग मदर्स, और इसमें इन्होंने ये क्लियरली मेंशन किया है कि पेड लीव और लीव विथ एडिक्वेट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट शुड बी प्रोवाइडेड टू द एक्सपेक्टेंट मदर्स एंड the new mothers जो immediately after the childbirth होता है. So here they can't deny them their this paid leave and all that along with social security benefits. So this is their right and this is what article 10 of the ICESCR says. So ये हो गया हमारा A is the correct answer here. बाकी अपने अपने हिसाब से वो कंट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशंस अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से कर सकते हैं, बट दिस इट इज एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड हियर. सो हियर इज द करेक्ट आंसर. So under Article 5 of the Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination, state parties are required to. So यहाँ पे when we look at this particular article, now this states that without a distinction or discrimination related to race, color, national or ethnic origin, everyone would be equal before the law, and जो भी उनके associated right to public health, medical care, social security, social services, everything should be provided to them irrespective of their race, ethnicity, etc. So here it prohibits and eliminates racial discrimination in all its forms. ठीक है, promote racial नहीं, restrict access to public health based on no, grant preferential legal status no, ये भी नहीं है. So here B is the, बिल्कुल logically भी देखा जाए तो B is the correct answer. D थोड़ा सा लग रहा है but partially correct है, okay, but otherwise B is the correct answer here. So moving on to our next question, according to the Article 11 of the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, women have the right to social security in which of the following cases?
Now here when we look at this convention, the name itself suggests, जो टाइटल है कई सारे, अभी इससे पहले वाले में भी जो टाइटल है उसी में से आपको समझ में आ रहा है कि ओके वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट है, तो थोड़ा सा लॉजिक अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा. इन दिस ऑल्सो इट्स द सेम केस. ओके, एंड व्हेन वी लुक एट द वुमेन हैविंग द राइट टू सोशल सिक्योरिटी इन ऑल फॉर्म्स, एक्चुअली रिटायरमेंट के टाइम पे, अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे, सिकनेस, invalidity, old age and other incapacity to work, in all these cases women have right to the social security. So here C is the correct answer. Under Article 26 of the Convention on the Rights of the Child, what obligation do state parties have regarding the social security for children? Now, when we talk about social security for the children under this convention, every child has a right to benefit from social security, including social insurance. And the state shall take all measures to achieve full realization of this particular right, in accordance with the whatever the measures that they have they have incorporated as per their nation's laws. ठीक है, so here it recognizes every child's right to benefit from social security including social insurance. A is the करेक्ट आंसर. बाकी ऑप्शंस भी एक बार देख लेंगे. प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स ओनली टू चिल्ड्रन फ्रॉम लो इनकम फैमिलीज, ऐसा नहीं, एक्चुअली दे हैव टू प्रोवाइड, बट यहाँ पे राइट की बात हो रही है. सो एवरी चाइल्ड हैज दैट राइट. Offer social security benefits only in case of disability or orphan, because here again I reiterate my point, this is we are talking about the rights. So every child has that right, be it disabled, be it from local low income family, etc. Now based on again their categories, us nation ke jo bhi laws hai that can be applicable. Otherwise every child has a right to benefit from the social security. Ensure free education, a substitute for social security benefits nahi, wo alag hai, ye alag hai. So here A is the correct answer. So moving on to our next question. The William Beveridge Report 1942 identified 5 major social challenges, which are also known as the 5 giants on the road of reconstruction. Okay, जो हम लोग कई सारे क्या बोलते हैं इनएफिशिएंसीज या कई सारे डेफिशिएंसीज को जिस तरह से हम लोग सब करेक्ट करते हुए human rights and everything we are taking into consideration, we are trying to construct such a path that leads to one of the harmonious worlds. So for which he has said that 5 giants in that road of construction. Now which of the following is not one of them as per this question? Now when we look at this report is officially titled as the Social Insurance and Allied Services, and ये publish हुआ था November 1942 में. Now in this report only he has identified this, which has एक बेस बन गया है जितने भी आगे जाके जो रिपोर्ट्स आए हैं या फिर कुछ वर्क हुआ है उसके अगेंस्ट. सो यहाँ पे जो 5 जो चैलेंजेस है, 5 जायंट्स ऑन द रोड ऑफ रिकंस्ट्रक्शन, वो तो है सबसे पहले वांट. नाउ दिस वांट, क्योंकि उनका पॉवर्टी है, पॉवर्टी एंड लैक ऑफ बेसिक नेसेसिटीज, दिस इज वन मेजर हर्डल. नेक्स्ट आता है डिजीज. नो इट फोकसेस ऑन द नीड ऑफ द हेल्थ केयर एंड द प्रिवेंशन ऑफ द इलनेस, क्योंकि ऑलरेडी डिजीज है, वो बड़ा सा हर्डल है जिसको हमें पार करना है. तीसरा आता है इग्नोरेंस. Now this addresses the importance of education and knowledge. So ignorance को अगर हमें उस hurdle को पास करना है तो education provide करना है. And fourth आता है squalor. Now ये deal करता है with poor living conditions and inadequate housing, मतलब बिल्कुल they are homeless type and they are not having जो बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी नहीं है. ये भी बहुत बड़ा हर्डल है हमें जो उस तरह का वर्ल्ड अचीव करना है, तो बिल्कुल हारमोनियस वाला. एंड फिफ्थ आता है हमारा आइडलनेस. इट हाईलाइट्स द नीड फॉर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड कॉम्बैटिंग अनएम्प्लॉयमेंट. बिल्कुल खाली नहीं रहना देना चाहिए, जो अगेन दैट विल बिकम, बोलते हैं ना आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप, लाइक उस तरह से. सो हियर ये 3 है, एंड एज आई सेड अदर्स जो इग्नोरेंस स्क्वालर है, बट करप्शन इज नॉट एज पार्ट ऑफ हिज रिपोर्ट, क्योंकि इस टाइम से होगा भी नहीं इसलिए. सो हियर सी इज द करेक्ट आंसर. Moving on to our next question. The Aykroyd formula used for determining salary increments is based on which 3 fundamental aspects? Now when we come to India, जो
सेंट्रल पे कमीशन है. ओके, नाउ 7th CPC इज द लास्ट द पे कमीशन. नाउ जो नेक्स्ट कमीशन आएगा that would provide the increment, and that would be decided based on this formula only. This is what they have decided. And if you look at the Minimum Wages Act also of 1948, it has not laid down any criteria for fixing the minimum wages in India. दो उन्होंने एक प्रोसीजर मेंशन किया है कि इस तरह से करना है, लेकिन क्राइटेरिया कौन सा हम लोग लेके things या points लेके हम we can arrive at that minimum wages. Now that is as per ICROID formula ये बोलते हैं कि ये 3 aspects को हमें देखना है, एंड उसमें न्यूट्रिशन का भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है, एंड बेस्ड ऑन दैट वी हैव टू कैलकुलेट द जो भी सैलरी इंक्रीमेंट्स देना है, that one has to look into. And here those 3 aspects that he has mentioned explicitly, they are cloth, food and shelter. ठीक है, ये B is the correct answer here. Moving on to our next question. Robert F. Hoxie is known for his work on which of the following aspects of labor organization? Now ये एक प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स में एंड एट द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो, एंड इन्होंने क्या किया, ही मेजरली डिस्क्राइब्ड अबाउट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द आइडिया ऑफ फंक्शनल लेबर टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस बेस्ड ऑन द जो वर्कर्स है उनका टेम्परमेंट कैसा है, बेस्ड ऑन देयर उनका इंटरेस्ट या कैसा है, किस तरह से वो ट्रेनिंग का वो ले सकते हैं. बेस्ड ऑन ऑल दिस ही हैज कम अप विथ वेरियस टाइप्स ऑफ दैट इज फंक्शनल टाइप्स ऑफ ट्रेड यूनियंस उन्होंने ये दिया था, एंड हियर in this case that C is the correct answer. So Robert F. Hoxie is known for his work on the establishment of functional type of trade unions based on the kind of workers who are there. So here C is the correct answer. जैसे हॉक्सी ने बताया है, as per him, as I've said, functional ट्रेड यूनियंस को उन्होंने डिफरेंट टाइप्स बताया है. अब एग्जाम्पल बेस के थ्रू हम लोग देखेंगे कौन से वो यूनियंस है. A manufacturing company is facing demands from its workers union for higher wages and better working conditions. The union is not raising broader political or social issues but is solely focused on negotiating better pay and workplace benefits through collective bargaining. ठीक है, based on this approach, which type of union does the scenario best represent? Now when we look at this kind of scenario, ये simple bread and butter unionism है, मतलब उनका जो basic need है that has to be fulfilled, and उसी के लिए वो कलेक्टिव बार्गेनिंग कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहा है तो दे कैन इवन कॉल फॉर स्ट्राइक एक्सेट्रा, बट बेसिकली दे आर लुकिंग एट दैट ओनली द बेसिक नीड्स. सो ये जनरली होता है द टाइप ऑफ यूनियन दैट इट हैज, दैट इज बिजनेस यूनियन. इसी को ब्रेड एंड बटर यूनियन भी कहा जाता है. सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द बिजनेस यूनियन. दे लुक एट ओनली बेसिक नीड्स ऑफ द वर्कर्स. Moving on to our next question. A workers' union in a textile company establishes educational programs, cooperative enterprises, and profit sharing schemes to improve the moral, intellectual, and social well-being of its members. While it also engages in collective bargaining and political actions, its primary focus is on uplifting the workers' overall quality of life. Which type of union does this best represent? तो यहाँ पे दे आर गोइंग वन स्टेप अहेड एंड ट्राइंग टू बूस्ट द मोरल, इंटेलेक्चुअलिटी एंड सोशल वेलबीइंग ऑफ इट्स मेंबर्स, जो मतलब वर्कर्स है. सो हियर दे आर लुकिंग एट द अगेन क्वालिटी aspect, and here this kind of union is functional, this kind of functional type of union is friendly or uplift union. So here B is the correct answer. Moving ahead to the next question. A labor union in a factory actively opposes private ownership of industries and advocates for the complete replacement of the capitalist system with a socialist structure. बिल्कुल जो मार्क्सिज्म वाला वो है ना वो, and it engages in both industrial and political action, sometimes resorting to strikes and direct confrontation to achieve its goals. And based on this approach, which type of union does this scenario best represent? And ये पूरा अगर आप देख रहे हो, it all is looking kind of highly revolutionary method of union.
ओके उस तरह का ये फंक्शनल टाइप ऑफ यूनियन है। एंड हियर द नेम इटसेल्फ सजेस्ट जिस तरह का दिख रहा है, एक तो बिजनेस यूनियन तो हो नहीं सकता, फ्रेंडली और अपलिफ्ट भी यूनियन नहीं है, वो हमने देख लिया। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेवोल्यूशनरी यूनियन। Which of the following characteristics best distinguishes predatory unionism from dependent unionism? Now predatory में क्या है, यहाँ पे these unions belong to such kind of category where it is a leader based, मतलब उनका मेजरली कोई आइडियोलॉजी टाइप का नहीं होता है, बट यस दे कंप्लीटली रिलाई ऑन द लीडर, लीडर जिस तरह से बोलता है उस तरह से। वही डिपेंडेंट यूनियनिज्म क्या है, इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ मेंबर्स दैट आर देयर। okay so here it depends or relies on the workers and labor groups for its survival और जो भी उसका आइडियोलॉजी है। so here B is the correct answer. predatory unions entirely depend on employees, no actually वो होता ही नहीं। predatory unions focus on ideological struggles, no इनका कोई आइडियोलॉजी नहीं होता है, जो भी उनका बॉस है उनके हिसाब से चलता रहता है। predatory unions use legal frameworks to negotiate wages, no यहाँ पे this is what it is and it is leader based and may collaborate with employers for mutual benefit, क्योंकि अकेले है वो पूरा देखना था, that all they look into, while dependent unions rely on workers and labor groups for their survival. Here they look at the employers actually. So here B is the correct answer. I hope you have liked this session, and before winding up this session I have a small announcement. Currently Edutap is offering various courses for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination for both APFC and EOR AO exams. तो यहाँ पे उन्होंने 3 तरह के कोर्सेज लॉन्च किया है बेस्ड ऑन द डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जिनका रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सबसे पहले आता है मास्टर कोर्स। नाउ ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल अपना क्या कहते हैं नो कंटेंट पूरा 1 पॉइंट सोर्स चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट का कंटेंट उनको चाहिए पूरा पूरा comprehensive. So here you will be getting the content in the form of PDFs, videos, live classes, chapter quizzes, ओवरऑल जो भी क्विजेस होते हैं सब आपको मिल जाएंगे। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट लाइव क्लासेस के साथ साथ एवरी वीक कुलदीप सर आपसे मिलेंगे, मतलब ऑनलाइन मिलेंगे, एंड ही विल टेक यू थ्रू वेरियस स्ट्रैटेजीज ऑन हाउ टू यूटिलाइज द कंटेंट दैट हैज बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड टू यू ऑल। सो उससे क्या है, जो भी स्ट्रैटेजी बनाना है वो बहुत आसानी से बना के, एंड यू कैन यूटिलाइज द एंटायर कंटेंट वेरी एफिशिएंटली। एंड दूसरा आता है टेस्ट सीरीज प्लस। ये उन बच्चों के लिए जो कुछ सब्जेक्ट्स खुद से कर लेते लेकिन उनके लिए कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स के लिए मेंटरशिप चाहिए, एंड अलोंग विद दैट प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी चाहिए। सो ये उनके लिए बेस्ट है। ठीक है, एंड तीसरा आता है टेस्ट सीरीज। ये उन बच्चों के लिए है जो प्रिपरेशन अपने हिसाब से ऑलरेडी कर लिया है या फिर एक बार एग्जाम दे दिया, एंड नाउ दे आर स्काउटिंग आउट फॉर सम क्विजेस या मॉक टेस्ट सो दैट एक रियल एग्जाम का फील आ जाए और प्रैक्टिस या रिविजन हो जाए, ये उनके लिए द बेस्ट है। सो अकॉर्डिंग टू द कोर्सेज दैट आर बीइंग ऑफर्ड, जो आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, यू कैन चूज फ्रॉम दैट, एंड इफ यू हैव एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू द टीम। एंड बाकी सारे इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है, आप एक बार चेक कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच। So see you all soon with the next part, and a very all the best. Thank you once again. Hello friends, welcome to Edutap and welcome to the series that we have started exclusively for the upcoming UPSC EPFO 2025 examination, wherein we'll be doing 15 MCQs in a session, as part of which आज हम लोग करने वाले हैं industrial relations एंड मिसलेनियस टॉपिक्स, क्योंकि जो जनरली हमने जितने भी एसोसिएटेड टॉपिक्स से रिलेटेड टू द इंडस्ट्रियल रिलेशंस वो सब हमने कर लिया है। उसके बाद भी कुछ इधर उधर कुछ छोटी मोटी जब अगर बच गए तो ऑल वी हैव कवर्ड अंडर ए स्पेसिफिक चैप्टर कॉल्ड एज मिसलेनियस टॉपिक्स। उसी में से मैंने 2 पार्ट्स में क्वेश्चंस बनाए सो दैट यू शुड नॉट मिस आउट ऑन दैट टू। ओके, उसी में ये पार्ट 2 है। ओके, सो विद दिस ये हमारा बिल्कुल क्लोज है इंडस्ट्रियल रिलेशंस का topic as such. So here we are, and this series is very much important for your examination जो आप UPSC EPFO के लिए prepare कर रहे हो for both APFC
एंड ईओ और एओ दोनों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट रहेगा, बिकॉज जो 120 क्वेश्चंस पूछते हैं मतलब एज पार्ट ऑफ द पेपर पैटर्न, उसमें 15 प्लस क्वेश्चंस लेबर लॉस एंड इंडस्ट्रियल रिलेशन से ही आते हैं. सो विद दिस यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ इंपॉर्टेंस अटैच्ड टू दीज टॉपिक्स. ओके, कितना हाई वेटेज है. एंड एट द सेम टाइम अगर बेसिक्स भी आप सही से कर लोगे, सही से रिवाइज कर लोगे, ओके, ये इन टॉपिक्स का, सो यू शुड बी एबल टू क्लियर 10 प्लस क्वेश्चंस बहुत आसानी से. So with that you can understand the kind of high scoring potential that it has got. So बहुत ही important topic है and I suggest you to go through these sessions regularly, क्योंकि जो भी हम लोग यहाँ content cover कर रहे हैं that is in the form of MCQs. तो आपका एक revision भी हो जाएगा and practice भी हो जाएगा, ठीक है. And moreover we are expecting the UPSC EPFO 2025 notification very soon, so this is going to help you a lot in your preparation. So with this let me start today's session. Moving on to our first question, Article 246 of the Indian Constitution is significant because it deals with. Now, when we look at the Article 246, it is in the 7th schedule of the Indian Constitution that mentions three lists, namely union list, state list and concurrent list. And ये specify करता है the division of the power between the union and the states, कि किसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसका क्या पावर्स है, एंड अकॉर्डिंगली हाउ दे कैन वर्क अकॉर्डिंग टू द पावर्स दैट हैव बीन गिवन टू देम, एंड अकॉर्डिंगली वो जो भी सिटीजन्स के लिए required है that they have to do under their purview. So here it deals with the division of powers between the union and states through union, state and concurrent list. ये is the correct answer. So moving on to our next question, which of the following subjects is not included in the union list under the 7th schedule of the Indian Constitution? When we look at the union list, there are a lot that has been added into this, like industries, the control of which by the union is declared by the parliament law to be expedient in the public interest. like जो इंडस्ट्रीज इनको देखना, जैसे कि माइंस हो गए, ऑयल फील्ड्स हो गए, जो एक्सप्लिसिटली बहुत ज़्यादा हाई डिफेंस वाला हो गया, ये सारा यूनियन सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है. बाकी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का रहता है, जो रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज है. या रेगुलेशन एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ऑयल फील्ड्स, एज आई हैव सेड अर्लियर, रेगुलेशन ऑफ द माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट, रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी ऑफ माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग द यूनियन एम्प्लॉयज, ये पूरा यूनियन लिस्ट का ही है. सो रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल ऑयल रिसोर्स, ये यूनियन लिस्ट में ही आता है. रेगुलेशन ऑफ लेबर एंड सेफ्टी इन माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, ये भी यूनियन लिस्ट में ही आता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज, ये भी इसी में आता है. रेगुलेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस एंड इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एट द स्टेट लेवल, ये यूनियन का नहीं है, ये स्टेट लेवल का डिस्प्यूट है. समटाइम्स इफ यू इश्यूज अगेन वो कॉन्करेंट में आता है, सो दैट दोनों का रिस्पॉन्सिबिलिटी जहाँ पे भी है सेंट्रल एंड स्टेट का, दे कैन लुक इनटू इट. सो हियर डी इज द करेक्ट आंसर. So which of the following subjects fall under the state list as per the 7th schedule of the Indian Constitution? इसमें कई सारे हैं, like relief for the disabled and unemployable, state pension, that is to say the pension जो भी payable है by the state or out of the consolidated fund of the state, taxes on professions, trade, callings, employments, ये ऐसे सारे आपके स्टेट लिस्ट में आते हैं. इसके अलावा और भी कई सारे, कुछ मैंने यहाँ हाईलाइट किया है बस, ठीक है. यहाँ पे रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट एक्चुअली यूनियन का आता है, यूनियन लिस्ट में आता है. इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स कंसर्निंग यूनियन एम्प्लॉयज, ये भी यूनियन में आता है, यूनियन लिस्ट में. रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑयल फील्ड्स एंड मिनरल ऑयल रिसोर्सेज, ये भी यूनियन लिस्ट में आता है. टैक्स ऑन प्रोफेशंस, ट्रेड्स, कॉलिंग्स एंड एम्प्लॉयमेंट का जो भी है, दैट ऑल फॉल्स अंडर स्टेट लिस्ट. तो इसका ये स्टेट की responsibility. So here B is the correct answer. Moving on to our next question, under the concurrent list, जो दोनों की responsibility होती है, list of the 7th schedule of the Indian Constitution, which of the following subjects is covered? इसमें कई सारे हैं, जैसे कि ट्रेड यूनियंस है, इंडस्ट्रियल एंड लेबर डिस्प्यूट्स, कई बार दोनों का होना जरूरी होता है इन रिजॉल्विंग देम. सोशल सिक्योरिटी, सोशल इंश्योरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट, ये भी कॉन्करेंट है, दोनों का है. वेलफेयर ऑफ द लेबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये कॉन्करेंट लिस्ट में ही आता है. कई बार हमने इंडस्ट्रियल रिलेशंस में हाईलाइट किया है कई चैप्टर्स में, because it is important. And including the conditions of the work, provident fund, employers liability, workmen's compensation, invalidity and old age pensions, maternity benefits, ये पूरा इसी में आता है.
along with that education including the technical education, medical education, universities, vocational and technical training of labor, all these fall under concurrent list. ठीक है, so here in this case रेगुलेशन ऑफ माइंस एंड मिनरल डेवलपमेंट ये यूनियन में आता है, रिलीफ फॉर द डिजेबल्ड एंड अनएम्प्लॉयबल ये भी स्टेट वाले में ही आता है, स्टेट पेंशन पेएबल बाय द स्टेट ये तो स्टेट का ही है। सो इसमें आप देख सकते हो कई बार ऐसा होता है कि एक ऑप्शन तो आप बिल्कुल स्ट्रेट अवे निकाल सकते हो, बाकी तीनों में से कई बार ऐसा पार्शियली करेक्ट टाइप का होता है, सो यू हैव टू ना थोड़ा सा ऑड मैन आउट टाइप का एक ऑप्शन तो आराम से निकाल सकते हो, बाकी तीन में ही है जो आपका आंसर छुपा होता है। ओके, सो वेलफेयर ऑफ लेबर इंक्लूडिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी बेनिफिट्स ये आता है कॉन्करेंट में, मतलब ये दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो हियर ए इज अ करेक्ट आंसर। सी देखिए कई सारे कॉन्सेप्ट्स है वेजेस का, किस तरह से वेजेस का रिकॉग्निशन होता है या डेवलपमेंट होता है। सो हियर उसी के ऊपर एक कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस है, तो दैट वी आर लुकिंग इनटू। अ मेजर टेक्नोलॉजी फर्म इज एक्सपेंडिंग रैपिडली, increasing the demand for software developers with expertise in artificial intelligence, जो बिल्कुल अभी का situation है। However, there is a shortage of such skilled professionals in the job market, क्योंकि नया नया है तो टाइम तो लगेगा ही, बट डिमांड बहुत ज़्यादा है जिस तरह का वर्क चल रहा है। अकॉर्डिंग टू द कमोडिटी कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस, व्हाट इज द मोस्ट लाइकली आउटकम इन दिस सिचुएशन। नाउ थोड़ा सा हम कमोडिटी कॉन्सेप्ट का देख लेते हैं। जो कमोडिटीज का है वो उसका प्राइस फिक्सेशन कैसे होता है, बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड, राइट। सो सप्लाई एंड डिमांड के बेसिस पे उनका प्राइस डिटर्मिनेशन होता है। सिमिलरली यहाँ वेजेस भी इट वुड बी बेस्ड ऑन द सप्लाई एंड डिमांड कॉन्सेप्ट। सो हियर जैसे एआई डेवलपर्स, एआई सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की कमी है बट उनका डिमांड ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली उनका जो वेजेस है वो इंक्रीज होंगे due to the limited supply. So here the wages of AI software developers will increase due to limited supply. The wages of AI software developers will decrease due to increased demand. No. The wages of AI software developers will remain constant regardless of the supply and demand. No. The company will reduce job opportunities to stabilize wages. No. ये correct answer है. Here B is the correct answer. Moving on to our next new concept of wages. A large manufacturing company introduces an automated production system, reducing the need for manual labor. As a result, many workers are laid off while the remaining employees are expected to maintain the high productivity levels. This scenario best reflects which concept of wages. नाउ ये जो कॉन्सेप्ट का जो हम लोग बात कर रहे हैं, हियर इट डिटरमाइंस द वैल्यू ऑफ द लेबर बाय द वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड द प्रॉफिट, so completely mechanized. So here this type of concept of wage determination, this is called as machinery concept. ठीक है, so here क्योंकि वहाँ जो है I mean जो वर्कर्स है उनको ले ऑफ किया है बिकॉज नए मशीनरी आई है एंड कंप्लीटली उसका हाई प्रोडक्टिविटी लेवल्स चाहिए। सो हियर नो एज नो जो इक्विपमेंट ऑपरेट कर रहे हैं दैट it will produce the productivity will be much higher when compared to the manual labor, and that's what it looks into. Completely focuses on the value of goods and profits, based on which only the value of labor is recognized. So here B is the correct answer. A technology startup introduces a profit sharing plan where employees receive a percentage of the company's annual profits in addition to their regular wages. This approach aligns with which concept of wages? ये actually बहुत ज़्यादा चल रहा है अभी, so that it can foster a stock ownership plans, वो ESOPs type का भी employee stock option plan, या फिर जिस तरह से वो एक ओनरशिप टाइप का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप का आ जाएगा, ठीक है। एंड हियर मेजरली द नेम इटसेल्फ सजेस्ट प्रॉफिट शेयरिंग है, मतलब ना एक पार्टनर टाइप का हो गया ना उसका। सो हियर दिस काइंड ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ वेजेस इज कॉल्ड एज पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। Moving on to our next question. A company and its labor union agree on a policy where all employees benefiting from union negotiated wages and working conditions must either join the union or pay some representation fees. Now this agreement is primarily designed to prevent which of the following issues?
See, before that ये आता है under the union security agreement which is a contractual agreement usually part of the collective bargaining. ठीक है, उसका जो collective bargaining agreement होता है उसी का एक part होता है in which employer and trade or the labor trade union या labor union जो भी है they'll come to agree on the extent that कि union कितना compel कर सकता है employees को to join the union. Okay. और वो कितना ड्यूज कलेक्ट कर सकता है या फिर फीस कलेक्ट कर सकता है ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन, दैट ऑल दे एग्री. व्हाई दिस एग्रीमेंट इज इंपॉर्टेंट? सी कई बार ऐसा होता है कि नो कलेक्टिव बार्गेनिंग करना पड़ता है, कई बार उसमें दे हैव टू फोरगो देयर, अगर उनको कुछ अपॉर्चुनिटीज है दैट, जैसे कि कोई उनको एक्स्ट्रा ओटी मिल रहा है बट स्टिल दे हैव टू गो फॉर सम नेगोशिएशन एंड दे आर फोरगोइंग दैट. दिस ऑल बिकॉज दे आर डूइंग दैट वर्क. सो और ये सब रन करने के लिए भी उनको कुछ तो फंड्स चाहिए. ठीक है ना, कुछ जो वर्कर्स है कुछ तो ज्वाइन हो जाते हैं उसमें, कुछ जो भी मेंबरशिप फी है वो पे करके ज्वाइन हो जाते हैं, लेकिन कई लोग ज्वाइन नहीं होते. लेकिन जब कलेक्टिव बार्गेनिंग होता है, जब काम होता है, सो वॉट एवर द रिजल्टेंट ऑफ दैट वर्क जो और बार्गेनिंग, जो वेजेस इंक्रीज हो गया या फिर वर्किंग कंडीशंस का इंप्रूवमेंट हो गया, दैट वुड बी एप्लीकेबल टू ऑल even irrespective of the fact that few of them haven't paid a single rupee to the union but still they are enjoying the benefits. So ये एक फ्री राइडर प्रॉब्लम है जो बिल्कुल दूसरे को जो मिल रहा है. इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट दे कंपेल कि कुछ तो उनको रिप्रेजेंटेशन फी या यूनियन रजिस्ट्रेशन फी कुछ तो उनको पे करना पड़ेगा. दिस काइंड ऑफ यूनियन सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो है दैट इज टू प्रिवेंट द फ्री राइडर प्रॉब्लम. ओके, एम्प्लॉयर डोमिनेंस और नहीं, डिस्प्यूट्स बिटवीन द डिफरेंट लेबर यूनियंस नहीं, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन वेज नेगोशिएशंस नहीं. ये मेजरली फ्री राइडर प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए ये करते हैं. अब इससे पहले क्वेश्चन में हमने देखा था कि यूनियन जो सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, मेजर है, वो व्हाई दे हैव टू टेक दैट, व्हाट इज द रीजन. ओके, एंड वो होता क्या है वो हमने देख लिया है. नाउ इन दिस क्वेश्चन वी लुक एट द टाइप्स ऑफ यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स और एग्रीमेंट्स. सो 3-4 तरह के हैं, दैट 3 मेजरली. सो उसी का इसमें हम लोग एक पूरा कवर कर लेते हैं. सो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स और एग्रीमेंट्स. 1 सेकेंड. यस. So in a closed shop एक टाइप है, an employer can hire anyone but the employee must join the union within a set period. एक्चुअली ये गलत है. वाई? बिकॉज क्लोज्ड शॉप टाइप का जो यूनियन सिक्योरिटी मेजर होता है इसमें फर्स्ट द एम्प्लॉयर विल हायर ओनली दैट पर्सन हु इज पार्ट ऑफ दैट यूनियन. कंपल्सरी पहले यूनियन में रजिस्ट्रेशन होना पड़ेगा, ओनली देन ही विल बी एलिजिबल फॉर दैट जॉब. ठीक है, तो ये गलत है, फॉल्स है. In an agency shop, employees who choose not to join the union are still required to pay a fee to cover collective bargaining cost. ये true है, इसको agency shop और उस type of agreement बोलते हैं. In a fair share provision, non-union members, employees must pay a fee similar to the agency shop fee, but with more restrictions on what may be charged. कितना charge होगा, कैसे होगा, that all would be little bit stringent. Yes, this is also true. Okay. And dues checkoff refers to an agreement where the employer deducts the union related fees from the employee's paychecks and transfers them to the union, and this is also true. ये ना 4 टाइप के जो यूनियन सिक्योरिटी मेजर्स या एग्रीमेंट्स है दैट आर as part of the union security measures or agreement. So here 2, 3 and 4 are correct, so here B is the correct answer. Yes, B is the correct answer. According to Webb's theory of industrial democracy, how does a market pressure impact wages and working conditions? See, according to this theory, now the entire chain of supply involves the worker, employer, wholesaler, retailer, consumer, everyone. But the pressure that is created by the customer due to comparative pricing या जो भी pricing in the market, compare करते रहते हैं ना, that will actually वो प्रेशर हर लिंक पे वो दिखता रहता है. ठीक है, लेकिन वो प्रेशर सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है एंड एक्यूमुलेट होता है पूरा प्रेशर एट द एम्प्लॉयर लेवल. ठीक है ना, एम्प्लॉयर लेवल पे जब वो आता है इवेंचुअली उस प्राइसिंग जो मार्केट में जो कंपैरेटिव प्राइसिंग का जो प्रेशर है दैट ही हैज़ टू डील विथ एंड दैट फोर्सेस एम्प्लॉयर to either cut production cost
एंड जनरली प्रोडक्शन कास्ट कैसे कट कर सकते, क्योंकि मार्केट जो रॉ मटेरियल तो उसी उतना ही है, इनके लिए तो कम नहीं कर रहे हैं, एंड दैट गोज ऑन टू रिड्यूस द वेजेस. सो हियर व्हेन वी लुक एट द वेब्स थियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी, सबसे इम्पैक्ट होता है, जो प्रेशर फील होता है एम्प्लॉयर पे, एंड दैट हिल टेक केयर हियर इन द form of reducing the wages. So pressure from customers for lower prices forces employers to cut production cost, often by reducing the wages. This is what Webb's theory of industrial democracy says. According to Cole's theory of union control of industry, what is the ideal way to manage industrial production? Now this particular Cole's theory actually पढ़ता है both Webb theory एंड मार्क्स थियरी के बीच में. मार्क्स थियरी में क्या है, बिल्कुल लेबर का ही वो वहाँ पे देखते हैं फोकस, एंड वेब का क्या है, अगेन एम्प्लॉयर की तरफ से. नाउ दिस यू कैन से दैट इन बिटवीन इट फॉल्स. सो हियर he says that the entire control of the industry should be in the hands of the true producers. यहाँ true producers कौन है, जो employers, ठीक है, वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब कुछ कर रहे हैं, बट स्टिल ट्रू प्रोड्यूसर्स है वर्कर्स, एंड दिस द एंटायर जो भी कंट्रोल है दैट दे हैव टू मैनेज with the help of the states. In simple words, if you look at, workers should run the show with some help from the government, and it's like a teamwork between the workers and the state. And ये जो employees that would be like, it's simple like facilitators. Okay, so here workers should control the industries in partnership with the state. That's what Cole's theory of union control of industry says. ठीक है, बिल्कुल बीच में पड़ता है, and C is the correct answer here. So I really hope that you have liked this series जो industrial relations का भी हमने complete किया है. This is the last leg of that particular topic. और भी topics आएंगे आगे, but industrial relations में ये last topic है. And I hope you have liked this series, and you have utilized this in the best इंटरेस्ट ऑफ ये जो भी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन है आपका, APFC का होगा या फिर A और EO का होगा. एंड आई विश यू ऑल अ वेरी ऑल द बेस्ट जो आपका एग्जाम प्रिपरेशन है, एंड फॉर द एग्जाम एज वेल. थैंक यू वेरी मच. दोस्तों आई होप आप लोगों ने वीडियो कंप्लीटली देख ली होगी और आप लोगों को इस कंपोनेंट को कवर करने में इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प करी होगी. दोस्तों अगर आप इसी तरीके से APFC और EO एग्जाम के बाकी कंपोनेंट्स को भी कवर करना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए 3 डेडिकेटेड कोर्सेज लॉन्च कर रखे हैं, जिनमें सबसे पहले है मास्टर कोर्स. इस मास्टर कोर्स में हमने APFC और EO एग्जाम के हर एक कंपोनेंट को कंप्रेहेंसिवली कवर किया है विद द हेल्प ऑफ चैप्टर वाइज वीडियोस, चैप्टर वाइज नोट्स एंड चैप्टर वाइज क्विज. उसके साथ साथ आप लोगों को APFC एग्जाम के 5 और EO एग्जाम के 5 फुल लेंथ मॉक्स देखने को मिलेंगे, प्लस वीकली मेंटर टॉक सेशन भी यहाँ पर कंडक्ट होते हैं. तो सेकंड कोर्स है स्पेशल सब्जेक्ट का कोर्स. ये उन बच्चों के लिए है जिन्होंने GS एंड QRE अच्छे से कवर कर लिया है, जिनके उनको सिर्फ प्रैक्टिस MCQs चाहिए, बट वो कंपोनेंट जो APFC और EO एग्जाम में स्पेशल आते हैं लाइक आयरन एंड लेबर लॉ, सोशल सिक्योरिटी, अकाउंटेंसी, वो उन्होंने कवर नहीं किया, तो उनको हमने यहाँ पर कंप्रेहेंसिवली कवर किया है. और दोस्तों तीसरा कोर्स है टेस्ट सीरीज, जो उन बच्चों के लिए जिन्होंने एक बार एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, रिवीजन कर लिया है और अब सिर्फ क्वालिटी प्रैक्टिस करना चाहते हैं. तो ये 3 डिफरेंट कोर्सेज में अगर आप एनरोल करना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर नीड, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आके उनका कोर्सेज का लिंक चेक कर सकते हैं और उन कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.